कोड को तो एक्चुअल काय रहता है एक्चुअल सब्जेक्ट रास वैस्ट सब्जेक्ट एक समुद्र लांटी सब्जेक्ट होता है सिखाओ वो मैं 4 वर्ष में सिखाओ वो कोर्स में फर्स्ट थियरी का संस्कृत माती कुआयचो फर्स्ट दी कुआय के तानी తర్వాత ఓన జమీన్ డ్రాయింగ్ గీసవచ్చు తర్వాత ఓన ప్రాక్టికల్ గా కూడా एक రావచ్చు मैं स्क्रीन शेयरिंग करो जो ड्राइंग जस्ट देखे आवासु ओके स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मधुलाल भैया तो मैं होस्ट बना रहा हूँ तो स्क्रीन शेयर करे वास्ते 1 मिनट यस सर सो दीतिन ड्राइंग्स रचा देखता नहीं जरा दसे पूरा सब्जेक्ट का ना yeah 1 minute I am just making you host yeah Muthyali भैया तू अब होस्ट ची तू you can share screen yeah please share आप शेयर स्क्रीन ऑप्शन पर जो वो तार लैपटॉप पे पर घाले तानी ऑन स्क्रीन कर शेयर कर सर मैं शेयर स्क्रीन ही करना खोजूं या तार स्क्रीन पर रहनो नहीं पहला वो यस सर स्क्रीन पर या स्क्रीन पर रहना वो दिखाओ या हाँ go ahead go ahead दिखा इसका या दिखा दी या इस हम प्रेजेंट यादगिरी गुट्टा स्टोन एती बनारस को टेंपल ये टेंपल ने खूब भांदरो के दाने फर्स्ट ड्राइंग सिखाओ सर ड्राइंग इधर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ हनो ड्राइंग सिखाओ सर वो तरवाता वो ने स्टोन में तो कौन चकनो सीमेंट एती को मामनो को नॉलेज होते सिखाओ सर हम 4 वर्ष टेंपल आर्किटेक्चर का तो वास्तु शास्त्रम शिल्प शास्त्रम आगम शास्त्रम और रिलेटेड कंप्लीट का सब्जेक्ट सिखाओ सर ये कहीं पेद्दा कस्टम को नहीं सीखा के लिए आपन गोर भाई वाला तो इजी का आजो सीखा चाहिए ना कसिम को तो आपन कस्टम वारू कराचा हार्ड वर्किंग वारू कराचा जेर कांड है आपन कोई सीखने के लिए तो रास आपने में यूजफुल होते ये 4 कोर्स सीखने जेर पचे पासपोर्ट वजह पर होता है कॉलेज वाल 1.5 लाख आपने अमाउंट परेगा कैश परेगा दस कसे ने कतो इंडियन हेरिटेज कल्चर उन्हें डेवलप करने का जर वासु टीटी तिरुमला तिरुपति देवस्थान वाला हेल्प करे छे ये कोर्स ही ना अपन कंप्लीट किदे गेले तो इलांटी ड्राइंग लो अपन सीखे वासु गुड़ी को भावनो तरवाता गुड़ी विग्रहम विग्रहालय ने बड़ा डिजाइन करनो का वास्तु शास्त्र प्रकारम फर्स्ट से गुड डिजाइन सर तरवाता विग्रहाल को तैयार करने के बाद और काय मेजरमेंट है तो सिखाओ सर जस्ट आपने अर्थम वेणु के जा सर कुछ और तरवाता विग्रहाल ने को तैयार करने और मेजरमेंट का सर तरवाता वास्तु शास्त्रम घर डिजाइन को करनो तरवाता 3D को करनो कतो इको यूज पर इसको मैं ये बारे में बातें करूं सर जस्ट ड्राइंग देखें बच्चा तो ये कोर्स सीखले जर बच्चा काय यूज वच कतो सर अपन फाइन आर्ट्स में जावासु हाई नॉलेज वाल लागा अपन उमा गेन वेवासु एक फाइन आर्ट्स जावासु सेकंड आर्टिस्ट का थर्ड स्कल्प्टर का फोर्थ टेंपल आर्किटेक्ट का फिफ्थ आर्किटेक्ट में जाओ के तो ई सब्जेक्ट सीखे वाले में फर्स्ट प्रेफरेंस আছে आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर करने जेती కూడా आपने वार नॉलेज મળશે తర్వాత జాబ్స్ పరంగా आर्कियोलॉजी टूरिज्म एंडोमेंट डिपार्टमेंट का तो देवादाय शाखा में जॉब्स गवर्नमेंट जॉब वाले रही सर एंड फर्दर एजुकेशन को तो हिस्ट्री में टेंपल आर्किटेक्ट पीएचडी तानु करेवासु अधिकारी करेवास को तो अपने घर बनार इंजीनियर को बनावा जो डिजाइन ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को होते सिखाओ सर ऑटो कैड में आजकल देख रहे था एवरी सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट ऑटो कैड में डिजाइन करे था अपन चिन्ह चिन्ह घर बनावा जेती 5 स्टार होटल एतानो ऑटो कैड में डिजाइन वेरी आजकल प्रपंच में ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 3D डिजाइन 3D का तो काइंस है का तो अपन घर बनावा जे आंगे आप लोग घरेर कौन दिखावा से आपण कौन बंधारेचा वो कौन दिखावा आपण घर का तो 3D आंग कराचा वो गुड़ा ये मा नॉलेज होते सिखावा तो वो कंप्लीट का वास्तु शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम
शिल्प शास्त्रम डिजाइन AutoCAD सॉफ्टवेयर से सिखाते 4 years कंप्लीट कोर्स सर दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर कदो गुरु परंपरा आधारित को सब्जेक्ट सर वो सिखा जरपत सर फर्दर डिग्री पीजी पीएचडी कर लेवसु जॉब्स पరంగా అను कर लेवसु तो AutoCAD ये पण सीखले गेले सर तो आपण कोणसी भी घर में आसो डिजाइन देवासु वास्तु पరంగా देवासु ఖచ్చితంగా आपण आसो बेटर वर्क करेवासु सो दैट आपने आसो सिविल इंजीनियर आसो आर्किटेक्टर ती आसो आपण सर्विस देवासु एंड 3D डिजाइन का करेवासु आर्टिस्ट का करेवासु सर वो फील्ड वो कॉलेज में करतो 4 years course सर एलिजिबिलिटी फॉर 10th क्लास ओनली वो कंप्लीट 4 years करे जने 1.5 lakh टीटीडी देवस्थानम दच और पच आपण फर्दर अपॉर्चुनिटी कर लेवासु ई सर वो कोर्स ब्रीफ తర్వాత మకాయి కిదో మకాయి హను అసే కిదో चुका है डायरेक्ट का वेटेड इमेज मैंने देना है कैसे को एक बार मैं कराऊं छु एक्चुअली मैं 4 years कंप्लीट किदो जर पर सर सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में किदो आर्किटेक्ट कंपनी में किदो तो 4 years कोर्स के लिए जर पर सर मैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग को कंप्लीट किदो छु बीटेक एमटेक सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट कंप्लीट किदे जे तो पार्ट वर्क किदो तो मन है फर्स्ट प्रिफरेंस दे सर यू हैव वेरी गुड नॉलेज के दाए और తర్వాత આપણે హైదరాబాద్ કરે టాప్ మోస్ట్ 10 आर्किटेक्ट कंपनी में కూడా ఏమ किदो छु सेलेक्ट हेगोछु स्टार्टिंग मार 4000 री जॉब छोड़ो को प्राइवेट यादगिरी कुट्टा आवाज रंग मार 1 lakh सैलरी थी सीनियर ऑफिसर ऑफ द साउथ इंडिया में కూడా मल्टीनेशनल कंपनी में करता है ये फील्ड में आई वो तो सर में तो सिविल इंजीनियरिंग अपने मेट्रो ट्रेन भांजो सेन मालवी वो मा उप्पल मेट्रो स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग 3rd फ्लोर इंटीरियर डिजाइनिंग के देना కూడా मकान की तो छो आवास होटल కూడా अपने मालवी वो आवास होटल కూడా मॉकअप्स कतो फर्स्ट कुआस के रूम कुआस को वो भंडारी में बड़े मार इन्वॉल्व से चेन्नई में बड़े हिल्टन होटल है डिजाइनिंग करता नहीं वो काम करे रही सुपरवाइजिंग में बड़े ई करा मिलो सो ఈ సబ్జెక్ట్ చదవకెళ్తో రాస్ ఇరచ సార్ గోర్ భయం కూడా आपने రిజర్వేషన్ కూడా ఇరచ కాబట్టి ఆర్ట్ మా కుడి ఎక్కువగా చేయి ఆర్కియాలజీ म्यूजियम्स ये से प्रपंच में हमार कॉलेज थी पास आउट एज को अब चिरंजीवी स्वामी प्रोजेक्ट आपने माला भी है रास करोड़ती बैंक जो प्रोजेक्ट है हमारा कॉलेज मारतोड़ पार्ट वाल करे तो उन्हें सैलरी 1.5 lakhs कार से फैसिलिटी दे रहे ये जा रहे सो दट आपण కూడా ఉపయోగించలేదని వారు ఈ సబ్జెక్ట్ सीखना तो కూడా एक ही एक ईच एंड सपोर्ट करते वर्ल्ड वाइड का आपण टेम्पलर हिस्ट्री कदरा सर अब रामालय बांधरे છે दिल्ली में वो तो बड़े स्तंभतिला शिल्पलस काम करे છે અને आपण अगदी प्रीवियस बांधलेले टेम्पल्स मध्ये देखा तो వేల సంవత్సరాల తాను గుర్తింపు છે असो कला आपण सीखना तो येमा रास इयोचु ये मगड़े हेल्प करछु मन मालूम छदरा नॉलेज आपण गोर भाईने ई सीखला जर पच रास आपण केरा सर सिविल इंजीनियरिंग समजावसु इंटीरियर डिजाइनिंग करेवासु वास्तु शास्त्र देखेवासु आजकल कोई भी भंडारे से प्रपंच में वास्तु देखना भंडारे से कोई घर भंडारे तो आजकल प्रति टेम्पल कुडे रास वाल भंडारे यार से अस अपॉर्चुनिटी आपण कुडे यूज करना तो रास आतरो वन ऑफ दी आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी के दाने मैं एक्सपीरियंस का केरोसु अब तो यादगिरी कुट्टा में रास में क्या करेज बनन वो मा रास की रोल्स सर रास लो लेवल थी मैं जैन वो तो जैन वो देना अब आज है ना वो टेम्पल भंडरे जेमा टेम्पल डिजाइनिंग के लिए वास्तु शास्त्र के कुणसु बाटा कतरा हाइट रेणु का करेक्ट का कोनी का रास टेक्निकल कमिटी ईएनसी चीफ इंजीनियर्स तो बड़ा मोस्ट इंजीनियर्स कलेक्टर्स आईएएस ऑफिसर तो बड़ा टेक्निकल कमिटी में मेन डिसीजन मेकर्स ने बड़ा वन ऑफ दी मन बड़े बलादानी डिसीजन ले रहा ఏమా హార్డ్ వర్క్ కరోచు సే బంజారా కూడా ఈ ఉపయోగించలతో రాస్ ఆశ్రతకన్ సే రామరాम करतो रास बिया सेवा क्रिटिक तो इथे हनवच एन इजी का आपण करेवास वो तो सीखचको बनावाच सिविल प्लान तो दादापुगा ఏ విధంగా బన్నది సార్ टेम्पल को तो टेम्पल वास्तु ఈ విధంగా దేకచ తర్వాత ఈ టెంపుల్ డిజైన్ అని సికవచ్చు కదా ఇంట్రడక్షన్ राम से राम करतो అది రాస్మన్ के वादे करवास కాబట్టి ఇంతటితో మరి ముగించవచ్చు సేన్ రామ్ జై సేవాలాల్
मोतीलाल भैया थैंक यू सो मच तू एक नवो फील्ड एन दकाळो आपणा लोकोने ताती अजी अजी हम काय को तो स्पेशल गा अजी सेशन करा मचा कसेन को तो ई आर्किटेक्ट एंड डिजाइन का जो कोण एरिया इज अ लुक्रेटिव एरिया एंड इमर्जिंग एरिया कसेन को तो आजकल हर घरे में इंटीरियर डिजाइन कर रहे राइट तो वो इंटीरियर डिजाइन पर अपन अपन लोग भी रहे मिडिल क्लास थी से लोग इवन जो भी नानका लोग भी रहे थोड़ा थोड़ा इंटीरियर डिजाइन कर रहे थे आजकल यस सर इमर्जिंग एरिया एंड वेरी गुड एरिया तमने प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर एम अपॉर्चुनिटीज बाद एम ई छे तमने ई करो तो खचितंगा अपॉर्चुनिटी प्राइवेटाइज में छे तमार सोंतंगा करियर छे एंड टेम्पल आर्किटेक्ट एम तो देयर इज नो देयर इज नो మీకు అపార్చునిటీ లేదనే సమస్యనే లేదు ఎందుకంటే इंडिया इज एसेंशियली ए कंट्री ऑफ रिलीजन ओके सो हर एक रिलीजियस का रचत हर एक मत में वाल भी टेम्पल बनाव छे हर एक जाति वाल हर एक कास्ट वाल हर एक एम्पले थी कनेक्ट छे तो अपन टांडुम भी टांडुम टेम्पल बना रहे छे से जगह टेम्पल से बन रही है तो ये एक इमर्जिंग एरिया है टेम्पल आर्किटेक्ट को जो कोण एक घण इमर्जिंग एरिया तो कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है अपन मोतीलाल भैया नंबर भी हम शेयर करा था तम मोतीलाल भैया ते टच रे वास्ते कसिन को तो मोतीलाल भैया एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन हम छाज तो कोई भी क्वेश्चन छ जो कोण क्वेश्चन लोचो और बाद में आपनो हरिलाल नायक सर भी कनेक्ट हो और हरिलाल सर इन 5 मिनट बात कराओ जर बाद में नेक्स्ट स्पीकर आपनो शशिकांत जो सिविल सर्विस एग्जाम से एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बारे में बातें करे छ तो मैं पहला क्वेश्चंस लोचो क्वेश्चंस नुनावत देवदास नायक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नुनावत देवदास नायक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ yeah you should ask question related to this topic okay devdas naik please go ahead then Ramram jai Sevalal bhi आओ मोतीलाल भैया तार स्क्रीन शेयर ऑप्शन तार स्क्रीन ई करना भैया स्क्रीन शेयर ऑप्शन कट करना तार ये छोड़ दे या ओके भाई ओके भैया जय Sevalal Ramram bhi आओ first of all सेने मोटे आदमी सेने थैंक्स के लिए रोचो मंची कार्यक्रम कर रहे छो भैया हमार काई चोचा स्ट्रेट का एक क्वेश्चन आज अपन कम्युनिटी से एरिया में उना गाड़ी से बट कोन्नी फील्ड में लार चले जा रहे चकन लाग रही से अब जो तुम सिविल सर्विसेज हायर पोजीशन जो पूछ सको मंची इनिशिएशन ले रहे छो ये काई बच्चों को जो आपने एक इंस्पिरेशन का ले सके आसो तमार एक्सपीरियंसेस के लिए फ्यूचर के लिए तुमको फ्यूचर्स के लिए जरा माइंड में ले लेता नहीं आगे बढ़े चांसेस डिफरेंट एरियाज मन के होने परचा एक वेदिका निकल चाहिए ये जो तम ये फर्स्ट इनिशिएशन लीजिए जिन सेन में थैंक्स के लिए रोज भी आओ इतने मार स्टेट का एक क्वेश्चन आज अपन वेरे विधंगा किलो मतो अब एसी कम्युनिटी के लिए और देखा तो आपने एक आरएस प्रवीण कुमार सर कन दिखावा अपन मई हायर पोजीशन से मंची 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 पोजीशन चलना मन क्या एक आइडियल पर्सन का कति दिखा रहे कोनी अपन कम्युनिटी डेवलपमेंट वे ने एक आरएस प्रवीण कुमार सारे निका एक आदमी मुनांग आता नहीं से वेमा अब आज को करे इसको वो वेमा तमी भी एक मन के कुन को एक मन के मुनांग आता नहीं मुनांग पड़ता नहीं वो कू डेवलपर को उंदर वेमा अपनी भी डेवलपमेंट एनु कने पोजीशन मुनांग एक मन के आंग आउन कन मारे एक विनती सब आओ उजे अब अपन गवर्नमेंट अपने ने जो ये सब्सिडीज दे रही है देवदास भैया सॉरी टू इंटरप्ट तारी एक क्वेश्चन है अपने नजी दूसरे पार्टिसिपेंट भी है तो सब्सिडी बारे में अपना मत करा तो क्वेश्चन कीधो जो कोण घणो राइट वैलिड क्वेश्चन है मैं तो एक अश्योरेंस दे सकूँ छूँ कि अपन कम्युनिटी में भी अपने आरएस तम जो आरएस प्रवीण सर के छो वैसे लोग अपने कम्युनिटी में भी आओ अपने लोग सपोर्ट चाहे ना अन खचितंगा आओ अपने लोग जो यंग जनरेशन अभी ढगलाई लोग अभी सीनियर ऑफिसर्स भी है डेफिनेटली आओ तम और बारे में कहीं चिंता मत करो अन सेकेंड अपन जो भी क्वेश्चन पूछ रहे छो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन द टॉपिक अपन टॉपिक के डाइवर्ट न क्वेश्चन को तो ये भैया अपने आर्किटेक्चर बारे में बातें की दो इन टेम्पल डिजाइनर बारे में बातें की दो तो एमा कई अपॉर्चुनिटी से पूछो वो अपने मेन इंपॉर्टेंट सो से पार्टिसिपेंट इन मार रिक्वेस्ट कहीं तो तमार सजेशन से जो कोण मार नंबर में तमने शेयर करूँ छू हमार शेयर नंबर शेयर करा जीवन भैया मारा शेयर तम हमने जो भी सजेशन दो हमने जो भी वे सकत हम कर सका
जो भी वेनी जो कोण कचेन को तो हम एक गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमसे पूरा 100% ये पद दे सका नहीं, पर जो भी टाइम वो टाइम में हम कर सका था। तो टॉपिक एंड रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो सो दैट डिस्कशन इज वेरी लाइवली। आपण डायवर्ट किदे केलं तो वो डिस्कशन वास्ते का अपनी प्लेटफॉर्म खोल, राइट? सो सॉरी देवदास भैया, अजी कोण कतो एक अजी एक क्वेश्चन ला टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछनो। स्वामी नायक के ने एक हाथ उठाड़ो छ, कत स्वामी नायक हाथ उठाड़ कम कर दिनो छ अब। तो वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्पीकर सतीश कुमार के छ। सतीश कुमार डायरेक्टली क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक, ओके? सतीश कुमार अनम्यूट कर लेता तू। Satish Kumar, yeah, Satish Kumar, go ahead. Good morning, sir. It is very pleasure to meet all the dignitaries. Satish Kumar, you are not clear. Your bandwidth is very low. You are having problem with your network. Sir, good evening, sir. Yeah, please go ahead. Audio, video बंद करना, तो you will be clear. Only audio record. Our bandwidth comes, sir. Yeah, please go ahead. Yeah, please ask. Sir. So, I am from Hyderabad, sir, Tribal Welfare Residential Junior College as a lecturer. Sir, regarding the topic, okay, all are सर बातें कर रहे थे एजुकेशन के बारे में, तो एक स्मॉल रिक्वेस्ट करो सर सेकेंड अपने वाले ना, हमारे कॉलेज है की एक गरीब थोड़ा IIT नहीं सीट मारो सर, और नाम जादव रमेश फ्रॉम कुत्ता भद्रा के एग्जाम वेरी रिमोट एरिया सर। तो अब प्रेजेंट पोजीशन हम एज ए फाइनेंशियल हम कर रहे थे हेल्प, फिर भी थोड़ा वना हेल्प चाहूँ अच्छे कैंडिडेट ने अपना मोटिवेशन करनू कैन मारे एक विनती सर, कोई भी वीओ तो जो भी वीओ तो भी हमारा नंबर में कॉन्टेक्ट सर, और स्टूडेंट के बारे में बैकअप भी देने सब कुछ अपन जो डेफिनेटली जो हमने भी दे रहे थे वो स्टार कोचिंग के इंजीनियर थे। सतीश भैया तार क्वेश्चन मार्तम कर ली दो, तू शॉर्ट बॉक्स में भी लगाड़ो छी। तू मन एक छोरी रिसेंट का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट आई छे मेरिट में, तो वन भी हम मदद करवाए छा, तम हमने पर्सनल का मैसेज करो, अपने ज लोग थी तो मदद करवा छा, ओके? डोंट वरी, IIT में सीट आज को तो सेन गर्व छे, वो भाई ने अपन हेल्प करा छा, तो तार क्वेश्चन अब वेगी, राइट सतीश भैया? या नेक्स्ट Satish Bhaiya, your question is taken. Please contact me on my personal number also, and you can reach all of mana apne jo bhi log सुनन में कर one madad definitely works. Okay? Yeah. अब गौर सच्चा सर तेरा फुल Satish Bhaiya मैं अर्थम कर लो. Don't worry, you put that in thought box also. Okay? We'll go ahead with next discussion. अपनो गौर समाजेरो अजय को डिग्निटरी छा अपने में हरिलाल नायक सर के ना एक काहे को तो IABSS से थी इच्छा अपने जो अपने ने ऑल इंडिया रिचवेन में हरिलाल नायक सर ने रिक्वेस्ट करू कि 5 मिनट में अपन डिस्कशन स्टेट का टॉपिक के बात करन इकनो सर। हरिलाल नायक साहब अपना अनम्यूट कर लो एंड प्लीज गो अहेड। या हेलो, या ऑडिबल हरिलाल नायक। जय सेवालाल, सिंह राम डॉक्टर सुधाकर नायक मारा पर्सनल धन्यवाद। तम एक 8 दिन रंग ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ थी तम परमिशन मांगे थे, मैं प्रेसिडेंट परमिशन ले लो यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ। ये ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ 17 वोल्ट से 1953 में लेट VP नायक स्टार्ट किया था, वो होती थी कंटिन्यूअस चालू था बेतानो। अब भी हम लोग सारी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हर एक स्टेट में बाड़ी बना ले। अब रिसेंटली 2-3 वर्ष माई आचे आदमी ऑल इंडिया में NAC मेंबर बने छे, वो डॉक्टर उमेश जादव MP, माननीय प्रिया नायक IRS, जीवनलाल लवड़िया IRS, लक्ष्मण गोगलोत, संजय IPS, संजय राठौर महाराष्ट्र मिनिस्टर सारी ज्वाइन की दे। ये ऑर्गेनाइजेशन 17 स्ट्रॉन्ग है और इंडिया में अपनो भारत में एक चीज है नानक्यान की ऑर्गेनाइजेशन वासे की वेमली है અને હુનો રાતા પતા કાઈ છે ઈ ચેરિટી કમિશન માં રજીસ્ટર कर મળે છે, એવરી યર ऑडिट करा છે, मीटिंग वचे सारी वचे। जो नानक्यान की मोटी जो ऑर्गेनाइजेशन છે लेट हुनो अपनो अपनो जगह पर रह दे, लेकिन करना यूनिटी आओ છે, जना कोई भी इश्यू आओ છે तो ऑल इंडिया तुम साथे में सपोर्ट करनो कर मारे एक रिक्वेस्ट है। एंड दूसरो છે स्टूडेंट बारे में कहो छू। लास्ट ईयर
बॉम्बे में मेडिकल सीटे वासु 94 and 95% SC/ST कैंडिडेट लास्ट मार्कर अदर्स 97-98 दी 3 मार्क में डिफरेंस है अपने कम्युनिटी में अतरा कंपटीशन वेरी है अबेर बच्चा ना छजावरू ना इट इज वेरी टफ कंपटीशन एंड ये छजावरू ना अपनो आचो शिकावनो आन आची आची जगह पर ध्यान देनो मारे एक्सपेरिमेंट कीधो तो मार छजावरू मैं आंध्रा थी छू एंड महाराष्ट्र में रहेलो छू महाराष्ट्र में हमनो ना शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट काई मळे नहीं सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट सर migrants will lose the status. ये 92-91 में आओगी सॉरी 95 में आई थी और पच मत मार छजावरू ना सर्टिफिकेट लीधो में सेंट्रल वसूल लीधो स्टेट में मन काई छजावरू काई फायदो वो कोनी तो छजावरू में दकाळो कोनी को तमार सर्टिफिकेट से वो पण कंप्लीट करो एंड छजावरू ने एनकरेज करो अपने में भी गोर छजावर आचो हुशार से खाली उन्होंने एनकरेजमेंट चाहो से सपोर्ट चाहो से उन्होंने रास्ता चाहो वो थी आंग बढ़ सके मार छजावर सारी मेरिट में डॉक्टर भी बने इंजीनियर भी बने एंड आर्किटेक्ट भी बन गए सिर्फ मेरिट में जाम के तो अगर मेरिट में जाओ तो मेरिट छजावर ये ट्राइबल वगैरह क्लाइम ना करनु कर मारे सजेशंस दूसरो छे छजावरून छना माछली बोटी कम खराव वो थी दिमाग आचो चालस वो माछली बोटी जगह पर दूध घी ड्राई फ्रूट वगैरह खराव मा तो आचो चालच 18 वर्षे तर मार छजावरू में नॉनवेज खराय कोनी मार एक फायदो रहा मार मिसेस वेजिटेरियन रहा तो वो थी कई वेगे छजावर आचो सीखे दिमाग आचो चालच आणि एक मार दूसरो एक रिक्वेस्ट जतरा भी IPS IRS IAS है इन्होंने 10-10 हजार ग्रेजुएट है ना अडॉप्ट करो उन्होंने सजेशन दो कहीं खर्चो करे से कहीं से सजेशन दो सिविल सर्विस में एक 10 हजार भी क्रैक की दे हर एक वर्ष और फायदो व्यवहार से और दूसरो ये स्टूडेंट वेगी मैं ज्यादा टाइम ले रहा को नहीं मैं इंटेलेक्चुअल ऊपर मत विचार 1-2 मिनट ले वाला हूँ जतरा भी IRS IPS IAS दे आर ऑल इंटेलेक्चुअल एंड मार सर्विस के बारे में कुछ मैं 43 ईयर्स से थी 44 ईयर्स से बॉम्बे में रह रहा हूँ मैं कस्टम एक्साइज में इंस्पेक्टर ज्वाइन की तो और पच सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट डायरेक्टर भी बनो 2-3 जगह पर डेपुटेशन को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में गो और पर DRA में वेतो एंड मैक्सिमम एंटी स्मगलिंग एंड एंटी एवेजन स्क्वाड में 25 वर्ष वेतो मैंने 1994 में the first tribe and SC in mine, I got a President of India's award. And when 2001 में 15 लाख के तानु में रिवार्ड ली दो तुम्हार केस बनाई देती and सीलिंग रहा 15 ऊपर अजी ज़्यादा मल्टी कहीं के दे गवर्नमेंट है सीलिंग रहा और वासु मन मली कोनी और पस मैं रिटायर्ड हुए ना पर 9 वर्ष चाल रही से and आज 30 वर्ष थी रंजीत भाई बरोबर मैं ऑल इंडिया थी जोड़ मलो छूं and अब भी ऑल इंडिया में सारी काम में करूँ छूं and दूसरो चीज ये जो सेवा भाई मूर्ति से ओरिजिनल फोटो तुम मैं दिखाऊं छूं ये फोटो and सेवा गढ़े मूर्ति सारी मैं बनाऊं छूं सारी जो पूजा गिजा सारी चाल रही है मैंने एक रह सारी गौरमाटी भगवान ने एक भी मूर्ति एक भी स्टैचू काई न रखा ली एक भाटा टीको लगन सेवा भयन करते ये निजाम लाइब्रेरी माती चंद्रभान राठौड़ के तनी ने तेलंगाना रो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग वो में डेवलप बनाए पर जयपुर में जान 500 चक्कर मारन ये मूर्ति वासु सारी में कोशिश की दो एंड ये मेजर फाइनेंस अर्जुन राठौड़ की दो से एंड बाकी जो अपना गोविंद राठौड़ जो मैजिस्ट्रेट सर जज वो पूरा सपोर्ट हम 4-5 चक्कर वो तो मारन एंड बॉम्बे यूनिट भी पैसा मले टोटल कास्ट एरो वो टाइम में ना 10 लाख रुपए तक भी तो ये सारी पीदो में तो ज्यादा टाइम लेते को नहीं सुधाकर थैंक यू वेरी मच and very good organization and good efforts you have taken. I am always available with you
any help, any support, I am there. Thank you very much. थैंक यू हरिलाल नायक सर घणो वैलिड सजेशन किदे छो तम हर एक सिविल सर्वेंट 10 जो मेरिट स्टूडेंट अडाप्ट करनो को जोकोन दैट्स रियली ब्रिलियंट आइडिया एंड हमार जो भी सिविल सर्वेंट्स है उन्होंने भी हम सेम रिक्वेस्ट करा था एमा भी ढगलाई है तो वी विल डू इट एज पार्ट ऑफ माय पर्सनल थिंग आई विल डू इट इट्स अ रियली गुड सजेशन ओनली गाइडेंस कसन को तो गाइडेंस न रहतो एक 4 साल एर कामें 1 साल एर कामें 4 साल लाग दो तो वो मैं पर्सनल का एक्सपीरियंस कर मिलो छू दैट्स रियली वंडरफुल सजेशन हरिलाल नायक सर सो नेक्स्ट आपण अब सिविल सर्विस एंड अदर एग्जाम्स को क्लियर करने को जो कोण आपण एक गोर भाई ऑलमोस्ट 7 एग्जाम्स क्लियर कर मिलो गेट एटी IIT NIT सॉरी IIT लेता नहीं गेट लगा पूरा सिविल सर्विस से लगा और अभी भी सिविल सर्विस अजी प्रिपेयर हो रहा अब ऑलरेडी सिविल सर्वेंट छो तो वो भाई अपने गुणांगारो अब वो इंट्रोड्यूस करे वास्ते के अपनो एक स्टूडेंट जो वन ऑफ द स्टूडेंट हु रिक्वेस्टेड अस टू डू दिस थिंग बिकॉज वी वर डूइंग दिस सेशंस फॉर welfare schools, residential welfare schools in our district and other districts. Some Hyderabad Ichoda school also, my principal, my teacher is there. So, ilanti students request cheyadam valla manam mana community kuda ila cheddamani we got this idea. So I request Mr. Ravinder Naik. Ravinder Naik, please mute yourself. I'm just giving you opportunity to mute yourself and start introducing Mr. Shashikant Korawat, IRTS officer. Ravinder Naik, please unmute yourself. रविंद्र नायक रविंद्र नायक तमने अनम्यूट करे चांस दिनो छु मैं या ओके सर या रविंद्र नायक प्लीज गो अहेड सर या thank you sir for giving this wonderful opportunity to introduce Puravat Shashikant IRTS officer sir good morning sir present profession officer training in Indian Railway Traffic Service sir 2018 batch father of Puravat Ramlu sir mother Puravat Sitama sir Puravat second sir born रविंदर तार आवाज क्लियर आ रही कौन थी रविंदर तार आवाज क्लियर आ रही कौन थी रविंदर आर यू देर रविंदर या सो रविंदर इन सम टेक्निकल इश्यू है तो आपनो शशिकांत कोरावत आपने ना एग्जाम्स हर एक एग्जाम को प्रिपेयर करनो किसी को तो हर एग्जाम में एक सिलेबस रच एक प्रीवियस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रच तो वो को करनो को जो कोण आपनो आपनो शशिकांत कोरावत आपने ना एक 15-20 मिनट में आपने कच तुम्हारे बाद में 15 मिनट में केदानी एक 10 मिनट तुम्हारी क्वेश्चंस रच और बाद में एक एक्सक्लूसिव सिविल सर्विस एंड अदर एग्जाम से बारे में एक सेशन रच आपने फ्यूचर में तो वो सेशन वास्ते जो एस्पिरेंट्स जो भी एग्जाम लग रहे छो वो सेशन उन्होंने एक्सक्लूसिव रच मे बी 100 पीपल मे बी 50 पीपल मे बी 60 पीपल सो वो सेशन वास्ते अजी हम लामाचा स्वचन चौहान के आपनो अजे को गोरभाई IRS ऑफिसर है 2014 बैच मारो बैच रो वो कहीं को तो रणजी प्लेयर भी छन एंड सिविल सर्विस में एक गाइडेंस टीचिंग करियर भी वन हॉबी है तो वन भी लामाचा नेक्स्ट सेशन में तो अब शशिकांत प्लीज टेक ओवर आई एम मेकिंग यू होस्ट शेयर योर PPT Shashikant please go ahead. Shashikant is very young guy. You have to see that still looks like 18-17 years guy. So we must be proud of him. Please go ahead, Shashikant. Yeah. Thank you, sir. Jagger Gorbhand and Ramram. जन्मदिन जकोन याडी बापेन वंदनम करतो मन मंची विद्या बुद्धुलु सिकाय जकोन मा टीचर्स एन वंदनम करतो सेन हार्टी वेलकम सो गुड इवनिंग एवरीवन मार नाम शशिकांत कुर्रावत है मैं शादनगर महबूबनगर जिला हूँ हमार तांडो चाकलगढ़ तांडा माचारम विलेज जडचला मंडलम महबूबनगर जिला सो मैं 2018 सिविल सर्विसेज क्लियर करता नहीं IRTS में काम करूँ छू अब एज अ ऑफिसर ट्रेनी आज मैं लास्ट ईयर अजेक ना सिविल सर्विसेज क्लियर की दो तो पर आई कुड नॉट गेट इनटू IAS सो ईयर अजेक ना मैं लगता नहीं आई एम होपफुल ऑफ गेटिंग इनटू IAS
So mar session ab kain kato first of all सुधाकरना hats off to you. अत्रा मोट कार्यक्रम करता ने सेन एक प्लेटफॉर्म पर लाव न जको नी नान की बात कोनी across the spectrums across the professions से अच्छे. So it's really wonderful to be here, Anna. So I'm just sharing a PPT. Ma kido joko ek nan kis PPT I'll show so that I kain ka to happen inga aspirants ne na jara help wach kana. So basically ab kain ka to the art of clearing competitive exams happen na kalan aaj happen various sessions with e sessions hai ma happen kain dite ka to professions other than civil services dite professions other than government jobs dite पर मार अब सेशन कांक तो एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स एज वेल एज सिविल सर्विसेस पर मैं वाद करू छु. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जाम्स कांक क्लियर की तो कैंपस प्लेसमेंट मैं इन्फोसिस में सिलेक्ट हुए तो और पर आई हैव क्लियर्ड गेट आल्सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाइवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एज एन इंजीनियर और पर मन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है ग्रुप बी जॉब आई थी IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर और बाद नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर पण काय का तो मला एक स्ट्रॉंग डिझायर होती सोसायटीन काय करणं. सो ओन सिविल सर्विसेस एकच एक ऑपॉर्च्युनिटी घेताने मग आय हॅव रियली वर्कड हार्ड फॉर सिविल सर्विसेस. मग 6 अटेम्प्ट्स दिनो तो सिविल सर्विसेस में एंड ऑल द 6 टाइम्स मैं प्रीलिम्स लगता ने मेंस लग रहा तो चारों ना मैं सिविल सर्विसेस इंटरव्यू गोतो. सो एवरी टाइम मैं फेल वेताने होटा रहतो. सो आई कैन प्राउडली से दैट मैं अत्री फेल्यूर से पचे एक सक्सेस दीटोचु सो दैट एयर गुరించి వాతే కెరీర్ మన జరా అర్హత సకన్ మ కేలే రోజు ఫెయిల్యూర్ అండ్ సక్సెస్ గురించి. సో రీసెంట్ గా ఐజకోన్ 2020 ఎగ్జామ్ అబి హావ్ క్లియర్డ్ విత్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 764 బట్ మన చావజకోన్ సర్వీస్ ఐకోని సో జేసారు మన ఆల్రెడీ చదువుకున్న IRTS సర్వీస్ మా కంటిన్యూ వేరొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాయంకతో ఎవ్రీ एग्जाम है ना असल काय एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनो कतो आपण काय केला सकतो जस्ट ఒక रॉट मेथड లో आपण चदवरेचा कन करू कराचा पण असल आपण काय सदवरेचा कोण सदवरेचा एक स्ट्रॅटेजी कायच है हनुकन एक ना देखेन जावनो कनेर मार ओपिनियन ओ ई मार एक्सपीरियंस से घालताने मार एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मा एक जाग लाताने मन काय लागी कतो. अब फॉर एग्जांपल आप एक नान की बात अच्छा कोन से एग्जाम्स मैं कूनस भी एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट लीधो कोनी से एग्जाम्स मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कीधो एक्सेप्ट सिविल सर्विसेस जरा टफ एग्जाम एंड इट हैज रियली मन वारो टफ टेस्ट की दिवो. दूसरे एग्जाम्स हैव क्लियर्ड इट वेरी इजीली इन द फर्स्ट गो. क्वेश्चन का तो ओन एक स्ट्रैटेजी विद मर ओ आई विल ट्राई टू शेयर दैट स्ट्रैटेजी. अब फर्स्ट काइंड का तो एसेंशियल एलिमेंट्स नीडेड टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. असल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने को तो आपने स्ट्रैटेजी काय रहनो कारण तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रैटेजी रहना आपने काय स्ट्रैटेजी. आई बिलीव दैट स्ट्रैटेजी काय तो यू शुड हैव मिनिमम रिसोर्सेस and should do maximum revisions. कतो काय कतो मैं घन आदमी एस्पिरेंट्स केव करू छु हा पण एक बुक 10 ना सदवनो 10 बुक एक ना सदत लाभम छी. हा पण काय कतो एक बुक 10 ना सदतो वी कीप रजिस्टरिंग इट 10 बुक एक ना सदतो काय हरदे रेनी. ओके नेक्स्ट वो एक एंड हा पण कना एक युद्ध में जाव देना वॉर में जाव देना हा पण एनिमी ने कतरा बेटर गा मालूम करले तो आपने ना इंजुरीज अतरा कम वच्चे सक्सेस अतरा इजी गावच्चे. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तू आपने काय करते एक एनिमी ने देखतो वन शुड नो देयर एनिमी बेटर. सो अता आपने एनिमी काय अंडरस्टैंड द सिलेबस क्लियरली एंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम. असल एग्जाम काय कोरलीचे आपने ती ఈ काय पूछ रही आपने ती कारण एक क्लैरिटी रहतो आपण ओ विधंगा काम करे सारू. नेक्स्ट प्लानिंग आपने सेम मालूम प्लानिंग कतरा इंपॉर्टेंट को परफेक्ट प्लानिंग ये स्टार्ट करे जो काम वो तो 50% वेगी प्रॉपर प्लानिंग ये जाता. सो आई बिलीव प्लानिंग चाला इंपॉर्टेंट ये. अब प्लानिंग को करने को तो वो व्हाट इज दैट प्लान वन शुड बी रियली स्मार्ट स्टडी स्मार्टली एंड रेगुलर रिवाइज करनो एंड सेल्फ मोटिवेशन जापालो एंड अब से कोण प्रपंच में अत्र डिस्ट्रैक्शन्स अत्र डिविएशन्स. सो आई बिलीव काय कतो हापन प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर सेल्फ मोटिवेशन रहतो ये काय आपने काय कर सके नहीं वी कैन डेफिनेटली क्रैक एनी एग्जाम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आता सजकोन से एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट काय कतो अवर एटीट्यूड. आपण एक राइट एटीट्यूड येते जावं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो इट इज योर राइट एटीट्यूड विच विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. एक राइट एटीट्यूड रहतो
that is the difference between एक सक्सेस and फेल्यूर है ना. मन पूछ सकते what is the difference between success and failure कहता मैं पूछूं right attitude. अगर right attitude नहीं रहता वो तो happen game lose वेगेचा. So I think one should have a right attitude in the exam and while preparing for the exam. Next. अब हापन वेरियस एग्जाम्स ने देखो तो बेसिकली प्रत्येक एग्जाम काय करतो एक डिमांड रहছে प्रत्येक एग्जाम में एक डिमांड रहছে वो डिमांड काय अब हापन बैंक एग्जाम्स ने देखो तो बिकॉज मैं बैंक एग्जाम्स भी क्लियर कर में रोजू बैंक एग्जाम्स ने देखो तो वो एक आदमी रा लॉजिकल रीजनिंग चेक करছে उंदर मेमोरी चेक करছে एंड वो टाइम मैनेजमेंट कू करছ को ओन चेक करू करছ. सो हापन काय इफ somebody is preparing for bank exams वो ये स्किल्स ने डेवलप कर लेनो. एंड नेक्स्ट अब स्टेट सर्विसेस एंड प्रिपेयर करजो कोन आदमी कोरेनो इट इज मोर अबाउट मेमोरी टेस्ट जापा विशाल हापन हरदे रिकॉर्ड लेनो as many things as possible हरदे रिकॉर्ड लेनो होलिस्टिक सब्जेक्ट अवेयरनेस चावनो कतो काय से सब्जेक्ट के रूम पर एक मंची ग्रिप एक आसोस ग्रिप रहनो वो आसोस ग्रिप रहना कुना एरिया थी क्वेश्चन पूछो तो हापन घाले सारू. नेक्स्ट टेक्निकल एग्जाम्स हैं अब इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं ना हनो ओन का इनका तो साउंड टेक्निकल डिटेल्स रहनो. अब फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो वो का इनका तो ఈ एग्जाम है ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి ఓర్ గురించి మంచి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ रहनो डेप्थ में रहनो वो काय का तो कोने से प्रॉब्लम होता हापन इजीगा सॉल्व करे सारू. सो ये एक्चुअल गा एक डिमांड रहছে एग्जाम से और पास यूपीएससी सिविल सर्विसेस ये एग्जाम में डिमांड काइन से एंड हापने मालूम से सिविल सर्विसेस 3 लेवल्स आवचे preliminary exam, mains exam and the interview exam. Interview is called as personality test. So अब prelims काय test करच कतो वो हापन knowledge and test करच. It's a test of your knowledge. तो काय मालूम से कतरा मालूम से prelims वो देखच. And time management 2 घंटा में 100 क्वेश्चंस है तू कतरी क्वेश्चंस हैं तू अटेम्प्ट कर सकरोची कतरा स्मार्ट का तू वर्क करोची. नेक्स्ट इन द मेंस एग्जाम काय डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स है. डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वो काय टेस्ट कर रहे सर वो हापने एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट कर रहे छे हापन मल्टी डायमेंशनल व्यू टेस्ट कर रहे छे एंड योर प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी टेस्ट कर रहे छे. क्वेश्चन कतो अब ससे सिविल सर्विसेस पैटर्न 3 hours में यू हैव टू राइट 20 क्वेश्चंस एंड ओमा ऑप्शन छी. आई रिपीट अब ऑप्शन छी कतो काय 20 क्वेश्चंस दतो 20 क्वेश्चंस पक्का लखनो तो मालूम छेक और संबंधम छी आउट ऑफ सिलेबस के ना स्कोप छी काय पूछो तो वो डेफिनेटली केवनो. Shashikant, wait 1 minute, Shashikant. Somebody is interrupting by giving this drawings on the screen. So मैं one request करूँ छु कसेन को तो ये पर अड्डम दोड्डम से गीस ना करे चे. That doesn't look good. Whoever is doing, please stop doing it. Screen पर से अड्डम दोड्डम गीता गीस ना करे. Right, Shashikant, you are seeing that? Yes sir na, yeah na. Somebody is doing. It's like it's very irresponsible behavior. I request whoever it is doing, please be responsible. I'm reclaiming my host Shashikant. Yeah no, definitely. Yeah, this is not right actually. One who is doing it I will identify and I will just shut him out. Okay, definitely yeah, yeah. Go ahead. Yeah no. So अब मेन से काय तो it's about analytical ability. हापने कतरा एनालिसिस हापन को विषयाలను एनालाइज कर रेचा. क्वेश्चन कतो एज एन ऑफिसर सवार फील्ड ला जाव जना एक टॉपिक है हापन मल्टी डायमेंशनल देकर అవసరం रहছে. एनालिसिस डीपर एनालिसिस कर जना हापने वो डिटेल्स 12 वच केस है एफिशिएंट गा हापन काम करे सारो. सो जेर सारो मेन्स है ये एनालिटिकल एबिलिटी ना आता टेस्ट करस और पछ इंटरव्यू ना आता एक्चुअली से एग्जाम्स में वन इंटरव्यू कन बलावच परंतु सिविल सर्विसेस एग्जाम वन इंटरव्यू कन बलाने वन एक पर्सनालिटी टेस्ट कन बलावच. पर्सनालिटी टेस्ट का तो इट इज अ रियल टेस्ट ऑफ एक पर्सनालिटी देखस वो काय आदमी छे को आदमी छे इन काय वैल्यूज छे इन काय हैबिट्स असल ई पब्लिक सर्विस एंड सूट वच कवेनी इन एकदम अतना पावर दतो ई काय टैकल कर सके नि के हनुकन ई पर्सनालिटी ट्रेट्स मत इवैल्यूएट करे छे. एर वैल्यू सिस्टम काय ई डेडिकेटेड का छक छे के कमिटमेंट छक छे इन सिविल सर्विसेस आन पब्लिक सर्विस करू कन नि तो पैसा कमावल कन मोटिवेट आ रोज के इससे बहुत इजी गा एक हाफ एन आवर च पर्सनालिटी टेस्ट हाफ एन आवर ओके दे कैन इजीली आइडेंटिफाई अस हाफ एन इजी पकड़लचो. आज हापन काय करतो एक थी काय लबारी करतो वो घन मोटा आदमी ऑलमोस्ट लाइक सीनियर्स 60 प्लस रचे. सो उन फोन कर रहे तो हापन वी आर मेकिंग फुल आउट ऑफ आवरसेल्फ కాబట్టి उन हापन काय झूठी बात कह सकाने काय करतो भी दे कैन इजीली आइडेंटिफाई इट. सो दिस इज द डिमांड ऑफ सिविल सर्विसेस एग्जाम. सो बेसिकली मैं ब्रॉड गा गो टू 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्स कैन बैंक एग्जाम्स, स्टेट सर्विसेस एग्जाम्स,
technical exams and UPSC civil services exams. So here is a demand of the exam. So abama munang kozo ko know your enemy better. That is syllabus perfect ga malam vetani तो exam में demand clear ga hapner malam vato वो तस hapner आदो काम वेगी आदो काम काइन खाली सदवन practice करेरच. So kabatti so जेड सारो remember this line, know your enemy better. कतरा आज हापन enemy वाद जानलं तो तरा easy గా హాపన్ మారేశారు. ఓకే అండ్ దిస్ ఈ ఎగ్జామ్ బి వర్తించచ్చు సజెస్ట్ సారు ठीक देख लो एन. సో బ్రాడ్ గా ఈచ్ 4 एग्जाम्स का कैटेगराइज कीदोचु एंड ఈ कैटेगराइज कीदोचु कोन मार एक्सपीरियंस एती बिकॉज मैं बैंक एग्जाम्स भी क्लियर कीदो स्टेट सर्विसेज टेक्निकल एंड यूपीएससी ऑल क्लियर कीदो एयर बेसिस ऊपर मैं कीदोचु ये. so one can feel free to add or delete something if you wish to. and अब काइन का तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन मैं काइन फील हो चुका तो स्ट्रैटेजी చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్ట్రాటజీ is the most important thing. हर कोई एग्जाम में स्ट्रैटेजी is the prime most important thing. वो काय स्ट्रैटेजी हापन काचा स्ट्रैटेजी का क्यों कराचा पर असल स्ट्रॅटेजी कायच है. स्ट्रॅटेजी का तो कायच है सिंपल का एक प्लानिंग. हापन एक काम करत ना एक प्लानिंग येते जावाचा. अब एक घर बांधायचं कोण आदमी खूप बांधायचं फर्स्ट बेसमेंट येते और पर स्लॅब येते और पर गोडा बांधताने हनु बांधायचं. इन द सेम वे हापन एक एग्जाम में प्रिपेयर वजना भी हनु एक प्लान रहना हापने काय वो प्लान बेसिकली हापने वीकली टारगेट्स रहना डेली टारगेट्स वीकली टारगेट्स रहना एंड वन ढीलो अचीव करते रहना. एंड करना भी याद कर लो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल फॉलो करना. लोकल मटेरियल ने नहीं तो चीप मटेरियल ने जाओ मत. ऑलवेज ट्राई टू फॉलो स्टैंडर्ड मटेरियल. क्वेश्चन का तो ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆತಿ ಹಪ್ನೆಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಯ ಚಾನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಂಕ तो रिवाइज एंड रिवाइज रिविजन एन छदत्रा इंपॉर्टेंस अज्जी कुण केनी छै कुणस एग्जाम क्रैक करनो ते रिविजन इज utmost important. एंड एक मंचिगा एक नानकिस टाइम टेबल घालो एंड वो टाइम टेबल फॉलो करो एंड ई टाइम टेबल एती वीकली टारगेट्स घालो टारगेट्स एन अचीव करते रहो. एंड the more you achieve these targets happen काय का तो अज्जी मोटिवेशन नहीं आ रहा अज्जी मुनांग जानो अज्जी करनो कन अज्जी काय का तो this is the most underrated point. visualization is power. I repeat the point. से एक ना अर्धम कर लो visualization is power. ये काय का तो visualization का तो हापन काय सदव तो भूल सकाचा परन देख जकोन काय तो देख तो वो अत्रा इजी भूला नहीं हापन. सो हापने करना है काय एक प्रॉब्लम रहतो नहीं तो काय कोणस्तरी टॉपिक पर हापने काय प्रॉब्लम रहतो एक ना जान गूगल करता ने और पर एक यूट्यूब वीडियो देखो नहीं तो एक गूगल इमेज देखो काय का तो अपन आंकिती करना काय देख तो भी करना भूल सकाने सदर कोण भूलाचा पण देख जर कोण करना भूलाने. अब सिनेमा जाओ देना सिनेमा हापन सिनेमा अत्रा इजी भूलाने क्वेश्चन का तो वो दीटे दे जेर सारू इजी हापने याद रच. अब एक मूवी आई थी तेलुगु में हिंदी में दृश्यम कने एक मूवी आई थी. ये दृश्यम मूवी और वो क्रक्स काय का तो हापन काय देखा सको वो भूला नहीं. जेर सारू और नाम भी दृश्यम कन घाल में ले वो मूवी नाम. एंड राइट एटीट्यूड इज कीज टू सक्सेस. वो राइट एटीट्यूड काय इसे हापन एपस एडजस्ट देखा करना भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है रहनो. ऑलवेज टेल योरसेल्फ आई कैन डू इट. वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड घन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो नेगेटिव थॉट्स आओ कर जना फेल्यूर्स आपने ना फेल्यूर्स के आओ कर वो फेल्यूर्स से ओवरकम करने का तो आपने माइंड करना भी पॉजिटिव का रखना. एंड करना भी डोंट फोर्स योरसेल्फ टू स्टडी क्रिएट इंटरेस्ट काय का तो आपण काय सदरे सको और पर देशक इंटरेस्ट घालन सदवनो आपण करना भी अननेसेसरी का फोर्स करनो नहीं आपने ना और पर थोड़े से इंटरेस्ट घाले तो अपन इजी का वेजावचा अर्थम भी बच्चा. एंड ये घन इंपॉर्टेंट चीज हापन मन कोई ये जनाज की वो तो मन अजी इसी का वे तो काय को मार प्रोसेस काय को तो forget that you forget things. I repeat the point. Forget that you forget things. काय का तो human mind has limited capacity. हापन काय का तो काय केलाचा का तो से हापन से याद रच सदवे जकोन से याद रच कर हापन केलाचा but it doesn't work that way. हनु वे निवो हापन आज काय सदवाचा को एक वार में बस भूल जावाचा वो ह्यूमन टेंडेंसीज है. सो जेर सारू ओन और गुరించి अननेसेसरी का वरी नहीं वेणो वरी नहीं वेजो काय करनो भूल जानो काय म भूलुचु कंजकोन वात है ना भूल जावतम नहीं तो काय वचकतो वो अज्जी हापने ना माइंड डिस्टर्ब करू करे म भूल जा रो छु म कू करू कन हनु नहीं करो जो काय करनो कतो वो भूलेर इट्स ह्यूमनली पॉसिबल.
हर एक आदमी हनु बच्चा कन हापन कना केला चको जना थिंग्स नॉर्मल लागत छे सो अब मन अत्र आदमी मार फ्रेंड्स टॉपर्स छे सर्विसेस छे हर एक आदमी इस प्रॉब्लम रहे से काई हरदे रकाड लेने जना जना भूल करा चा आदमी so it is it is a human tendency to forget things jet saro always remember this forget that you forget things उन छोड़ दो और पच and अब नान की इस बात में पूछूं काहे को तो एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर ऑफ हमारे इंजीनियरिंग वेतो ना हमारे फादर समाग होतो और पच लाइफ जरा टफ गा वेती एंड जन्ना मन ఈ కొటేషన్ అజీవి స్వామి వివేకానంద रे కొటేషన్ ఈ ది కొటేషన్ యాక్చువల్లీ మన एक ड्रग निया चढ़ गई मार मात्या द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम ये कोटेशन अजय कोटेशन अराइज अवे कैन स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड ई दी कोटेशन मन एक ड्रग निया चढ़ गई माया माता जना आई शुड से दैट हमार फादर समागो जना आई वाज इन अ ट्रॉमा आई वाज नॉट अ नॉर्मल मैन बट नॉर्मल मैन वे ना ई कोटेशन मन भारी हेल्प की ओके सो द माइंड इज एवरीथिंग एस्पिरेंट्स अब कतरा आदमी स्टूडेंट्स को मैं एकच बात पूछूं द माइंड इज एवरीथिंग ओन तो ये माइंड येते हापन काय करावनो को तो वो करावाचा से हापन हाताच हापन एबिलिटीज पर हापने एक बिलीफ रहनो सो माइंड इज एवरीथिंग ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड ई कोटेशन दिने जो कोन हनुस काय दिने कोनी अब लाइफ है काय अचीव करे जो कोन आदमी के नि जान पूछो ई कोटेशन इज 100% राइट फर्स्ट स्टूडेंट स्टेज काय लागस को तो इसे वेस्ट छे हनु काय रहनी ये काय को लक मिलेज कनु लागस पर अगेन वंस यू अचीव थिंग्स एंड वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट एन एक ना तम जरा नमकम स्टार्ट करते रूम पर then you can see transformation of your personality and great miracles happen in your life so और सारो काय करनो को तो start believing it first of all तमार mind and तम नमकम रखा लो रूम पर so always remember this the mind is everything तम काय चाहो को वो चो but it's all about your personality तमार mind है तम काय काम कराओ सको वो काम करच so जे सारो तमार mind and करना भी strong रखा लेनो and अपने ने एक सबकॉन्शियस माइंड रचे सबकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस मेमरी रचे सो ऑलवेज बिलीव इन योर सबकॉन्शियस मेमरी काय करतो आपण अत्री सदवाचानी भूल जावाचा ई भूलेर काय करतो ह्यूमन टेंडेन्सी छे परन काय एक हरदेर काढलो कोणच एग्जाम जाव देना हरदे आवच आपण कशन करतो वो आपण सबकॉन्शियस माइंड एक पावर सो जे सारो बिलीव इन योर सबकॉन्शियस माइंड तमार सबकॉन्शियस माइंड है ना तम बिलीव करो और पच the mind should not control you rather तुम तमार माइंड एंड कंट्रोल करनो सो तमार माइंड एंड तम कंट्रोल करनो नहीं तो काय वच को तो एक फ्री हॉर्स कूद हासु करच एक गुर्रम एक हॉर्स कूद हासु करच हानु हॉर्स निया हापन माइंड हासु करच वो माइंड एंड कंट्रोल करनो अब हापन वो माइंड एंड नहीं कंट्रोल करतो हानु जच अब फेल्यूर्स आफ्टर फेल्यूर्स एंड ई हर देर काढलो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट बीट हार्ड वर्क सो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क the best hard work you do the best result you can see and मैं కొంచెం సిన్సియర్ గా దశక్ సిన్సియర్ గా मैं फॉलो करतो तो काय करतो I will win all is well I always used to say this to myself क्वेश्चन करतो हापने ऊपर हापने नमकम नहीं रहतो दूसर कोई नमे नहीं सो हापने हापन नमनो सो और सार अपन काय करनो करना भी always say yourself I will win all is well failures आवच failures आव करच it's okay failures are part of life on failures है ना हापन failures नहीं देखनो they are stepping stones to success कन देखनो failures है थे हापन घन सिकाचा अब एक्चुअली काय करतो सक्सेस अत्र सिकाने परन फेल्यूर एक आदमी ने लाइफ घन सिकावच सो एक फेल्यूर आदमी स्टोरी डिफरेंट गा रचे सक्सेसफुल आदमी स्टोरी डिफरेंट गा रचे failures will teach you many things it will make you more humble so failures should होते हापन काय सीखनो परन और गुరించి हापन बाधा पडन और गुరించి हापन और कॉन्फिडेंस इन लूज नहीं बनो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शशिकांत ये कौन से को आइडेंटिफाई कर पा रहा को नहीं मैं एटलीस्ट वो ओपन गा तो आपने ये ते चैट बॉक्स में तो लगता और काई च प्रॉब्लम देख सका था अपन अदे दिस इज वेरी रिस्पांसिबल बिहेवियर ये कौन से को आइडेंटिफाई वेरो को नहीं वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई हु इज दिस मन में तकार को नहीं आता प्लीज गिव मी केरोस वी कैन गिव हु इज दैट ही हैज टू कम नो अब तमन काय चाहनो का तम मैसेज करो चैट बॉक्स है तम लको काय में नहीं तम काय चाहनो को तमन एक ना चैट बॉक्स है घालो
Yeah, Shashikant, you wind up it Anna. first. We'll go for the interaction. Okay, more interaction. Yeah, that is yeah, better. okay, okay. Yeah, just give me 5 minutes. I'll do it. Yeah. About attitude, chala. I think attitude chala important ek aadmi na. So it is all about your attitude. Question करते your attitude will determine your direction. तम कोनस direction आ जा रहे सको तमार attitude determine करायचा. So attitude करतो कान करतो your mindset basically. तम काई सोचो सो उस तमार attitude. वो काई accept your failure what you are. अब तम fail वेरे सको तो always accept it. फेल वेर वाचा क्वेश्चन करता लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट सक्सेसेस लाइफ सक्सेस भी आवचा फेल्यूर भी आवचा वीकनेस कच्छको वीकनेस पर काम करो and focus on incremental changes एकदम एक राता में मट्टम चेंज करू छु एक राता मट्टम करू छु कनाय केलो मत हनु काय वेनी लाइफ इज ऑल अबाउट incremental changes दाड़ी दाड़ी दशक चेंज करू करनो 365 days single every day you have to put that effort then you can see a big change एक दाड़ा मट्टम चेंज आए नहीं and always be positive optimistic रहो ऑप्टिमिस्टिक रहनो and पॉजिटिव रहनो कतो तम काय करनो कतो तमार फोन आ दाड़ी एक मंची apps घालो मोटिवेशन कोटेशंस ऐप घालो एवरी डे लुक एट द कोटेशंस and कन्ना भी तमार मोबाइल लेना मोबाइल वॉलपेपर लेना ऐसे तम मंची मंच कोटेशंस घालो कोटेशंस काय कतो माइंड एंड रिलीफ दचा and माइंड एना एक्चुअली रिजुविनेट करच मंची का काम करेन नेक्स्ट कन्ना भी प्रॉब्लम रहतो मेडिटेट करो योगा करो to calm down your mind meditation yoga manchiga kaam करायचं for example मा रनिंग ए जाऊं छु हर दिन so running ए जाओ तुम्हारे इष्टम कुणस एक काम करो वो काय करता बेसिकली it releases some hormones release करताने stress and कम करायचं and physical बघा fit राहायचं आपण confidence बढत होती and sky is the limit attitude रहनो have big goals don't settle for small things big goals रहनो आदमी ना and और तగ్గट्टू कष्ट भी करनो खाली big goals रहतो काम चालेने और तగ్గट्टू कष्ट भी करनो and then manchi role models levno and unduti seekno for example my role model Abdul Kalam ji so Abdul Kalam ji se book le sadamelo wo kain kachko or prati ideology ma believe karuchu so jer saru manchi role model rare be life at chala important wo and never give up attitude failure ek failure tamen kai it should not hamper your confidence failure niya naileno hatam one ek confidence one ek success and to could turn करना को वो हापन हाताचं and failure काय करतो हापन घन शिकावाचं failure ते చాలా విషయాలు शिकावाचं విషయాలు हापन शिकनो ओरपच हापन काय सक्सेस సాధించను అజ్జి పేషెన్స్ అండ్ పర్సివియరెన్స్ ఇస్ కి కత్రాయి ప్రాబ్లం వేద యు హావ్ టు కంటిన్యూ యువర్ జర్నీ కత్రాయి ఇబ్బంది రేద చదువును కై నై ఆగుతో బి చదువును బికాజ్ దిస్ ఇస్ వాట్ యు వాంట్ కాబట్టి perseverance is the key and most importantly happen say technology use kar rahe students especially but at least now in right reasons in use करा अबे तो wrong reasons in वार use किदे at least अब right reasons in use करा मंची apps घालो YouTube में देखो and YouTube है तमें काइन topic चाहनो को तो world YouTube is full of information तमें काइन चाहनो को तो YouTube अच्छा Google अच्छा so own use करा so let's use technology for right reasons at least from now and then तमें दूसरों से compare करो मत क्वेश्चन का तो हर एक आदमी टाइम आवाज़ अपना टाइम आएगा ठीक है और अपना टाइम आएगा ने एक स्मॉल एग्जांपल काइन करतो वी हैव टू ग्रेट पर्सनालिटीज हियर ओबामा एंड ट्रम्प ओबामा जो कौन 55 इयर्स इन रिटायर वेको पर ट्रम्प काइन किदो 70 इयर्स है ना प्रेसिडेंट का इलेक्ट होच सो दिस इज व्हाट सो प्रत्येक एक टाइम जोन रचे सो वो टाइम जोन आज तुनी हापन काइन करनो और साथ स्ट्रगल करनो अतराच सो वी कैन नॉट जस्ट यू नो पुश एवरीवन की तर ये जा ई वेणो ई वो जा ई वेणो कन कोनी परन अपना टाइम आएगा जर सारो हार्ड वर्क तो करनो अपन एफर्ट मात्रम कनाई छोड़े छे नेक्स्ट अब कनाई फेल्यूर आओ तो एक बात कहलो दिस टू शैल पास ऑलवेज से योरसेल्फ दिस टू शैल पास क्वेश्चन का तो ई मूवमेंट भी डगर जावच अजी एक मूवमेंट आवच लाइफ का का तो नान की फेजेस चालू करच स्टूडेंट फेज उसके बाद और पचा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेज और पचा एक जॉब फेज सो दिस टू शैल पास कन कनाई खेलो अब if you are going through a rough patch of your life जना को this too shall pass that's it क्वेश्चन को तो ई भी डगर जावच आज एक नव टाइम आवच ओमा हापन एक्सेल वाचा हनुकन this too shall pass कन केनो कनाय and most importantly planning is very essential ये हापन सेम मालूम से if you fail to plan you are planning to fail so जेर सारो कन्ना एक प्लान खा लेता ने हापन उनंग जार అవసరం से and then 7 piece of success आवनो को तो काय करनो proper preparation लेनो you cannot do without preparation మంచిగా ప్లానింగ్ करनो प्रैक्टिस करनो एग्जाम में सारो पेशेंस रहनो परफेक्शन रहनो करो जकन काम है and you should be very very passionate about what you are doing
अब मन 7 attempts 6 attempts लागे civil services है, but I could वो 6 attempts in मैं कू face की तो कता because I was very passionate. मन civil services join करना का एक पिच्छी वेती passion वेती. So जेर सारो मन वो failure करना है failure नहीं दीटो कोनी failure रहते कू बार आवनो वो कू rectify करना कन every time I used to think of it and positive attitude करना छोड़े रच्छी positive attitude examiners कोने अब చదువుకొని हापन और पच भी చాలా important life है ना घनी important life है वो क्वेश्चन को तो ये आप చదువుకొని वर्ल्ड आपने नेगेटिविटी ज्यादा छ टॉक्सिसिटी वारू ज्यादा छ बार जेर सारू one has to develop this positive attitude नहीं तो अब చదువుకొని जिंदगी में दाढ़ी रो कर रहा छ नेक्स्ट इस सेन मालूम छ सक्सेस काइंड दकावच ऊपर खाली सक्सेस दकावच परन ई सक्सेस अचीव करने को तो आपण पर्सिस्टेंट गा आपण प्रिपेयर वेणो फेल्यूर्स देखनो मेनी सैक्रिफाइसेस करनो घरे नहीं जानो इफ एंड कोई दूसरा एक्टिविटीज नहीं जानो दूसरे फ्रेंड्स कोन मंचिगा अर्न करू कर जॉब छोड़ देनो हनु सैक्रिफाइस करज ना यू कैन सी दैट सक्सेस डिसअपॉइंटमेंट रच डिसिप्लिन हार्ड गा रच हार्ड वर्क करनो डेडिकेशन रेवनो इससे हापने करज ना ई सक्सेस कनो जकोन ऊपर रच कोन आइसबर्ग हापने दकावच नेक्स्ट ये చాలా इंपॉर्टेंट अब्राहम लिंकन का जकोन बात है आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दिस काहे को तो अब मार्कन 6 घंटा रहतो मैं 4 घंटा काहे करू को तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक झाड़न मारे छ मार्कन कुराडी छ मतलब फर्स्ट 4 घंटा काहे करू को तो कुराडीन शार्प करू छु फर्स्ट 4 घंटा में कुराडीन शार्प करतो और પછી आई कैन बी वेरी श्योर दैट मैं एक 2 मिनट में मार सकू छु जेर सारू प्रैक्टिस ये एति काहे करू को तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड I personally admire MS Dhoni. I personally admire MS Dhoni. MS Dhoni काहे कतो everyone has to look at this. MS Dhoni काहे कतो youngsters are so result oriented nowadays that they actually forget about the process. Paran the process is more important than the results. And if you take care of the process, you will get the results. At MS Dhoni कजकोन बात काहे कतो one should focus on the process. कतो करजकोन काम ना हापन फोकस करनो रिजल्ट गुరించి आलोचना नहीं करनो अब सिविल सर्विसेस చదువుకొని कैंडिडेट्स కూరच कतो ओ सजन ना डे ड्रीम मैं सवार ई करूछु वो करूछु ई वजना वो करूछु कन ओते जाप हापन काय करनो कतो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोकस ऑन द प्रोसेस अब करजकोन कामन परफेक्ट कर दो रिजल्ट डेफिनेटली आवच पर खाली रिजल्ट ऊपर हापन फोकस घालतो प्रोसेस कोण करच काम कोण करच कोई करे नहीं सो जेर सारू process is more important and the result will follow the process. So my MS Dhoni is equal to I admire his leadership qualities kabatti and then everyone likes Sachin Tendulkar. So Sachin Tendulkar ek small interview hai kai ka to interview ma ek the interviewer asks him sir tam 100 centuries ku kide because it's not humanly possible 100 centuries ku kide tam asal ku vivo tam katra ku plan kide kato Tendulkar ek baat ko kai kato I never planned, it happened. Tendulkar says, I never planned, it happened. कतो काय मग कन्ना 100 सेंचुरीज मारनो कन कोणी आयो होता मग मार मुनांग एक बॉल आवच जस्ट मार मुनांग एक बॉल आवच वो बॉल इन मग प्रॉपर गा इवैल्यूएट करता ने वो रमोचु सो सचिन तेंदुलकर काय कसत कतो you have to take one ball at a time don't think about the larger results the larger goals अब तू काय कर सके क्रिकेट है एक बॉल आवच वो बॉल इन तू बेस्ट गा रमनो और गुరించి ఆలోచన करनो అత్రాస్ और गुరించి नहीं आलोचना करो जो मैं 100 सेंचुरी मारुछु दिस सेंचुरी मारुछु कतो अत्क्रम कोन that then you are living in hallucination result आता है so आता तेंदुलकर कजकोन वात धोनी कजकोन वात एकच काय कतो आपण प्रोसेस ऊपर फोकस करनो रिजल्ट कनाय छोड़ देनो क्वेश्चन कतो रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस आपण प्रोसेस समर करतो रिजल्ट डेफिनेटली आव नेक्स्ट Ditin yes please bear with me when you want something all the universe conspires in helping you to achieve it ई पॉलो कोलिहोस कचवा ई काय का तो हापन कतरा बैड गा एक विषय एक एलिमेंट इन समाचा को वो डेफिनेटली हापने मलच परन वो काय का तो हापन डिजायर पर डिपेंड वचु कतरा स्ट्रांग डिजायर छ हापने ई कतरा स्ट्रांग डिजायर छको ओन बट्टी हापने अपॉर्चुनिटी साव कर नेक्स्ट ई घन इंपॉर्टेंट एंड ई काय का तो वन ऑफ माय फेवरेट्स कोट ई राइट साइड इन सकोन सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड एंड फेलियर शुड नॉट गो टू योर हार्ट सक्सेस आवजना वो मातन चढनोनी फेल्यूर जकोन हापन दिला जावनोनी सक्सेस मातन चढतो जकोन आंकी दकायनी अजी फेलियर हार्ट इन जावतो जकोन हापन काय कर सकानी और पस जेर सारो फेलियर आवजना वो हार्ट इन नहीं लेवनो और ऊपर काम करता नहीं सक्सेस आवनो एर अर्थम सक्सेस आवजना हापन काय को समथिंग स्पेशल किदेचा कोई नहीं के किदे जकोन हनुकन काय छे से आदमी किदेचा वी आर जस्ट वन अमंग देम
जे सारो success should not go to your head, you have to take it in a right manner. And then success is never final, failure is never fatal. It's the courage that counts. Success आएगा तो वो final चाहिए, और that is a actual journey. अब civil services देखो तो rank air is just a small step entering into the service. उसके और पचा असल आटा start वच्चे. Senior officers know it better here. Getting into civil services is just a small thing, but और पचा service का काम वच्चे को, that is a larger thing. And failure is never fatal. You can try it afterwards. And see, just अब देखो एक दी बात सत है. Usually what we do is we study for the exam and we neglect the practice. आपण काय करतो सदवाचा पर्यंत practice इन गुరించి असल आपण माइंड घालाने. So there are two components for the exam. एक काय करतो सदवनो books लेतानी सदवनो standard sources लेवनो all parts of the syllabus in effective cover करनो. But practice है ना आपण usually आपण neglect कराचा. काय होता वो practice? Previous year questions देखनो. अन्ना. Wind up fast question because we yeah, have to sure, take questions. Yeah. So previous year questions देखो तो आपने काय करतो exam में trend अर्धम वच्चे समझ एक ना समझ लो तो आपने काय करतो और पच आपण सदवेर विधान मार जावच. And आपण mind and mental का prepare कर लेनो, paper difficult का आवचे ये इसे आपण mental का fix वेनो, so that exam आ कुमतो भी happen on easy का tackle करे सारो. And previous cutoffs and refer कर लेनो and और बट्टी plan करनो. Let's say अब एक small example पूछो. Last year civil services prelims cut off 77 with ST category out of 200 marks. Abba to get 77 out of 200 happens 100 out of 100 questions attempt करे राउस रमशी. एक 70-75 questions मंचिका कर लो तो you can cross that 77 marks margin. वन बट्टी हापन plan कर लेना accordingly. वो ज़्यादातर 100 questions in करना attempt try नहीं करना. Safe का एक safe game play करनो का तो cut off refer करो और बट्टी plan करो exam काय करो. And next, I always believe kind kata revision is the key to success. Revision kata kind basically re is again, vision is see. To see the same thing again and again. Date is a con element and ajay dekho to mind register veja so that recalling capacity. Easy ka exam recall was one. Hate ek nankis graphs I'll not take more time. Ek scientific analysis kind kato when you read something, वो ना easy का happen 1 month है blue color element kind सको. अब एक दार सदवे और पस on touch ने करो तो एक 1 month एर पच आपने काय हर दरेनी अंको रफ का अर्थम वचा और पच फर्स्ट रीडिंग रेड लाइन इंडिकेट्स रेड लाइन काय इंडिकेट करस को तो फर्स्ट रिवीजन की दे और पच ऑन टच की दे को नहीं भूल जाओचा येलो लाइन काय इंडिकेट करसा 24 आवर्स पे आवर्स एर पच आपण काय को हर दर काढ लेने वो दशकदार आपण हर दर काढाचा भूल जाओचा. सो आता ई ऊपर 100 to 70 लाइन देखो तो काय अर्थम वेरिच करतो. इट इज ऑल अबाउट योर रिवीजन. हापन कतरा इफेक्टिव रिवीजन कराचा को अतरा इफेक्टिव का वो ना माइंड स्टोर कराचा एग्जाम वन रिप्रोड्यूस कराचा. ये ग्राफ साइंटिफिक का डिजाइन किदेचा. सो आई हैव नो bias in this. So revision is the key. That is what we have to understand here. And memory boosters, we always complain this candidates in ek problem scan kato there are so many things atra information se ku in how to remember this in ku seek no kai karno ku har der kar leno kato visualize the information visualize karo. And नाम की टेक्निक लाइक एक्रोनिम्स निमोनिक्स यूज करो, शॉर्टकट्स घालो. एंड और पच का है इमेज नेम एसोसिएशंस के नाम पर हर दर काढ लो. एंड चेनिंग टेक्निक्स का तो का एक 10 एलिमेंट रहतो वो 10 एलिमेंट से ना एक चेन निर्णय हर दर काढ लो, एक स्टोरी घाल लेता ने. एंड लर्न बाय डूइंग काय काम करता ने वो काम करता ने वन सीखे सारो. अब फार्मिंग से फार्मिंग है काय अब उन करे तो आपने सीखा चावन हनु फार्मिंग करता ने काय सीखे सारो. Connect the information to that you already know. हापन सदकोन information है ना नव information जोड़ा तो हापन easy का अर्थम वच्चे. And वार जोड़ते बढ़ाओ नो अब ये information काहे सदवा सको एक ना जोड़ते बढ़ाओ तो it gets registered in the mind. And थोड़े से अर्थम कर लेने try करो. And then best way is to teach others. हापन काहे सदवे सको हापन friends है ना नहीं तो हापन juniors हैं के नहीं teach करे तो हापन इनका effective का हर दर काला सा. One very important technique is photogenic memory. काय करतो हापन देखो कोण एलिमेंट है ना हापन easy का register कराचा. So this is your mind and काय देखो तो वो register कराचा हापन. Next, अब Confucius एक बात कर सकता है काय करतो I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. कतो काय हापन काय सामड़तो ओन भूल जाओचा परन काय देखो तो ओन हर दे रकालाचा परन ओन करतो हापन मट्टम अर्थम विजाओचो. So
once देखनो on करनो जना आपने easy का काइंड तो हर दे रच next अब एक small exercise है अन्ना सुधाकर अन्ना just give me 2 minutes this is a very good exercise you'll enjoy it अब आता देखो sustainable development goals कन आपने 17 goals अब ये सिविल सर्विसेज ने तो हर एक एग्जाम में पूछ रहे थे इवन बैंक एग्जाम में भी काइंड को एक नंबर देता नहीं नंबर इन काइंड एसडीजीज कन पूछ रहे सर अब 17 एसडीजीज इट्स ह्यूमनली इंपॉसिबल हर दे रिकॉर्ड को हर दे रिकॉर्ड में सो आई विल टेल यू अ स्मॉल टेक्निक एक ना देखो से को हर दे रिकॉर्ड को तो अब एक एक नंबर इन एक एक स्टोरी घाले सर आई एम जस्ट गिविंग यू वन हिंट आता हिंट दे रोचो सो ये हिंट तुम फॉलो करता ने दूसरे ने इंप्लीमेंट करो अब काइंड को तो फर्स्ट देखो एक एक नंबर वन काइंड ऑफ पॉवर्टी को हर देर करनो 1 रुपया छ को ना 6 और कन 1 रुपया भी नहीं रहे तो काय वचू गरीब को तो पॉवर्टी वन इज पॉवर्टी 1 रुपया भी 6 को ना आदमी गरीब वच दैट इज पॉवर्टी वन इज पॉवर्टी एंड अब दी नंबर को हर देर करनो दी निमिषाला आपण काय सी करे सारू मैगी करे सारू मैगी खाओ तो काय वच आपण भूख मर जाओ दैट इज हंगर रिलेटेड सो नंबर 2 इज जीरो हंगर एंड 3 नंबर को हर देर करने को तो आपने 3 रोजेस चाय से 3 रोजेस चाय टू द सीनियर्स इट माइट लुक वेरी cheap but again sir pardon me because this is the best way of learning and remembering things so please pardon if you find any problem here so 3 roses tea sir 3 roses tea piyo to काय वच आपण हेल्थ आचर so number 3 is about good health अब 4 को हर देर करनो अब కనిపించని 4 సింహం का हमारे एक तेलुगु में एक डायलॉग है वो 4 सिंहम रच का वो 4 सिंहम का एक आईपीएस ऑफिसर रहने को तो मंची एजुकेशन रहना 4 is regarding education and अब 5 नंबर को हर देर करनो व्हाट इज द स्टोरी फॉर 5 का तो अपन 5 पांडव छे एंड एक द्रौपदी छे 5 पांडव एंड एक द्रौपदी का तो this is gender equality because women are given more importance here so gender ए गुరించి से जैसा gender equality कन हर देर कर लो and अब 6 बजे का है 6 बजे उठाचा पानी पियाचा बाथरूम में जावाचा so 6 is clean water and sanitation and number 7 प्रभाती 7 बजे लाइट्स ऑन कराचा 8 बजे ऑफिस में जावाचा हनो you can just remember things my only concern here is हनो काय तो करता नहीं आपण इसे हर देर कर ले सारो so you have to work on these things unnecessary का मन हर देर नहीं मैं इसे भूल जाऊं चुका तो हर एक आदमी भूल जाओ अच्छा पर we should have some memory technique हनु memory techniques use करता है basically अपन दूसर विषय लेन इजी का हर देर कर ले सर next coming to civil service exam just 1 minute scheme of the exam kind का तो we have just 3 levels Shashikant I will interrupt you I'm sorry Shashikant civil से पर एक exclusive session करा yeah anna janna you just refer to this cutoffs anna we have prelims and mains cutoff mad ghar mein lacho you just refer to it yeah so we will do one exclusive session on prelims civils don't worry okay yeah sure anna sure you take questions now because this is broader exam preparation strategy got it and you can both join and you can do it okay don't worry okay anna yeah please stop sharing your screen please stop sharing your screen it is wonderful presentation but in our this thing we have to give you a lot more time to and it should be exclusive to aspirants right so sure aspirants se kara okay right I mean all aspirants of exams so I will definitely take question पीरिया सर एक सजेशन छक कतो काई कतो पीरिया सर काई के रोज कतो अपन लोग खाली सिविल से देख रहे पण वो हेटेरियन देख रहे कोनी कोई तो सारे सजेशन काई छको तो पीरिया सर प्लीज टेल सर Hello, good evening to everybody. Shashikant done very well. Thank you, sir. One question is, आपने only top civil services जा रहे almost number sufficient है, whereas like staff selection commission, CBI, Delhi government, all are open to us. Same आपने open है. तो अतरा staff ने 4-5 स्टेट में रहता है आपने जा रहे कोनी वंगारी कोनी आपने नहीं. So what is the problem for it? Basic problem there is some problem in our approach. See, we are like Meenas cornering every benefit. We don't have much. So our representation does come say all staff selection, CBI, Delhi government. Yes, so, sir. You're absolutely right, sir. Work. So problem kind is for broad audience. Since you are a new one, you should be able to do better things. Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. Ema one first thing kind of information asymmetry, sir.
ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ हापने पेनिट्रेट वेरी कोणी सर डाउन येतोनी दट कत काय रिक्रुटमेंट वेरी इज अ स्कीम ऑफ थिंग्स काइन सकन सर मा हन अभाल कोजू सर वी हैव टू प्रिपेयर एग्जाम स्पेसिफिकली हा पण काय करतो एक ना एक प्रिपेयर वेतानी ಏನದು ಮಟ್ಟಂ ಅన్ని ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ कराकन देखाचा सर दॅट इज अ व्हेरी रॉंग स्ट्रॅटेजी हा पण एक्झाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करज ना सर वी विल कैटर टू द डिमांड ऑफ ईच एंड एव्हरी एक्झाम सर हा पण आई थिंक वी आर फेलिंग देयर सर and information asymmetry so that about information happen to the corner of every society happen they milato people will be able to take up sir I think a lack of information is one thing and second wrong strategy regarding the exams these two are I think sir reasons for this. Yeah, very good, Shashikant. It is because of lack of awareness among our people that there are other exams also other than civils. Yes, that's the main reason, and that is why Minas are getting more ATIs and in our department, especially I'm seeing it. So that is the reason. Thank you. Very good answer. Srinivas Naik, please ask your question. Please first to the topic. Good evening, sir. Ram sir to everybody. Go to the topic. Sir, Ram, sir, are you able to listen to me? Yeah. Yes, sir. Yeah, we are able to listen. Sir, thank you very much for creating such a wonderful opportunity to all Gore boys. मैं राज happy का छूं. First of all, I am an entrepreneur, sir. My name is Srinivas. I am working on educational platform. Actually, it is called Learners Valley. And our company has been certified as a government innovative startup company by the government of India. Actually, if there is a possibility, give me one session, sir. I will speak about our company. But I just wanted to give one suggestion to Shashikant sir over here. Actually, I have been doing many seminars with various colleges, sir. And we have worked with nearly 15 to 20 colleges at this point of time in Telangana and Andhra Pradesh. And what I have seen is that this awareness is, as Piriya sir said and Shashikant sir said, awareness is not there, sir. Awareness chaining, same. And मैं दिल्ली में सिविल सर्विसेज प्रिपेयर हो जना मैं एक देख में लो sir. That is called when students join the colleges, they immediately join a coaching center for coaching. Actually, we have devised a new thing called government examinations training. For example, yes, as Shashikant sir said, it is like one what is it called as one exam perspective. But when a student is having a proper understanding of the subject, he should be able to crack even staff selection commission, or he should be able to crack civil services. This is the main idea behind what I am doing, sir. So this is just a suggestion, but I will if Sudhakar sir give me an opportunity so that I can give you a better understanding about government examinations training and also about skilled employment training, which we are doing at this point of time, sir. Thank you, Srinivas bhaiya. Thank you so much. तारा जो भी तू forthcoming जो offer हमने दिनों ची, we will definitely work and we will definitely take you on board for if your whatever you are doing is beneficial for our community, we will definitely take you on board. Thank you. So अब अजी 3-4 लोग question पूछने ready छे, पण ना time घणे short आपने ना. So civil services कजो कोण exams कजो कोण एक घणो मोटो ocean और बारे में these things गुत्र काढलो. एक जो कोण know your enemy आपण शशिकांत कोजू. तो know your enemy mean you have to know your subject. What is the syllabus? What is the demand of that exam? And second thing is sharpen your skills. Sharpen your skills. आपण एक झाडेन काढनो गोतो पहिला कराडीन बागा ई करनो कराडी कतरा ई रचना कतरा शार्प गा रचना आपण जतरा जल्दी झाड काढ सकता. तो आपण एफर्ट्स काय करतो आपण ओन कतरा जल्दी कर सकता जे परिणो येती में शशिकांतेनन आणि जो भी क्वेश्चन पूछी जे दोईन सेन सेन धन्यवाद करतो. नेक्स्ट स्पीकर આપણો जो एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज इम्पॉर्टंट છે आपण लाइफ માં कसेन को तो आपण एकच केला છે पढ़ाई थी लाइफ वच केताणी पण पढ़ाई थी छोड़न जो एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज છે वो पर कतरा फोकस करो तो कतरा आपण एम जमाचा करजो कोण एक एरिया છે આપણે એમાં આપણે નેક્સ્ટ આપણે એક છોરી ऑलमोस्ट 20 सीन में एक्ट कर मिली नानकी छोरी છે चाइल्ड एक्टर છે આપણે एक ऑफिसर बेटी છે
तो वो ऑलमोस्ट 20 सीन में भी हम उन्होंने भी लायर कोशिश कर रहे था આપણે એક મંગલીબાઈ છે તમને માલूम છે મંગલીબાઈ બારે કેર ઈ છે ની તમને વન भी एक लायर कोशिश कर रहे था ये से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये पढ़ते पढ़ते दूसरे एक्टिविटीज पर फोकस की रही है ना ये फील्ड में वो रानी च रही है हम देख रहे छो दीवी के तने एक छोरी अपन बिग बॉस एम भी છે तो वो भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी છે हनुज આપણો आमगोत तुकाराम काई कतो 5 खंडाले में सेती ज्यादा पीक्स कतो सेती ज्यादा टालेस्ट माउंटेन्स रहे के उन्होंने चढ़मेलो जो कोण उन्होंने अच्छी उन पर चढ़तानी ने उन पर एक ई किलो जो कोण कशन कतो आपण 2 घंटा जम्मू काश्मीर में एक कोल्ड एरिया में जाता नहीं तम 2 घंटा रो तमने कतरा हारी बुलगा वच को जो कोण तमने मालूम है तो ई काई के तो इट्स नॉट अ लो अल्टीट्यूड जब जम्मू काश्मीर इज वेरी लो अल्टीट्यूड बट इट इज ऑलमोस्ट एवरेस्ट ऑलमोस्ट 8848 मीटर्स एत्तु पर जाता नहीं ना वो एरिया में कतरा रच को तो मानसे बचेरो घणो कस्टमर तो वो काई के तो एक बॉडी भी सही करिंचनु and mental गा भी अतरा टफनेस रहनो so this is far tougher than the IPS training or whatever training that is there on this earth it is far better difficult training so ये training लेता नहीं ना NCC थी एक घणो नानक्या सो टांडे थी आता नहीं ना एक ये 5 खंडाले में ये किलो जो कोना बाजी 2 खंडाल चढ़ो तो गिनीस रिकॉर्ड वच हो वर्ल्ड में वो एक one of the first personality to peak all the tallest peak was ओवर बारे में આપણો રામબાબુ ડોક્ટર રામબાબુ एक ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर का काम करो છે ડોક્ટર રામબાબુ અને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે ડોક્ટર રામબાબુ પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો Anna just a minute I just want to give you a vote of thanks before that sorry for the interruption Shashi please vote of thanks formalities this we will take care later okay thank you Shashi okay Anna. yeah thank you रामबाबू प्लीज गो अहेड राम राम भाई भैया आज इंडिया गौर भाई से आयोजक जूम मीटिंग है राम राम मैं डॉक्टर रामबाबू छू तुकाराम अब शशिकांत भैया చాలా లెందీగా టాపిక్ కోసే కానీ చాలా వాల్యుబుల్ టాపిక్ కోసే और बारे में बुक लो तो आप शशिकांत भैया डेफिनेटली చాలా आपसे कोई एक फीडबैक दे तो तुकाराम राम आमगोद గురించి कुछ तुकाराम आमगोद अपने గోర్ బంజారా एक మట్టిమ మాణిక్యం తో ఈ వచ్చేసి 21వ తారీఖు 12/98 हुयो है कतकतो तक्किलपल्ली తండా రంగారెడ్డి जिला तेलंगाना स्टेट में हुए थे फादर नाम आमगोद रामदास आफ्टर दिस स्पीकिंग ओके डैडी नाम 850 जामकू बाइस है and 5 members siblings है भाई भैया 4 brothers है एक सिस्टर है इस स्कूल వచ్చేసి अपने ट्राइबल वेलफेयर मेदक जिला में पढ़ो है इंटरमीडिएट వచ్చేసి साइंस एलबी साइंस कॉलेज एनसीसी कॉलेज यहाँ पढ़ो है वो माई सीनियर अंडर ऑफिसर रैंक एनसीसी ऑफिसर का और पस बीए पॉलिटिकल साइंस डिग्री की तुकाराम और हैदराबाद कॉलेज थी जब एनसीसी माती वक्त इयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखता 2015 बेसिक ट्रेनिंग एनसीसी तेलंगाना एनसीसी बटालियन एकलोज टोटल तेलंगाना स्टेट में एक आदमी एक स्टूडेंट सिलेक्ट होता वो अपने तुकाराम से वत्ते थी वन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज उत्तराकाशी वक्त वन भेजे तेलंगाना स्टेट थी ओनली स्टूडेंट फ्रॉम तेलंगाना एकलोज वो गोरमाटी वो अपने राजमणि का मानव छे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज की नेक्स्ट गटला कॉलेज सके मंदी फस्ट मानव छे और पच मानवी मन और पच वक्त भी चाला कतो चाला प्रैक्टिस वेतानी वन मंची रैंक फर्स्ट पोजीशन आए वक्त वक्त सेकंड लेवल अजय कॉलेज है और नाम चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज वो वच्चे जम्मू काश्मीर है वो जम्मू काश्मीर वो मंचू पहाड़ी में वक्त भी ट्रेनिंग देने से आर्मी ऑफिसर ले वो आर्मी वेलफेयर हाई आल्टीट्यूड स्कूल ब्रिगेडियर वक्त थी मंची अवार्ड भी आई होता है कई अवार्ड आई तो टॉप अचीवमेंट टेक्निकल अचीवर अवार्ड आई होता है चीफ ब्रिगेडियर ट्रेनिंग देना होता है और बच्चा और चदकुनो और कोशिश पूरा बढ़ गई और धैर्य साहस पूरा बढ़ गई होते थे 2016 में आई माउंट नोरबू हिमाचल प्रदेश 5550 मीटर्स हाइट एक पहाड़ी वन चढ़ो है और 2017 में माउंट रुद्गेरा 5895 मीटर्स हाइट उत्तराखंड वो भी चढ़ो है और 2018 स्टॉक कांगरी 6153 मीटर्स हाइट छो लद्दाख छो वो भी वही माउंट चढ़ो है और 2019 में माउंट दुपट्टी
द्रौपदी का దండ ఉత్తరాకాశి ఈ మౌంట్ నామ్ द्रौपदी का దండ ఈ 56880 मीटर्स है और 2018 में किलिमंजारो चढ़ो कतो रांग वर्ष में 5895 मीटर्स किलिमंजारो अफ्रीका हाईएस्ट पीक माउंट छौ वो चढ़ो जना ಒತ್ತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಹನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಲೋಸ್కొని ತಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಬಂಚ್ನು ಗतो तार ऊपर हेलमेट पहननो कने मैसेज दिनो तो वर्पत वना अपने इंडियन प्रेसिडेंट कोविंद साहब ने फेलिसिटेट भी किरो अपने तुकाराम ने वर्पत 2019 मे 22 मा अपने तुकाराम अपने माउंट एवरेस्ट ने स्केल किरो వచ్చేసి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ 8848 మీటర్స్ హైట్ వచ్చేసి అతని సౌత్ కోల్ కదకును నేపాల్ సైడ్ టఫెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ माउंट एवरेस्ट चढ़ो कुण भी अतर धैर्य भी करेनी वो साइड चढ़नो कतो काबट्टी साउथ नेपाल साइड सिलेक्ट किदो अपने तुकाराम आज एक बाइक अपने मालावत पूर्ण यंगेस्ट गर्ल इन द एज ऑफ 13 years स्केल्ड माउंट एवरेस्ट 2014 की बाई वो వచ్చేసి చైనా సైడ్ కి దిసా वो जरा हल्का रहता चैना साइड बट नेपाल साइड इज नॉट ए जोक చాలా टफेस्ट साइड रहता है वो साउथ पोल कन करते हो साउथ पोल कन करते हैं वो जारो को तो ऑलमोस्ट अपना डेप्थ का देखो ना छूरे जो लेका का वादो सो ये 5 मेंबर्स ट्रू पे दिगेस अपना तुकाराम एंड 5 मेंबर्स ट्रू पे दिगेस अनफॉर्चुनेटली वो मा दी मन के वत्त समागे एक काय को उल्लिति पाड़ तड़रोना समाग होता है अजय का भाई काय को रिटर्न जर्नी में समाग होता है तो 5 मेंबर्स ट्रू क्या दी वत्त समागे वो टेम्परेचर तटलेका ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ సరిపోక ముందు తాకత్ సరిపోక వత్త సమాగేత అట్లాంటి టఫెస్ట్ జాబ్ 2020 మా ఎవరెస్ట్ చढ़ेमा ఆల్మోస్ట్ 26 పీపుల్ హ్యావ్ డైడ్ ఆల్రెడీ సో अत्र टफ रहता माउंट एवरेस्ट के जगनो माउंट एवरेस्ट जारे को तो अपन ऑलरेडी अपन डेप्थ के लखन जारे कन अर्थम अत्र धैर्य रेनो अपने गोरमाटी एक छोरा हन किदो अजी वर्पत नेक्स्ट आफ्टर माउंट स्केलिंग माउंट एवरेस्ट ఈ వచ్చేసి अपने तुकाराम వచ్చేది సమోకొని वो धैर्य में थी माउंट एल्ब्रस 56446 मीटर्स यूरोप कॉन्टिनेंट हाईएस्ट पीक 2019 and then 2019 साउथ अमेरिका माउंट एकांगोवा हाइट 6962 ये వచ్చేసి and next 2019 माउंट कौशिजिको ऑस्ट्रेलिया वतबी बुश फायर गुరించి कैंपेन किदो ऑस्ट्रेलिया में और पता ही कोरोना का जो కొంత वर्ल्ड वाइड का మెల్లగా స్టార్ట్ అయ్యో డిసెంబర్ మూమెంట్ वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ आया इंडिया में निकालते ఈ పార్టీకి మిగతా రెండు టార్గెట్స్ ఉన్నాయి अंटार्कटिका खंडम माउंट विल्सन एंड देन अलास्का अमेरिका माउंट डेनाली ये माउंट चंडुगन अजी ईस ఈ పార్టీకి సడన్ ఆల్సో కన్నాయకు యంగ్ వచ్చేసి अपने तुकाराम ने చాలా మంచి అవార్డ్స్ ఆమెలించారు 2 times तेलंगाना बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड and Delhi Nehru Yuva Kendra Active Award आमेलिंचाరు गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड September 4th 2020 one approach with regarding social cause గురించి అనౌన్స్మెంట్ भी with and highest high range book of world record కూడా ఆయిತು and fastest 4 mountains चढ़ो కాబట్టి high range book of world record भी ఆయిತು అయితే तुकाराम ये మొత్తం జర్నీ మా కాई हल्का सा काई वो को नहीं చాలా కష్టపడో ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్ भी 2016 में वो टारगेट डालो माउंट एवरेस्ट जाए కానీ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उन फाइनेंस भी 8 करोड़ कन फर्स्ट आलोचना की కానీ वर्पत కొంత డ్రా పరిపనికి आपने లీడర్స్ రామచంద్రనాథ్ ఐఏఎస్ కానీ సత్యరామ్ సార్ కానీ सावरिया सर వచ్చే ఉన్న हेल्प करता नहीं ओवरऑल గా 25 lakhs गैदर करता नहीं మన हाटो माउंट एवरेस्ट चढ़ने मेरे सर ఈ నానికి స్వాత్ కొంటి తక్కెలపల్లి తండా చదువుకున్నాం చుట్టుపక్కల చదువుకున్నాం గట్లా చదవడం మన గట్లా చదివే పెద్ద ఈచెని अपने बंजारा कम्युनिटी మొత్తం एक बेर ग्रिल कन కూర్చో मैं अपने बंजारा कम्युनिटी नाम काढो छ वर्ल्ड वाइड गा बंजारा बेर ग्रिल कन కూర్చో बेर ग्रिल नाम तम सामने डिस्कवरी ఛానల్ वो मैं ये नम वो बिरुदु दूसरों खचिతంగా
अत्र धैर्यं कति दिटोकुन्ति पैशनेट గా रहता है మన పర్సనల్ గా మనం వెరీ पैशनेट గా చాలా पैशनेट గా रहता है और పట్టుదల पूर्णतः अपना इंपॉसिबल अपन और इमेजिन करा सकते अत्र पट्टुदल रहता है असल मन के दिटोकुंति కాబట్టి చాలా ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ ఫర్ అప్కమింగ్ బంజారా ఆస్పైరింగ్ యంగ్స్టర్స్ మనం కూర్చో చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ అయితే తుకారాం ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్. Thank you, Rambabu. Thank you so much. Very good introduction. One Katrai introduction करतो भी आपने कमत से. Tukaram, please go ahead. Share your journey. Please, Tukaram. Tukaram, please unmute yourself. I have already given you unmute option. Please unmute yourself. Tukaram, kindly unmute. Yeah, please go ahead. Sir, first of all, thank you to Sudhakar sir. एक बंजारा मंची प्लेटफॉर्म क्रिएट इन सुधाकर एंड स्पेशली थैंक्स मारली टैलेंट जो मन के रास आदमी उनसे टैलेंट सरेना समय में Tukaram, you are not audible. Tukaram, yeah. Tukaram disconnect वेगो छ अजी कनेक्ट वेरो छ just 1 minute. Tukaram, some network problem Tukaram है ना अजी rejoin वेरो छ just wait करो. અને હજી સેને એક રિક્વેસ્ટ કઈ કતો એકાંદુણા મધ્યના ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હતી સેશન કટવે जातो हम हजी रिज्यूम कराचा काल कहीं कतो एक टेक्निकल इश्यू थी सेशन कटवेगी और बाद में हम जस्ट 2 मिनट्स एम रिज्यूम की देचा तो सेशन रिज्यूम वच हजी बन अपना जीवनलाल भैया छ सुनील अन्ना आईपीएस ऑफिसर छ एंड बलराम अन्ना भी छ अपने एक यूएसए थी भी एक फूल सिंह नायक के गोर भाई जो बिजनेस में जो टॉप कर मिलो तो भी छ. Tukaram, please join. Tukaram. Yeah, Tukaram, unmute yourself. Yeah, mute kar. Yeah, Tukaram, please. Yeah, go ahead. Tukaram. Tukaram, please go ahead. तो अनम्यूट कर मिलो छु मैं. हेलो तुकाराम तो अनम्यूट कर मिलो छु. You are unmuted.
Yes, sir. Saint Ramram. First of all, Sudhakar sir, and thanks. कसें को तो एक अपन बंजारा वाले सीन एक प्लेटफॉर्म ने लाजन सुधाकर सर मंची एक आलोचना मंची एक क्रिएटिविटी थी अपन सीन सिविल सर्विस वाले थी పెద్ద పెద్ద अपन ऑफिसर्स एग्जांपल जीवन सर गुगलत रवि नायक सर अस मोट आदमी थी इंटरेक्ट वेर अपन कतो अपन इंस्पिरेशन तमार इंस्पिरेशन नी हमसे आंगावाचा उजेक सर मा यात्रा माउंटेन्स सडजेर कारणम भी आपण वाल गवर्नमेंट के रास आदमी मन हेल्प किरेच राम जाधव अन्नान मी थैंक्स केवछु अन स्पेशल गा जीवनलाल नायक कन्ना जीवनलाल सर भी थैंक्स केवनु अन रामचंद्र सर पिरिया नायक सर ताराचंद सर से प्रत्येक आपण मा छजको गवर्नमेंट या आईआरएस आईपीएस आईएएस सेम स्पेशल गा थैंक्स केलरछु तमार इंस्पिरेशन थी मैं आज एक माउंट एवरेस्ट नया एक 5 कॉन्टिनेंट्स 5 हाईएस्ट पीक चढ़ो सर तमार नया सर तम कर्रज एक मंची काम में थी आपण मा छलको गोर बंजारा मा छलको से एक पट्टुदला थी एक आरएस सर उन्नन भी तम चेतुना करनु एक प्लेटफॉर्म कंटिन्यू रेवनु कंटिन्यू रिकॉर्ड ताने भी आपण छलको बंजारा मा जाती कतरा आदमी छको ट्राइबल एरियास और ट्राइबल एरिया उनसे एक मंची अवगाहना लावनु सर अवेयरनेस लावनु सर अवेयरनेस लातानी आपण काय करतो आंग बनाचा आंग जावाचा आपण मा काय टैलेंट है वो टैलेंट तम गुर्तिंचनु सर तम गुर्तिंचनु को तो आपण मा चदको बंजारा वाल से जो एक शक्ति थी एक संकल्प में थी एक निजायती एक आत्मविश्वास थी आंग आवनु आंग आतानी भी एक मंची पोजीशन आवनु को तो कष्टपड़नु सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण में अपन आत्मविश्वास रेणु धैर्य रेणु संकल्प रेणु ये 3 रतो आपण कुणसी भी साधिंचाचा एक नम्मकम मंच सर उजे काय कतो स्पेशल गा मा ये फील्ड इन कसे एंचल दगतो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मा ये माउंटेनियरिंग एंचल दो कारण मन एनसीसी इंडियन आर्मी मन ट्रेन कीदी एनसीसी फील्ड अति मा एक माउंटेनियरिंग फील्ड न आयाछु ए माउंटेनियरिंग या काय कतो सर एवरेस्ट चढ़न में 3 years स्ट्रगल पड़छु गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मन ऑलमोस्ट चक्कर मुंटवी मन निराकరించితో भी आपण मा छजको पेद्दलु रास ऑफिसर्स से उंदूर सहकार थी उंदूर स्पॉन्सरशिप थी मैं एवरेस्ट चढ़छु एवरेस्ट चढ़न भी ओत्ताना थमनुजु एक टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स 5 हाईएस्ट पीक्स चढ़ सर 5 हाईएस्ट पीक्स नेक्स्ट 2 कॉन्टिनेंट्स चढ़नु 2 कॉन्टिनेंट्स चढ़तो मार 7 कंप्लीट इदावच नेक्स्ट तमार शेर सपोर्ट रेवनु सर मार लांटी यूथल आवनुकतो तमार सर एक ऑफिसर्स से एक मोटिवेट करतानी आणि एक मंची प्लेटफॉर्म सर ये प्लेटफॉर्म से सदविनियोगतो उपयोगिंचनु अब नुंसावत एक अन्ना कोच काय कतो आपण मा कोई पेद्दवाళ్ళు చేయకन एक आरएस प्रवीण कुमार छ ओरने आपण कोई చేయకन केरोच कसिन छेचा एग्जांपल अपन जीवनलाल सारन ले लेनु पीरिया नायक सारन ले लेनु सुधाकर सारन ले लेनु अस मन क्या आपण मा छदको आपण अदृष्टंगा भाविंचनु कसें कतो आपण मा एक फर्स्ट टाइम म देखरछु आपण बंजारा मा एक यूनिटी गा करनु कतानी एक मंची आलोचना आयचा सुधाकर सर यूनिटी ఏం పెద్దలు आपण से जीवनलाल सर केला सुनील सर आईपीएस एमआर नायक सर रामचंद्र सर अस आदमी से सपोर्ट करता नहीं आपण मा छदको से टैलेंट आंग काढनु कतो तमार उंदर से सपोर्ट रेवनु सर हम कन्ना भी एक awesome तो तम encourage करनु तम encourage करो तो सर एग्जांपल में ताराचंद सर ऑफिस इन रास हफ्ती जा मेलछु ताराचंद सर भी रास मन encourage कर मेलछ अनु आपण वाले सन तम से मोटिवेट करनु सर तम चाला गोपवाल सर तम तो एक मंची पोजीशन आ मेलछो तमन इंस्पिरेशन लेन हम यूथ से आंग आवनुकन म कोरले र सर हमारा यूथ से आंग आतानी एक मंची पोजीशन में आंग आवचकन मन विश्वास हम सर कसें को तो एक इंस्पिरेशन आईएएस आईपीएस आईआरएस तम कतरा कष्टपड़तो ये स्थायी नावचो तम कतरा डेडिकेशन गा कतरा हार्ड वर्क करतो आज ये स्थायी अच्छो सतम एक इनकम टैक्स ऑफिसर एक कलेक्टर गा ये स्थायी आया को तो तम कतरा डेडिकेशन गा काम की दचो
कतरा डेडिकेशन का हार्ड वर्क कीधो छो तमें हम इंस्पिरेशन गा लेतानी आंग आवाचा सर तमार मोटिवेशन हमें एल्लपुडु रेवणु तमार स्पीचेस हमें एल्लपुडु रेवणु तमार क्लासेस हमें सेन बंजारा जाति ऑल ओवर इंडिया मा तमार एक इंस्पिरेशन हमें लभिंचुनु हमें लभिंचुतो हम चदको मट्टिलो मानिक्यालु तंडामा चदको पल्लेटूरु चदको से आदमी तमार इंस्पिरेशन लेन एक मंची पोजीशन आवाच केतानी मन एक नमकम छ एक मंची प्लेटफॉर्म एक सेन यूजफुल वक्त सर कसेंग तो एक चिन्ना एग्जांपल अब जीवनलाल सर अब इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे जीवनलाल सर रास कतो रास प्रोग्रामिंग से हेल्प कर रहे रास एक मंची सिविल एस्पिरेंट रेणु कतो उन्नन भी सहकारम कर रहे अस मनिके रास बीर नायक सर आना सैदुल सर कुनसे गाइडेंस रेणु कतो अपन कुनसे समय में फोन करते कॉल करते रेस्पॉन्ड देता नहीं एक्सप्लेन कर रहे सहकारम कर रहे थैंक यू सर तमिन सेन स्पेशल थैंक्स केले रचु एक्चुअल गा ये फील्ड नावनु कतो सर मैं रास कष्टपडछु कष्टम कतो एक हार्ड वर्क संकल्पम केल्दो कतरा भी काई वेदे कुनसे भी मरतोई काई परवा चेपणन मैं एक साधिंचन तीर्नु कसन आपण बंजारा मा आपण कसन साधिंचेर छे आपण कसन आंगार छे आपण कसन ई एवरेस्ट कसन आपण कसन म कसन चढ सकनी माती कसन वेनी मा एक चढन निरूपणची कतानी म केल्दो सर फर्स्ट म एवरेस्ट चढुकन केल्दो जना रासादी मन डिस्कस किदे तू एवरेस्ट चढची तार बैकग्राउंड काई छ तार सपोर्ट कोण छ तारलार एक आईएएस ऑफिसर छगे तारलाल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के छगे तू को चढ सके छी इन एवरेस्ट चढनु को तो 25 लाख 30 लाख सोचे तो कोण नमन स्पॉन्सर करछ हमकन रास आदमी मन निरुत्साह परचे तो मी अधैर्य पडो कोंचु 3 इयर्स स्ट्रगल पडो 3 इयर्स स्ट्रगल पडतानी कंटिन्यू फोकस किदो मा टारगेट एंड फोकस किदो कंटिन्यू एवरेस्ट चढनु को तो रांग माउंटेन्स कतरा माउंटेन्स को इंडिया में 5 माउंटेन्स करतानी एवरेस्ट एंड साउथ रूट एति में एवरेस्ट चढन गो जना रास मन रास औरत दलाय 26 डेड बॉडीज इरवार डेड बॉडीज 2019 रासादी मर गए कतो अधैर्य पड़ो कोनी कतो मन कतरा आदमी स्पॉन्सर कर मेलता कतरा आदमी मन नम मेलछ मारी आड़ी बाप नम मेलछ मारा भाई बन नम मेलछ से मन नम लेतानी अतरा आदमी मन सपोर्ट कर रहे मैं साधिंचनु केतन एक संकल्प हमेती मैं एक फील्ड न आया छु सर ये ओजी दी कॉन्टेंट सक्सेसफुल करतानी मैं कंप्लीट करछु અને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ સેન થેન્ક્સ કેલરछु સ્પેશિયલ గా సుధాకర్ సార్ కోటి కోటి ధన్యవాదాలు కేలరు సార్ కసంకతో తమ એક మంచి ప్లాట్‌ఫామ్ కిదో છે మాలాంటి మార్సరిక్ యువత మార్సరిక్ టాలెంట్ से को आदमी भी उन्हों तो गाइडेंस चेंजू थमजा रहे છે उन्हों गाइडेंस रेवणु केतानी तम एक మంచి प्लेटफॉर्म कीधो सर एक तमार सजेशन थी तमार गाइडेंस थी से మంచి एक यूजफुल मजा सीखच केतानी मजा एक మంచి పొజిషన్ అవచకన్ మా నంబర్ सर thank you so much saying thanks thank you Tukaram you have inspired us and I'm like oka nee journey endante it's like unbelievable for our people okay so I wish you to become an IPS officer in future and I hope you will become it we are all with you your dream to become an IPS officer we are with you now we are going to listen to another IPS officer from our Banjara a young IPS officer who is now SP of Ballari district Saidulu Naik Saidulu Adawat he is also Inko Mattilo Manikyam he is also one more slumdog millionaire so I will introduce I request Srinivas Naik Indian Forest Service officer Srinivas Naik ने Saidulu ने introduce करके request करूँ छू Srinivas please take over thank you sir आज जूम मीटिंग है 1 minute Srinivas Naik अपनो बंजारा रो अपनो ज स्टेट रो तेलंगाना रो छे Indian Forest Service officer 2015 बैच रो हमार junior sir he is working as an Indian Forest Service officer in Kerala and he will be one of the keynote speaker in future discussions now go ahead Srinivas आज जूम मीटिंग है भाग ले जगो सारे भाई भैया ने से ने नमस्कार करू छु और राम राम मारा नाम श्रीनिवास गुराज है सो मैं एक रिमोट तंडाजी छु मैं मोट सपना देख सकू छु के मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो छु
एक लोकल उसको अभी तेलुगु मीडियम मराठी मीडियम सो हिंदी मीडियम वो मैच पढ़ो छु इंग्लिश में पढ़ो कोनी माथे पीसा छेजा मोट मोट जाबे सारू ट्राई करू सकु चुका है ये मारे थी वच्चे का ये नहीं कहे इस लाखों सवाल बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स है दूसरे फील्ड हैं उस शेर में आवाज है शेर मनी में है इस शेर एक समाधान है सैदुल नायक अडावत IPS एक तांडे थी है हेलो फुल सिंह सर नेक्स्ट तुम्हारा चलेगी गेरी तंडा तांड मिरियाल కూడా హించే 10 मिनट्स में तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ सर छजको गवर्नमेंट रिसोर्सेस थी वेलफेयर स्कूल में सजोता है पढ़ो से होती थी वो यूज कर लेता नहीं आज मार्क्स ला लेता नहीं उसमें या यूनिवर्सिटी में बीटेक कंप्यूटर साइंस में कीधो से होती थी ले लेता नहीं 4 इयर्स IT जॉब कीधो से ये पढ़े मुना गए और बापिन समाधे को तो है ना हिम्मत छोड़ो को नहीं वो ये 4 इयर्स जॉब की दो वो कंटिन्यू वो पीरियड में सिविल सर्विस प्रिपेयर हो एंड दो बाहर शादी भी की दो इससे स्ट्रगल करता नहीं आज IPS लाओ से 2016 बैच थी एंड कर्नाटक कैडर में है सो ये अचीवमेंट अपन एक बंजारा में कोनी सो across the स्टेट तेलंगाना में अप्रिशिएट कर रहे हैं सो ओरवासु ये वेलफेयर स्कूल चलो पढ़मेलो इसलिए वेलफेयर स्कूल वाला एक इन हाउस जर्नल एवरी मंथ वो तैयार कर रहे थे उस उमा एक सैदुल अडावत IPS से वसु एक 4 पेज डेडिकेट करता नहीं पॉवर्टी टू पावर एक हेडिंग ये थी वो अक्रॉस स्कूल्स से डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो एक कौन है ये वेलफेयर स्कूल से माँ छुचार जो को बुक्स रच गए दो नोटबुक्स वो बुक्स लारे पेजे पर छजो को छुचार से इंस्पायर करे वसु पॉवर्टी रतो पावर आइन जो कौन छेचा तो एक एजुकेशन रतो एक नॉलेज रतो तो कुणस्तोई सक्सेस तो कुणस्तोई अचीव कर सके ची कारण दिखाले वसु और फोटो खालता नहीं से स्कूल से न डिस्ट्रीब्यूट किए थे सो हमारे मुना के स्पीकर्स इससे केस हूँ हमें एजुकेशन नॉलेज यकस वो रत्तो हम कुणस्तोई कर सका चा और वो स्टेटमेंट है एग्जांपल सर सैदुल नायक अडावत IPS सो वो सोशल एक्टिविटीज बहुत एक्टिव है तो एक सर्विस आइजर पच स्कूल से जाता नहीं कॉलेज से जाता नहीं डिफरेंट अपने बंजारा प्लेटफॉर्म में जाता नहीं शेर आई मीन लाखों शेयर से इंस्पायर की से सो आज सा ये तातानी सजे के ने बहुत सारी सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहते लेते एंटरप्रेन्योरशिप एस्पिरेंट रहते ये सभी ने इंस्पायर करे वासु आज ये ताया से एंड आई लास्ट सैदुल अडावत IPS to take over the session. Hi, Sen Ramrao, Saidulo Adawatsu. Sudhakarana, really this is surprise. That too, not government published kidana matra happy was ko kontiko lapna hai. Aba one of the best guy, best friend Srinivas is introducing me is really moved me. Thank you Srinivas. Really, I am so touched. Thank you so much. So coming to the point, I won't take much time. Because there are us busy much, so I could not meet all you before this. Sena Ramra, I'll speak for 15 minutes. So ये 15 minutes मैं कहते थी आये चु काइन किधो चु हम क्यों आए होते थी आते कज़ो के कुछ and then I'll try to cover civil service preparation से आपने वाला कत mistakes करा से कत अपन छोड़ दा चा मध्य preparation से and one interesting topic that Sudhakar Bhaiya has added in this that entrepreneurship, especially upon community ma we have a lot of scope but upon wala upon wo field in kuni jare konti now though a lot of the budding persons are there, so in this way I'll speak. So initially coming to my background, Srinivas has told everyone I am from a very remotest तांडा तो हमारा तांडे ना अब गुड़ा सरियागी एक रोड चाहिए जा अभी ताणु गुड़ा रोड चाहिए जा basically frankly speaking वो तांडे में it's hardly families of 60 families वो तांडे में
and I am the one of the first person to complete 10th class in 2002. So before that वो हम स्कूल में जाना कन तो वो खितारी में क्या ना बने बुढ़ा में क्या को वागों दाट एंड खितारी क्या चालन most of the same तांडे में ईद रहा है. So हम वो तांडे इन चाल तानी तांडे थी गाँव में 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से चालन जा स्कूल में जाना यारो, and then this is a routine till the 5th class. और पास है luckily one of my brother kato moda per beta he told me about the residential school kato gurukula school only for tribal boys. Wo tribal boys also new school aricha Miryalguda ma town, a town called Miryalguda in Nalgonda district hai aricha तू अप्लाई करतो तो एग्जाम लाइक असतो तो ना सीट आवकलतो तार చదువు మొత్తం ఫ్రీగా దాస 10th క్లాస్ వరకు తుకేని హెల్ప్ కా పూంజే అవసరం థైజా అత తోన్ घर కూడా డిస్టర్బెన్స్ కాయ రేని ఆతో సదలో ఒక ఉద్దేశం ఇది అండ్ ఎస్పెషల్లీ విల్ గెట్ గుడ్ ఫుడ్ దేర్. That is the main motive, food and education, shelter, both at free of cost. So I appeared for exam मैं Maharaj Rasana friends could appear way hum same school thi, we cleared exam, we joined. So with joining there pata basically before joining the school the aspirations and high dreams are hum अब residential gurukula school kan ka to वो time in survey la Nagarjun Sagar schools example किए थे से. So हमारे को हम रचका इंगन खेल देते, but because is only for tribal boys वो स्कूल एक नॉन केस प्राइवेट बिल्डिंग का स्टार्ट हुई थी. जैसे अपन ताने में एक घर रच का 4 रूम घर एक में एक किचन एक एक लार एक दी रूम है मुना के हाल नॉन केस और सर घर अनమాట. वो 4 रूम में 60 पीपल एक रूम में 15 आदमी वो यूज्ड टू स्लीप. वो सर वो काइन kan के तो हम प्राइवेट अभी गवर्नमेंट स्कूल फर्स्ट टाइम हमारे तमार वासु once they get kind of infrastructure government sanction out will be moving to another good building infrastructure आके तानी वो एक infrastructure है प्रॉब्लम. और तो पार्ट टीचर्स हमने एक प्रिंसिपल एंड 2 टीचर्स ओनली 2 टीचर्स एक तेलुगु टीचर एंड एक मैथमेटिक्स टीचर्स ओनली 2 टीचर्स उनदे ती स्कूल चलती थी. एंड हमें क्लासरूम नो क्लासरूम्स क्लासरूम बिल्डिंग వచ్చేది కొన్ని एक दी क्लासरूम्स रे टीचर्स है కాబట్టి वो दोइना दी क्लासरूम में केनी. सो एकस क्लासरूम में वो 9 रूम में वो 60 मेंबर्स एक क्लासरूम में बसाडे कुदरेनी కాబట్టి वो यूज्ड टू सिट अंडर ए टैमरिन ट्री तो एक इमली झाड़े हटे हम दास्तानी क्लासरूम कहते पानी पड़क तो नो क्लासरूम है. एंड हाउ डू ये टीचर्स दे यूज्ड टू कम फ्रॉम नलगोंडा टू मिर्यालगुड़ा दे यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन. सो 10 o'clock आते थे हाउ 3:13 दर जाते थे. और पास काय रचा अपने वाले से गौर भाई सुचार तांडे दिया है अपने केवल कौन है तेलुगु फर्स्ट ऑफ ऑल अपने तेलुगु बातें कर रहे एक बिगेस्ट प्रॉब्लम अपन अपना बातें करना कौन तो तेलुगु में वी क्लब आवर बंजारा लैंग्वेज इनटू द तेलुगु दो में भेड़न बातें करते थे. टीचर्स आते कौन थी वो बट टीचर्स आते कौन थी वो रोज को 3 टीचर लगे तो प्रिंसिपल है एक दी टीचर्स वो भलतानी 6 सब्जेक्ट वो 3 जना कहते थे वो गुड़ा कनाई को इरेगुलर का क्लासेस हुई थी. सो दैट्स हाउ हमें गुड़ा वो टाइम में कोई अर्थम कौन थे सर वो हमें गुड़ा दे यूज्ड टू टेल अस सी देयर आर गुड डेज अहेड ऑफ अस ऑल ऑफ अस तानी कहते थे. So we used to believe and अपने गुड़ा मालूम से आया जो कुछ गुड़ा एक कम्युनिटी दिया है से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड शेयर एक ताने में घर जाओ कल तो शेयर एक प्रॉब्लम हाटो कौन सो गवर्नमेंट स्कूल में जानो लाके कत को जानो मोस्ट ऑफ वी आर फ्रॉम फार्मर्स फैमिली अपने सेन मालूम वो विषय. So we know but never bothered about our good school or exiting from that school. So हनु कंप्लीट वेगी थी 10th class दिया 9th class कंप्लीट वेगे and no teachers were came and at the end of the 9th class teachers came government school teachers अब तो हम regular staff came then हमारा status देखता नहीं आ रहा ये 10th pass हो pass इनको कजो को एक रहा but in between हमारे मध्य में basically ये 60 member competition very good था because we all are creamy people अपन district में entrance test तो लगता नहीं आया जो को students का but we all are creamy people and we had little bit idea काइन करना कौन सा दोनों करना तो जैसे कि टाइट कंपटीशन हुई थी हम एक 10-15 मिनट के आउट ऑफ 60 there used to be a very good healthy competition हमसे भड़ना सोए भड़ना खावा एक झाड़े ब्यास ताने में ताने नहीं and दाढ़ी वूज गोड़वा but used to study at least and कुछ aspirations वो गुड़ा रहती थी हमें से ना. So 9th class and the end of the 9th class what the teachers thought is okay 6th 7th 8th 9th even kind cake only so better we'll keep these fellows in summer also at a school to teach advanced course the 10th class rangas ka katane okay year pacha we stayed in school and to my unfortunate and one of the deadliest and very big stroke on my family I lost my father in May 25th kato मैं 9th वेगी 10th next June join होना. So midnight खबर आई मन हमारे काका वाला बला ले गया तांडे ना से लगे से पाले जाता नहीं
और पाचा एगो दी हमार दी बहने my mother I don't have a big land also मन काइन तो सदवण कन रहे and first నుంచి at this point I'll come so सदवण कन रहे वो घर दर के घर काइन को बाप हनु समागो और पाचा सदवण का सदवे छेसा कसन का तो I have to feed my mother has to feed both of three of us and we have very limited land so वो एक प्रॉब्लम रहती थी so anyhow so एक महीना 1.5 महीना लेट वेगी so at the mid of August I joined again back to the school तो 10th class junior school started June 12th start में अपने normal का regular residential school से गुड़ा so I joined mid of August कसन का तो कोई तो सदावण कथा आणि घर बैसन काइन करा सो खेतारी काम करा लेకపోతే मन करंट खेतारी काम गुड़ा చేసా और पाचो 10th कंप्लीट किदे we studied very hard with those limited resources మంచి కాంపిటీషన్ విత్ ఓ కాంపిటీషన్ పచ్చ हम काइन कतो देयर वाज द ट्रेडिशन 10th में आपने 550 एंड अबव मार्क्स आउट ऑफ 60 कन कतो 600 कन कतो द नारायण चैतन्य आपने एक फ्री सीट देते थे so my idea was I should become a great doctor or good engineer after that I want to become an IAS officer so school थी मारी aspirations మన స్కూల్ ఆ రోజున I used to write my name సైదులు నాయక్ IAS కతాని so hanu lagto so that was my dream sen dekhtaani kasan ka to I came from such a background so are atra avakasham cha apne na savdotani apne upar nahi jataani ne ek 10 man kan sahayam nahi karagalto kun katani and ye statement upar mar father kuda ek very big statement always he used to tell me kain ke to mar father di dekh beta sadaro kan ka to de mar brain mast zyada racha so brain can be telvi zyada racha ye telvi can be used in either way एक लाइक రెండు వైపుల కదునుకు కత్తికి పదును అని సో एक जनालन मौसम करेरा एक आज काइन को अपने जनालन हेल्प करेरो सो तू ये काम में आता नहीं तू केनी हानि नहीं करसो काइन प्रॉब्लम से अपने न सॉरी हानि सहायम नहीं करसो केनी प्रॉब्लम से अपने हानि मात्रम केनी कर मत बेटा कता नहीं वो यूज्ड टू टेल मी and तो अवकाशम छ तू आतो सदवेसी से आतो सदवकन कस तो छोड़ मत याई कनाई मध्य छोड़ मत बेटा कता नहीं केव करतो तो कना जाना whenever I used to go to house holidays and जाव कर देना and मन काइन काम कर दे तो कोनी अपन we used to work in field so over pacha 10th वेगी मन because I didn't get 550 marks I konti 10th ma only 527 ko 529 आई थी और pacha again came to the some gully college in Miryalaguda दूसर कति फ्री सीट हताई कोनी होते थी अब येगी परिस्थिति कोन कताणी so there again okay नारायण चैतन्य चैसा मन अब काइन करनो so okay there again I found out some one way kato every problem and every solutions finding out way anamata like positive thing you should see these are the that's why I am telling so or idea kain ati kan kato mana I should prepare for intermediate only I should get good IP marks intermediate marks so out of 1000 if I'll get more than 965 I'll get BITS Pilani is on par with IITs 6 top IITs in the country so that was the idea so वो सदवणो करेक्ट गा सदवणो IPC सदवणो करेक्ट by the 10th class I was a Telugu medium student and anyhow I want to be in English medium कसन का तो हटा इंजीनियरिंग जावणो का तो मन प्रॉब्लम है जावा सवार कुनी they should not anybody should not see on me as a down fellow or something dumb fellow so English medium ಜಾಯಿನ್ ಅವನೋ ಕತಾನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜೊತೆ कोनी ಚಾನಿ ಕನ್ ಕೆತ್ತದೋಯ್ कोनोनो ನಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್ ಅವನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾಣೋ ಕನ್ ಕೆತಾನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ medium ಜಾಯಿನ್ ವೇತಾನಿ I tried first year కొంచెం వారు కష్టపడుతో but I used to sleep a lot మధ్యాహ్న so I didn't get good marks so again there is failure I should get out of 460 I should get minimum 455 kata 960 avano kanaka next 417 so I कोनी 438 आई so अब काहे की ओके चलो ये हाथ छूट गया अपने ना कताने so second year I light ले लो अपना normal का सदो so in second year I got 448 out of 470 and luckily they kata apne positive aspirations and you are, when your man kata manasu and your ideals when they are so pure everybody indirectly or directly or whole universe they're saying in the alchemist when your desires are and your aspirations are so pure whole universe conspires you to help katani kaza ko ek statement as I believe in that sometime so काइन के देते so intermediate एक ही जब second year वो time में ना BITS पिलाने रे case आल रही थी they suddenly they came with a BITS at so अपन आंध्रा वाला से no तम directly कौन किया तो ये 2 वर्ष time दोनों कन के थे कम BITS पिलाने the fellows they came with one idea that will take only fellows who on based on second year marks देखा एक लाख कौन भला नहीं के देखो second year marks उम्प्रज लेला के ताने second year marks उम्प्रज luckily I got good marks 500 is a cut off I got 508
So I got bits pilani mechanical. Again the problem started. Somehow I got seat. Again the problem started. One of the fees bhandana kota the reservations kain reni apne it's like general quota only. Fees bhandana kota we have to pay. There is no guarantee of scholarships. Again the problem. So somebody NRI from my village, he promised me to help. But उनके घर में कहीं को एक नॉन किस प्रॉब्लम को डिस्कशंस आई, आई डिडंट लाइक इट. और पास अगेन द प्रॉब्लम. सो अरे अपने मध्याह्न छोड़ दे कल तो आती थी मैं राजस्थान में बिलानी जावण करन कतो वो रैले चार्जेस ಏನು ಮಾಡಿದೆ कुंगा जे प्रॉब्लम कन. Then luckily I was preparing for MSET. वो कॉलेज इतने प्रिपेयर हुए थे काहीं को एक करना पता नहीं. Luckily I got into Usmania University. Usmania University and I did BE CSE. I computer science I got CSE. And then from campus, I got 2 companies for campus placements. So one company is SNP, that you might be heard. SNP ratings can क्या करा 500 SNP. वो मैं आई एक 4 वर्ष जॉब की दो. So घर में देश financial issue रखा बटी 2 भानेर वाया वेगी and everything got settled. I felt like that small issues. वेगी जेर पास again the idea that I want to be anyhow to be civil servant का जो idea first नुंची बेती अन्माटा. So वेगी जेर पास then I started my preparations for I quit my job after 4 years. I prepared for civil service. First attempt interview go konti. Second attempt I got into civil account service, connect account service, that's a finance ministry ma. Oma third attempt I got into IPS Karnataka ma. Or pas hatal loko exam. Luckily I didn't get IAS, but I am here right now. So ek varas as a ASP, DSP, SDPO ka kaam kido tu. So because of maybe my good work or something, I don't know. Luckily I got a very good district. आप कौन सा कहते Ballari district में SP got from Karnataka में. Ballari district is treated to be one of the prestigious place in Karnataka state. So as a first district, the big assignment I got and very challenging one. So this is my history. Adiyama actual thing आएंगे तो learning points है. See all the financial problem रहेवच्चु अपने hurdles रहता ताने मारे जने घर सदवे एनवायरमेंट रहनी के नहीं सदवे ने घर कोनी एनकरेज करे नहीं मार फाइनेंशियल पोजीशन सोशल स्टेटस देखता नहीं रास मन के आफ्टर इंटरमीडिएट पीपल सजेस्टेड मी गो फॉर टीईटी. बेटा तू टीईटी कर ले टीचर जॉब दिया होता है एक वर्ष तो ना एक 2 वर्ष टीचर जॉब दिया होता आराम से तो घर सेटल जा सको. व्हेन आई अप्लाइड फॉर इंजीनियरिंग एमसेट है पीपल लिटरली स्कोल्ड मी. और पास इंजीनियरिंग सीट आई और पास अगेन आई टोल्ड दैट I should go for private job. The software job उनका तो again तू एक आंडो पता नहीं. इसे these are the negative things है. वो एक रहता अजय काइन को main थी काइन उनका तो अपने ना अपन people हम lacking का तरह से उनका तो अपन students what I observed because observation my strongly कसन के रोज का तो after हम स्कूल में दिरिया जर पचा intermediate थी हम एक start किया alumni association करना में. I joined engineering एक alumni association करता नहीं अपन residential school हम कुछ स्कूल सदवे चुका वो स्कूल में start किए होते थी हम first batch start करता नहीं in 2007 I started it with the first batch when we are doing BE स्टार्ट करता नहीं उन्दाड़े थी हम कंटिन्यूअस गा स्टूडेंट्स है ना काउंसलिंग देर गानी उन्हें गाइड करे रहो गानी आपका तो फाइनेंशियल का छोटा मोटा फाइनेंशियल हेल्प पूरा करे था हम and something now from एक स्कूल थी now we have the gang of more than 2500 candidates आज वो माँ मे बी हमारे गाइडेंस रहेवच्चु लेకపోతే दशक मोटिवेशन रहेवच्चु आज there are lot of hundreds of doctors hundreds of engineers group 1 officers police officers some best medical college का तो जिप मर्गन क्यों करा सका है तो PGMR एक ना अपन सुधाकर भैया has he must be knowing he is a doctor from Usmania University. So होते थी PG करमेले हमारे बैचमेट्स जूनियर्स it's really very proud moment है हम स्कूल जाको सदवे स्कूल रहे तो कहाँ रहेवच्चु why it happened का तो एक one is a strong desire तो ఖచ్చితంగా आपण ऊपर आवणो कजो करेवणो આપણે માં કાઈ રચે તાણેમાં કાઈ રેની તાણેમાં થુચાર જાવે प्रॉपर गा सदवेनी आपण काई करा कन तो गद्दीर काम कसा काई भैंसार काम कसा तांडेमा भैंसा काई करे छे लाडती आपण लाडती कोण कुछ करता मुलू तो हनु चालू करा ही डजंट यूज योर ब्रेन वो ब्रेन यूज करेन ती भैंसा मैं डोंट थिंक अदर वे आई विल बी फ्रैंक सम मेनी टाइम. सो काई करे छे दे डोंट यूज ब्रेन આપણે વાળ கூட કાઈ કો સદાવણો માં ડિગ્રી સદરો છું પાસે જાઉં કે પાસે જાઉં इंटरमीडिएट सदरो છું पासे जाऊं के पासे जाऊं છું फर्स्ट क्लास जाऊं तो फर्स्ट क्लास जाऊं पास वे जर पचे अब अपन रियली गो एंड सी इन तांडा सम अपन स्टूडेंट्स काई रचा दे डोंट स्पीक प्रॉपर्ली उन्हें जनरल नॉलेज मालवेंतिदी सम पीपल रियली गुड एट सम लोकल नॉलेज बट उन्हें बाहर आता काई करने को धैर्य मत रहनी. हैव सीन मेनी thousands of students अपने वाले ने स्पेशली पीजी वेजा देर पचा एक नॉन किस लेटर लगे रहे हैं अपने वाले ने डोंट टेक इन अदरवाइज ये लैक कतवस कन तो एक अपने एक एनवायरनमेंट छे ताणे मा एज ए कॉम्पिटिशन अपने रेनी
And Ajay Kainko, we don't have much aspirations. अपन ऊपर जान काइन करना हो. Present scenario कौन सा है, competitive world कौन सा है, अपन काइन करना को जो को अपन उन देखा नहीं करना है तो. Intermediate पास है के, degree जाओ, PG करो, university या seat कमाए और पास okay. Out of BASO for government exams है. So these are the trends है. So please I request everybody. So ये काइन सा करना तो you aspire for big thing. Definitely अब ये टाइम में हमको तो अब मसे केला है मन कोनी हेल्प की देखो नहीं काइन की देखो नहीं कहता अब उसे lot of things will be there everywhere, but अब ये टाइम में ना so everywhere now social media is there, technology is there, everywhere the people help you in many ways. अपने हेल्प करे वाला राजना से सर मैं जेन्युइन का हेल्प करो मैं जेन्युइन का सदर हो तो अब मुनागान हेल्प करे वाला अपने राजना से. सो प्लीज मेक यूज ऑफ इट एंड डोंट थिंक दैट हमारे एक प्रॉब्लम है सर मैं घर में प्रॉब्लम से कहता नहीं. एंड ये प्रॉब्लम एक जो एक फीलिंग है वाला आज अपने वाला काइन करा एक डिग्री ऐसा कन गलता हो उनको गवर्नमेंट ऑफिस जावा प्राइवेट ऑफिस जाता नहीं सारे एक नान की जॉब दरा दो नान की जॉब दरा दो वो कौन को अपन फर्क करता अपन तांडे रोज नायक रहा कौन को एक है छोटा को मोटा को नायक रहा वो काइन करे अरे मन एक ऑफिसर मालूम से वो मालूम से तब जॉब दरा दो चुका ताणी आपने तीन तीस 1 लाख 2 लाख खाला वो जॉब है नहीं एंड एक हफ्ता तू नान की जॉब जाने जा वाया करला तुचारे जा उंदर काइन परिस्थिति वो काइन का इटू चावू अटू बतकव రెండిటి మధ్యలో కొట్టుమిటాడుతూ ఉండాలి ఈ పరిస్థితి అప్పుడు మా మేజర్ గా సార్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి యు థింక్ ఇన్ బిగ్ వే కేవకర సాయంతో ఇఫ్ యూ ఆకాశాన్ని గురి చేస్తే కనీసం మధ్యలో దాకైనా పోతావు అని చెప్పి చెట్టు కొమ్మకు గురి చేస్తే కనీసం ఇక్కడైనా వరకైనా వెళ్తాం అనేది. సో థింక్ బిగ్ కాయం ప్రాబ్లం ఈ టైం ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్. సో బిగ్ థింక్ బిగ్ and be with a burning desire kan ras kain to apne you might be seeing how the kind of kudre sorry horses kasan run wacha lar kun one correct ga pain dasko one kun correct ga pain dasko wo pain ne pakadtani ye pain nunchi ma escape hona ko uddesham ati bar tansa sir. And those horses win the race. Who runs faster kani who runs bears more energy or more torture wo kara sir. So I request everybody don't think that man problems है काइन अब तू अब राजना नान जॉब करन खा रहे से उधर केरी संसारम काइन सुखम इच काइन पुंसो तो केन जा don't think otherwise please कुनसी केरी प्रॉब्लम एक होती they don't come out of so मगुड़ा मन काइन को मनगुड़ा ये बीटे का एक प्रॉब्लम हनो ये के apprehension रहता रे मार फैमिली रास प्रॉब्लम वेगी थी हनोन के ना रासना एक सीनियर्स भाई वेरी भाई वो काइन कहते थे सर एक तू 2 वर्ष काम कर रहा तार फैमिली कंप्लीट का चेंज जा सके यार वे नहीं a little bit like respect a little bit relief house kind of, but you won't be changing your complete picture sa tane ma झोपड़ी ma सजो को बंगला भाले तानी कार्य में काइन चाले से नहीं. At most you can build एक रेकर घर को बंगला भांदे चदरा. So these are the practical things अपने ना use कराने. So please वो एक है. So this is the one thing. And next important thing is coming to the civil services. ये civil service preparation सैदिलु sorry to interrupt you सैदिलु सिविल सर्विस स्किप करन एंटरप्रेन्योरशिप पर जो सिविल सर्विस अजी एक अपने टॉपिक છે राइट. ओके थैंक यू अना या that will be good. टाइम अपने अजी 3 स्पीकर છે yeah so how long I left Anna inga 5 minutes you 5 minutes and 5 minutes you can take questions one and not two questions yeah thank you so और एक अजय एक बात अब एंटरप्रेन्योरशिप is a very latest and trendy topic है basically. So if you see all the trend आपने देखा कल तो start entrepreneurship kan kata the latest term that we use is startups. ये startups से मां काइन चल रहे हैं तो if you see worldwide there is a say ras problems startups kan kata you coming up from the scratch एक कंपनी घालनो एक घर बांधनो एक ई करनो अपने घर बांधा तुझ अपने वाला कैसे काइन तो काइन कष्ट देखनो kan kata एक पेल्ली करनो करान तो देख ला घर बांधनो तो देख कदाने. So the same way starting an establishment है little bit है again it is a difficult है. अब अपने में again ये trend कौन सा kan kata in all over the world maximum 2% is a success percentage. Anywhere you can take I can Sudhakar Anna will support me in this way. All over world only 2% startups will be successful. Normally India anguda with problems and lot of government schemes are there to support us basically. అయితే ఈ ట్రెండ్ జనరల్ గా కాయిన్స్ కూడా अपने में lot of government अपने ना scopes है गवर्नमेंट लैंड पार्क काइंस अपने ये पार्क सॉरी SEZs ಆಗಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ રહેవచ్చు કુંસ રહેતા આ સ્કીમ્સ લોન વાઇઝ વિથઆઉટ એની કોલેટરલ સિક્યુરિટીઝ લોન રહેవచ్చు એ સે કું મેરેસ કન તો
The so far trend is actually malam chako that's a little bit politicians are a little bit bigger politicians are bureaucrats, so they used to get all those work the relatives are they used to get, and most of this came all these are for conventional things kata okay land lela cha kain ko ek building bhanda cha like the it care bhati bhanda cha like the kain ko ek godown bhanda cha ui ek ab loan lela cha ab ek last 2 years nunchi ab ek CM entrepreneurship program kan chal rahe cha apne rehte wo program hai kuda that I have seen the people most of the people some 40-50 people they went only for the food sector, food that too restaurants. See, they are very other sectors also there. I don't say that this is not bad, but there are other sectors also there. A lot of scopes a good world idea for example I'll tell you अपने ना कुणी बिग बास्केट का नाम सामने आना था अब naukri.com नाम सामने आना और अदर सोर्सेस कुछ सको और आप देख लेटेस्ट का जोमेटो का स्विगी का देख रहे हो तो ये they started when they started people told them that they are bullish bullshit ideas and foolish ideas का तानी but now they are the billionaires companies most rated companies in the world अब एक recent का last year I was reading a paper the NIT Warangal students वो काइन के देखा ना तो collection of vegetables this is a startup they got very good revenue and on their kind of valuations it went to the 2 crores and they got funding from very good venture capitalist wo kain ka to collecting the vegetables supplying to the restaurants dabas government dabas gaani mot restaurants gaani normally kain karache restaurant individual ga dani market jaan le len diriya and होती थी एक दही दाढ़ में यूज करा तो करे लाख में तो वो वेस्ट जावे so to avoid the reduce the kind of we wastage and to reduce their costage ये kind of they only form some group and they try to get from the farmers directly and they try to whenever they required they try to deal even the same area पर अपने एक सोबन बाबू को ताने एक बिया he is also from Usmania University he also got little success in the Hyderabad 4 AM shops का तान काटता नहीं so these are the some innovative practices अब आप ताने में देख लो आप मोट ताने में से अपन ताने वाला काइन करा से every week they'll go to Santa they'll buy something and they'll come back a lot of things we don't lot of things don't available in Tanda se so when you government jobs ka to ek options ko nahi you think in such a way that ab ek term ka social entrepreneurship that's going to be very huge success ka that social entrepreneurship is wo kain ka to it serves needs of all the local level people so even geo markets are it's wo kuda unde room wo concept room so apan kain kara hoche basic thing that you think at local level tamar thane ma kain problems hai kain hai basically wo think karo you come up with a small solution that will give you a small they may be revenue may be very small people may scold you kain ra tu kura khale asro ka thane vasu se kain gaadi mala tani tu halu chen kevo but it doesn't matter so these are the thing and our example ko ek Hyderabad ma apan photography kan dekho raha photography they have the own photograph shops raha kani apne ek channel ko to sudden ga Hyderabad ma ek photographer kat sa apne malam nahi so ek one of my best friend he did social events ka ek site hai नानी की साइट ओपन करता नहीं ये फोटोग्राफर्स इवेंट मैनेजर से वो साइट पर लाता नहीं कुनी अपने चाणो कन तो और पर देख ले उस अपन नाउ दैट फेलो मोर देन 4 or 5 crores so just think about your employment okay you just think about your employment at local level don't go with are apne kai vacha company start hoto this is also a company yaar this is also a company when Dhirubhai Ambani also started with a small thread so ek hide rakalo so this is the only thing that I'll say and be good with everyone can sahaya karo and dream big and finally I'll say the more ek saying raja this saying always I believe the more you go up the more beauty you see katani I don't know who is the author he said it the more you go up the more beauty you see wo ek and aje ke Lionel Messi ka to same malam the great football player wo kacha kain kacha to become a overnight star he struggled for 14 years day by day night by night सवार आज 4 घंटा उठ रहा तो सवार 3:15 उठाओ सांधे 10 घंटा सो रहा तो 11 घंटा सोवा so day by day he has increased his span of hard work so he to become a overnight star he struggled for 11 years in some 300 days kind of quarter you just please watch it so एक दाड़े में कोई स्टार भी नहीं अपने वाली temporary solutions don't think in way dream big and go for it thank you everyone thank you Sudhakar bhaiya thank you Saidulu and thank you Srinivas my dear friends so Srinivas bhaiya and Saidulu thank you so much tamar katrai time do to bhi tamne purve ni lokon share karena but we will come up with many sessions like this is the beginning and in the beginning we wanted to showcase our community achievers
There are Yes, many yeah. achievers, but still we have many people to show. So we will go to next speaker because Jeevan Bhaiya is there and Sunil Anna is there, and Oh, great. so I will go to next speaker. I request Mr. Abhinav. 1 minute. I'm just kidding. Lalu Lakawat Bhaiya to introduce. Phul Singh Bhaiya. Phul Singh આપણો એક યુએસએન એન્ટરપ્રેન્યોર છે. આપણે 10 minutes time દે. Next આપણે સુનિલ ભૈયાના જીવન ભૈયાનો right? Okay. Thank you, Sudhakar. This is Lalu Lakawat. I am Managing Director of Abhinav Cold Storage. And recently, I have opened import-export company also. And then I have a couple of other businesses. Almost 20 years experience in software. I quit my job and emerged as an entrepreneur. I can say in Telangana, I am one of the entrepreneur who struggled a lot with the bankers and to establish this cold storage unit. And then my customers are ITC and Coromandel. So this is about briefly about myself. And I studied IISc Bangalore. So just I would like to introduce Mr. Phul Singh, who is established one software company in USA. Just Mr. Phul Singh is studied 3rd standard to 7th standard in Nizamabad BC Welfare School, and then 8th to 10th standard in AP Residential School in Pochampad, Nizamabad district. Then he scored state level 9th ranker in SSC. So later he taken APRJC exams, and then almost everybody's dream was to join in Nagarjun Sagar or Kodinganahalli. He had taken in Nagarjun Sagar in MPC stream. Then he got very good marks in MSET. He joined in Usmania University campus. He completed his engineering from university campus. Then he decided to go to land of opportunities to America. So in year 2000, he moved to America as a software engineer. Almost 10 years, he worked in a couple of other companies as a software engineer. Then at the time of working, he is having good thought and passionate about the entrepreneur. So what he decided, so let me start my own company. So with the help of other people and his spouse, he started his own company called Cloud Quest LLP. Then this company is doing very good services to startups like human resource management planning and attendance planning and payroll planning and other couple of other activities in addition to the software development activities. Recently, they got very good award from the General Electric company also. They also appreciated these people, and these people will do outsourcing to other companies, because all small companies may not offer the employees for a payroll. These people will support a lot, and then these people will deploy their employees into other startups. So Mr. Phul Singh is a managing director to this Cloud Quest, and then he is also actively participant in many social service activities in NRI Gorbhais associations. So he is well known to everyone, those who are settled in America. He support a lot to this poor people, as well as in India also. He is supporting a lot, and who can say he is one of the role model who moved from Tanda level to America. So just let us listen his views about this give back to society. Just I am handing over to Sudhakar. So you please ask Mr. Phul Singh to deliver his speech. Yeah. Thank you, Lalu Bhaiya. Thank you so much. Phul Singh Bhaiya, you can start. Thank you, Abhinav, for kind words, and thank you, Dr. Sudhakar Naik, for the opportunity to present myself at this forum today. I was listening to many of the speakers, very, very motivational and encouraging from where we have been and where we are today. It's really scintillating experience for me today sitting in USA and listening to the people who came from the same background. Even though we are from different villages, different mandal, different districts, struggle is same. The path may be different, but seeing the success today, I can really feel that we can do much, much
bigger things in coming days. So I don't want to spend a lot of time on where I've been and what I've been doing in India, but I came to USA in year 2000 as a software employee, obviously. Started working, and in that process, I was helping my employer to hire more people apart from my job. So from India, I hired about 400 plus people from my colleagues here and there, whoever I know, bring them here. So with that, it's automatically became natural that I work as well as start my own staffing company. I started a staffing provider first to outsource to other companies. And in the process, as we were saying, we look at the problems at the industries and what is the common solution to that, right? So started developing small software for that. And in year 2012 onwards, that solution generated more revenue than what I was doing with the staffing. So then I started focusing on more software development and selling that services than staffing side. Right. So unique experiences here and there. In USA, the productivity is like with the usage of technology, we can do so much things. We have unlimited potential and unlimited opportunities to excel with the usage of productive tools. Right? In India, I cannot imagine how a company runs, but here one person can run a $20 million company per year single-handedly. That's how the productivity is here. So in India, I mean, there are all of you are in India. Usage of technology is very critical in whatever we do to achieve more, because everybody has the same 24-hour window in a given day. So we need to use this productive tool to do more, right? So that's one thing I can pass on. Other than that, from the entrepreneurship, here in USA, you know how the immigration, all that, bringing people, that is not possible nowadays. But just think like Mr. Saidulu IPS sir was saying earlier, you need to think, even though it is very small idea, the success will be if you can multiply that small revenue stream. Even though you can make 1 rupee out of one transaction, what if you make 1,000 transactions per hour? That itself 1,000 rupees coming in your account, right? So you need to think small, but the solution should be a global. And these technology platforms nowadays creating that opportunity. There are big opportunities from technology point of view where our unemployed youth can pursue in this angle. I understand, yeah, there are good lucrative government jobs, but how many of all the aspirants can get that? There is a limit, there is a cap. I see from the statistics point of view, there is like 6% total employment in India, very good level job, right? So for every 100 person who is trying to go there, only 6 people will go. So we know that you will fall into 94% category, right? But creating oneself, achieving that success oneself, living with one's own opportunity is much possible, right? So from the perspective of IT itself, somebody can create an app. Somebody is good at writing books. You can e-publish it, put it on Amazon Kindle, make it 10 rupees for it, but you multiply the transaction. You make a lot of money out of it, right? Or e-commerce. There are goods and services. In Amazon is #1 company in the world for selling goods and services. But who are the sellers there? They are very, very small business seller, a carpenter, a painter, an artist. They create their stuff, they put it on that, and consumer like you and me go and buy the stuff, right? So the individuals can come up with those small ideas and start putting on those social e-commerce sites like Amazon or whatever corresponding e-commerce platforms in India. Okay. Online tutoring, that is very lucrative field nowadays.
Even I use online tutoring for my kids from India. पुलसिंग भी स्मॉल इंटरप्शन तम थोड़ा गवर्नमेंट भी बातें करो लोगों अपन लोगों थोड़ा जस्ट थैंक यू Sorry. थैंक यू काय तो अत्र दाडे ते अलवाट वेतानी थोड़ा थोड़ा आपण गवर्नमेंट जसे बातें का जो फ्लो आए नहीं ज्यादा पण ट्राई करू छु. Please interrupt me if there is I am crossing my time limit. Okay. So मुझे दूसरा आइडियाज कुरस के तो सोशल मीडिया कंसल्टेंट आजकल आपण सजको हाई लेवल पोजीशन और बिजनेसेस यू वांट योर सोशल प्रेजेंस बट यू नीड टू बी वेरी इफेक्टिव गा सोशल मीडिया में कंटेंट मैनेज करना वो सर भी एक प्रोफेशनल जॉब रहे सर. ग्राफिक्स डिजाइन आपण ने टैलेंट वी सेपरेट टैलेंट you can create your work तो तुम्हारा ग्राफिक्स को जो काम करता है वो डिजाइन से you can publish on online and there is एक साइट है upwork .com वो चाहता है तुम देखे सारे कौन किन ग्राफिक्स वर्क से रच के तान एक हैदराबाद में मन मालूम से जो कुछ he makes around 3 to 4 lakhs per month part time on that skill. So अपन mind and open करनो. These are traditional channels, government jobs or something else. But this technology is bringing lot of opportunities अपने. पेना कहीं कहते थे कि इंडस्ट्री स्टार्ट करना का तो ना धनम रहनो, लैंड रहनो, लेबर रहनो, मशीनरी रहनो. अब वो को नहीं. अब एक ब्रेन तो दे. तू कति बेचता नहीं कति काम करे सारो. बिजनेस सारो शुरू करे सारो. That is the advantage of technology आजकल. So प्राइवेट इंडस्ट्री भी दिखता तुम्हें कुराचा हैदराबाद में प्राइवेट इंडस्ट्री में काम की दो गवर्नमेंट जॉब शुरू की दो बिगिनिंग में वन छोड़ता है प्राइवेट एंजॉय की दो सॉफ्टवेयर वो आज चरच के तानी इन टोटल आउट ऑफ 200 एक हम दी आदमी तेलंगाना वाले थे एवरीबडी को फिर होम आज फिर देखा तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द intricacies of politics and other favorism works, how they work. But a group of people, group of section, they was on one hire kare. Right? So private में भी access कुराज का तो अंत easy का रहे नहीं. Unless you are cream of the crop, you won't easily get into the private industry. So there are challenges. There is a less opportunities government. There is a less opportunity private. That means you have to be more innovative. अपन क्रिएटिव आइडिया लेता है अपन ये टेक्नोलॉजी यूज करता है अपन जीवित अपन को आगे ले जाओ एंड दैट इज पॉसिबल. फॉर एग्जांपल यूएसए में हमें काय नहीं हम जस्ट केम विथ टू सूटकेसेस बट वी स्टार्टेड मेड आवर ओन लाइफ हियर एंड सिमिलरली मेनी अदर फोक्स आल्सो. सो टेक्नोलॉजी में एक मेसेज क्या तो टेक्नोलॉजी यूज है इंडस्ट्री क्रिएट करे सर. If not one person, you can start in groups and you need to look at how the trend is, where the industry is going, right? Industry technology changes को आ रहे हैं. वो analyze करता है, prepare होता है, guidance लेता है, आंग जाए सरो. Yes. So there are many things we can keep on talking from the entrepreneurship and how to be successful. I don't want to take much time. Just I wanted to share the few ideas. With that तेलुगु में एक रच क्या आपने क्या तो वो संगठित शक्ति रहना. आज का आप ये प्रोग्राम देखते हैं. I am so excited that very brilliant minds, people from different walks of life all are here today. If you can take this to next level to raise the common awareness among community about doing good, doing the hard work and raising their quality of life. And that's how we can give back to the community from where we have come. So I can conclude here. Thank you, Dr. Sudhakar Naik again, and the other members for the opportunity. We can open for question and answers. Yeah. एक भी क्वेश्चंस लाचा and बाद में अपनो बलराम अन्ना अभी अजी जैन हुए कौन थी. We will go for Sunil अन्ना. One minute. I'm just unmuting. Raised hands. Googlot Mahinder, please ask one question. This is only one question we will be allowed to ask.
Please ask one question. It should be the point. Guglot Mahinder, please. Yeah. Guglot Mahinder, please go ahead. तो अनम्यूट कर लिरो छु, तू अनम्यूट करन तू जो आंगो. सर सेन राम मैं गुगलोत महेश हूँ, मैं पीएचडी स्कॉलर टूरिज्म है, मैं ट्राइबल टूरिज्म पर काम कर रहा हूँ. वो ट्राइबल टूरिज्म है अपन कल्चर या सुफरो तो मटाणु ने जना अपन कल्चर कति को एक जगह रिमोट एरिया में बंचरी से. सो मने एक ताट एंटरप्रेन्योरशिप आई जना पूछरो छु मैं, मने एक ताट काई छके तो अपन एक 10 जणी अपन लेडीज थी, अपन ड्रेस सीडायर एक स्टार्टअप स्टार्ट करे कल तो अपन जो प्रपंच में वर्ल्ड वाइड गा सजेने सेने फ्लिपकार्ट पर अमेजॉन पर ये ड्रेस ने बेचने करे आसु कदा तो काई के तो कलर अपन ఈ కల్చర్ కదన బంజాసే अपन డ్రెస్సెస్ అయితే अपन यूनिक ఐడియా కాई ఈ సే वो బంజాసే కాబట్టి ఈయన స్టార్ట్అప్ కరుచుకిరు सर కానీ ओन स्टार्टअप करनी కొంత ఈ अमाउंट भी ही सर तम 10 से हेल्प करो कल तो से ऑफिसर से सो सर अपन कल्चर सारी प्रपंच में अंदाजू ओन एक 10 के 15 आदमी थी स्टार्ट करा महोबाद से हमारा डिस्ट्रिक्ट ये पर आलोचिंचो सर. So are you asking question to the general group or somebody? I'm asking general group sir. Whoever कहता केनी इंटरेस्ट है तो वही तो स्टार्ट कर ले आसु, नहीं वो तो मन ये करो तो मैं वो ये ना आंग ले जाऊँ चु अपन ड्रेस है ना कल्चर है बंचाड़ा चा कति कति एक रिमोट एरिया में ड्रेस अधिकारी से लारे छेनी अपन से प्यार सका नहीं दाढ़ी प्यार सका नहीं पण अपना पिंडी पेरेंट आले ने प्यारा तो ही दिखाओ से ये फ्यूचर जनरेशन है ना रिजर्वेशन करना अवकाशम सकन करो छु. सो ये कुणी इनिशिएटिव लेन मन दसे सपोर्ट करो गल तो स्टार्टअप एंड स्टार्ट करा ये पिसा परंगा कन जारा कोनी में ये कहीं आर्न करनो कन कहीं चिल्ल पण कल्चर बचानो कन से कसम के तो ट्राइबल से पर किदो कावटी ये पर कुणी कहीं हेल्प करा को तो मांग जाऊं सर ये मार माइंड से जोनो ताट को. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. I can respond to that question with like 30 seconds of my experience. Last year I was in India, Hyderabad या रूम है. ये अपन गोरे ड्रेस लेना को ना हैदराबाद एक दाड़ सारी फरो में. कैसे ना कहता हम अमेरिका में 30 बोरा रहता आजकल. से न 30 यार कपड़ा रहनो कहता नहीं. सॉरी ना यारी बाई लोगन से ना. मले को नहीं कपड़ा मन. एक अमीरपेटा में एक गोर बाई मलो और बाई भी खर्च करता तो होता है. पर अंदर डे they were so in demand. अंदर डे टाइम चली. हमें कपड़ा लेना. तो पूर्वी कजन एरिया में सर पूर्वी कजन एरिया में तैयार कर कनी अत्र इंटरनेशनल लेवल अंदाजू छेंची ओन 10 मॉडिफाई करन अपन काम करे वाली मळे छे अपने तक्वा में आजुन काई ज्यादा कास्ट में तो काचे मंथली 5000 to 10000 दतोय लेडीज वर्क करे छे एक 10 आदमी 15 आदमी ले लेन कराय तो अपन प्रपंच में अपन ड्रेस ने अंदाज जोनो राचा ई చాలా చిన్న అమౌంట్ तमर रेंज आन देख रो तो हम एक स्कॉलर కాబట్టి अत्र भरिंचन इनिशिएटिव लेन जरा प्रॉब्लम इज So I can sponsor, you come up with the plan and take my detail from Dr. Sudhakar Naik and privately send me email. I can sponsor your project. Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. Kachitanga ayana angale jama, sir. Okay. Thank you. Once again, thank you. Thank you for all. Yeah, thank you. Hello? 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 Audible, sir. Yes, You are audible. Yeah, I'm audible, right? My dear Pool Singh is incidentally my classmate also. He was my classmate in +2 and I mean, thereafter he was my colleague also for some time before going to US. Yes, hi Jayanthi. Hi, Pool. Pool, actually, I mean, you have taken right subject and I mean, you have guided the people towards this, what they should be taking, I mean, in technology. I mean, they should look for good opportunities in technology and all that. I request you to, I mean, ponder a little upon, capital intensive industry is something which Banjaras can seldom take. So you have given a good example of some technological this thing, but then even there we need some good capital. So for Banjara intellectuals to start any business, the biggest impediment has been capital. Jero sumatto na kai request kar chukan getiken ka to
जो कमती पीसा में आजो अपनो नॉलेज इम्प्लीमेंट करूं and केतिकन कतो we are looking up आमें ना तुकाय कतो future तार स्टेट में USA में दोनों भी वे सके चाहिए अतरा कैपेसिटी चाहतो ना पण आता काय कन केतिकन कत आता छजे जो सिंपल I mean intellectuals but with less capital वाले ना वो capital को raise करनो otherwise low capital में को करनो कन तो ये दी point से जरा I mean please throw some light on that. Thank you, Jeevan, for that question. But you are local, so Jeevan, Tam, and other officers, you are more aware of what opportunities government is rendering to these people. So I'm not the right person to answer on that. But how I can say is, if you have a good idea, anybody has a good idea and good plan, we can sell that idea. We can raise the revenue from US. Okay. Thing is, we need to have that business plan. Okay. So if you get with someone gets with good business plan, definitely we can go and meet the millionaires and billionaires here. Amazing, amazing. That's so nice of you. Thank you. SK Prasad Bhaiya, please ask question. This is last question we will be taking. Mangal Chowhan Bhaiya which question पूछ चुके ना, but we'll see because next speaker अभी platform में प्राय कोणती. Yeah, SK Prasad Bhaiya, please go ahead. तुम्हार साउंड आ रही कौन थी SK Prasad Bhaiya? आरो कौन थी तुम्हारा आवाज आ रही कौन थी? Please go ahead. तुम्हारा साउंड आ रही कौन थी SK Prasad Bhaiya? Hello, hello, Viran. Yeah, Viran. शायद ये SK Prasad Bhaiya का प्रॉब्लम है. We will go to next this this thing. मैं वन unmute करो छु तो भी अजी mute में दारी है. Next Saidulu and Mangal Chowhan Bhaiya, please ask. Saidulu नाम पड़ी है. Yeah. Saidulu, please go ahead with your question. Jai Sevalal. Hi Anna. It's not a question, it's just a small information. Yeah. The person recently, the PhD scholar, I think Google Shankar or someone, asked regarding this e-commerce and startup on the dress and culture, cultural dresses gurinchi. I found out one thing, Mr. Shankar. There is one company called Smire, a mining company in Ballari. Who Sandur Taluka Katan say Ballari ma, what they are promoting is handlooms, especially handlooms. Originally made not to some power looms or some there. Hatheti Karatani upon Tandema ladies Seti Hatheti Karatani, the worldwide they are supplying it. And I didn't visit it, but I heard that. So if you want, I can arrange a visit to you here. Tam Atatanin study Karavachu, how they are doing, and they are worldwide they are recognized. That is a question, sir. That is the information. Thank you, Anna. Thank you. Jai Sevalal. Yeah, push me. Yeah. Yeah, your question, you can go ahead. Yeah. Full sim Jai Sevalal. Jai Sevalal. हाँ.
खूब आछो आनंद हुयो तमने देखन ताणी यूएसए में तम आता गव्हर्नमेंट भी जॉब की देते प्राइवेट जॉब भी की दे वो तो जान भी जॉब की दे आणि अब बिझनेस कर रहे तो मनी विचारायचं की बिझनेस आहे मग ओतेर बिझनेस तो इजीच तम केला गे तरी पण काही डिफरन्स वाटतं कारण इंडिया मध्ये जर आंग ग्रोथ करेल भी हेलो आर यू लिसनिंग yes audible हेलो yes. audible you go ahead go ahead sir you go ahead with your question तो हम सजेस्ट कर हाँ नाही उच विचारायचं म्हणा की यूएसए में बिझनेस करणं सोपाचं फास्ट ग्रोइंगचं तरी सुद्धा इंडिया में काही सजेस्ट करियो कारण तम इंडिया में जॉब भी कर मिळतो गव्हर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी की देतो आणि यूएसए भी जॉब कर देतो आणि बिझनेस भी की देतो धन्यवाद सर थँक यू सर Thank you for that question. So, in different culture, different bureaucratic process, there are two things. USM everything goes by law, and the process is also bureaucratic process is very seamless. I can open a company in 1 hour with all the formalities completed. In 1 hour, I can get income tax number, I can get company registration, I can file with the state unemployment insurance, everything in like 1 hour. Whereas in India, because I wanted to start my own company in Hyderabad, it took months and still I did not have a clarity. So I gave it to some consultant to go through the process. So that is the one key difference, like it is not seamless. We say that you go to this website and do it, nothing works. It is my experience. So whoever is responsible for handling that job, they have to make sure that it works and it is as simple as much as possible. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Full Singh Bhaiya. मैं तमने ने कहीं को तो लास्ट मिनट में कांटेक्ट कीधो छू अजय को अपना गौर भाई अजय को सकरू नायक भैया केन भी छे कोई भी घणो सर्विस करो छे अपना देश में तो अपन लोग गुरु वास्ते घणो ई करो छे उनन भी नेक्स्ट टाइम अपन प्लेटफॉर्म पर लामा छा मैं तमने कसेन को तो अपन लोगों में एक सोच छे कहीं को तो अपन फॉरेन ने जाणू इंडिया में रहणू अन जो भी नानकी नानकी जिबला सेदुल कोजू नानकी कर लेने इधर एवडी बतक भी ना एवडी चावी ना रजू तो एक मोट सोच करणो को तमने हम ये प्लेटफॉर्म पर लाया छा ढगलाई क्वेश्चंस तमने पूछवा वास्ते लोग ढगलाई छे पण अपने कन टाइम कम छे आपनो सुनील भैया जॉइन वेगो छे सुनील अन्ना आईपीएस जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आंध्र प्रदेश में काम करो छे तो सुनील भैया ने इंट्रोड्यूस करके अपनो देवी सिंह इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर देवी सिंह ने रिक्वेस्ट करू छु देवी सिंह मतोन देवीलाल मतोन अनम्यूट करना को छु प्लीज गो अहेड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ सुनील अन्ना Devilal, I have unmuted you. Please unmute yourself and go ahead with introduction of Sunil, sir. Devilal ji, Devilal IAS, Indian Economic Service Officer. Devilal, Devilal bhaiya. Don't unmute. Yeah. Please go ahead. Yeah. Attach the voice, Mar voice clear, sir. Yeah. Clear. Yeah. Bhaiya sen Ramram, Jai Sevalal. Hello. Yeah. You are audible. Go ahead. हाँ भैया एक निमिष Please go ahead. भैया एक निमिष हेलो या audible. क्लियर से भैया या ठीक है आटा रही भैया हाँ देवीलाल छु मैं मार नाम सो प्रेजेंट इयर इज 2019 बैच हमारा आईएएस दिल्ली में पोस्टिंग मार देने फर्स्ट पोस्टिंग मार दिल्ली में देने चाहे सो मैं आईआईटी में कीधो छु मैं आईआईटी रुड़की में सो ये मार स्मॉल ब्रीफ हो सो मैं केरो जवना आपण बिहार गुరించి सुनील भैया गुరించి केरो छु सो आपण सुनील भैया कतरा कष्टपडताणेन आपण गोर बंजारा माते एक आईपीएस का एदक्ताणेन फर्स्ट कसंगा तो ये अब चदवण जनरेशन में आईआईटी में सीट मारनको तो अത്ര इजी कोनी सो आईआईटी मद्रास में सीट मारताणेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टार्ट करताणेन और पछी एमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट हेताणेन एजुकेशन इथे वो जाताणेन एदक्ताणेन एक आईपीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम मारताणेन एक आईपीएस 2000 बैच में बिहार कैडर का दिने बिहार ने होते थी फरन बिहार 2005 बैच से and recent का previously posting वारू की दोस्त अनमाटा so एक 5 times एसपी का काम की दोस्त है फर्स्ट एक एसपी का डीआईजी का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का की दोस्त है पाटना बिहार में
नेक्स्ट भैया काय को एसपी मानूरे कीधो छे एसपी वेस्ट चांपरा ने कीधो छे तो अब एसपी हनु करता नहीं अब रीसेंट गा आपण भैया काय को आंध्र प्रदेश ने आया छे सो भैया रे फील्ड एक्सपीरियंस इन दाव तो भैया गुరించి एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का भैया एक काम करता है ना होते थे फ्रंट क्राइम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम में आई भैया काम कीधो छे सो साइबर क्रिमिनल इंटेलिजेंस का एक साइबर सर्वेलेंस का भैया एक और वन तो कृषि करता है वरवंत कृषि करता भैया चाला आपण एक आंध्र प्रदेश स्टेट ने आया रीसेंट गा और पछे आपण भैया का को एआईजी करता और पछे कमांडो बीएमपी 5 का कमांड का कीधो छे रीसेंट गा भैया आपण आत्रा आपण बंजारा जाति माथी आत्रा कष्टपड़ता आत्रा उंपा आरता रीसेंट गा अपने आंध्र प्रदेश स्टेट ने डीआईजी का सीआईडी का आपण भैया आया छे सो वेलकम टू भैया तार एक बेस्ट मोटिवेशनल का एक स्पीच आपण गोर बंजारा जाते ना तार एक वैल्यूबल टाइम केटाई एक मंची स्पीच द भैया तो वेलकम कर रहा हूं मैं प्लीज कम भैया ओके थैंक यू श्री राम जय सेवालाल फर्स्ट ऑफ ऑल सुधाकर एन थैंक्स क्यों सर ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्ट की दो एक्चुअली कम्युनिटी ने कनेक्ट करें इंत मुंदु सदे हाँ पर कतरा को ट्राई कर रहे थे కానీ కుంచితో సో एक अटेम्प्ट కొంతమంది उसको पॉलिटिकल लाइन पर ले जाने ट्राई कर रहे जेव्हा सो एक्चुअली सक्सेसफुल वेरी कोनी కానీ ఈ ప్యూర్లీ అకాడమిక్ एक आपने नाना आपने तमुళ్ళు कुंचको भाई कुंचको उन्हें मोटिवेट करे वास कनके भाई बहन मोटिवेट करे वास कनके नी इनिशिएटिव स्टार्ट की दे ಈ ಗ್ರೂಪ್ में एल्डर्स हनुज जीवनलाल सर एमआर नाइक सर ताराचंद सर इसे रात जना मोट जना इच्छा उन्हें से सदाई ಈ इनिशिएटिव एंड सपोर्ट के जसु राज थैंक यू एक्चुअली मैं मिस की दो कसम को तो जूम लिंक दसी को मिस कम्युनिकेशन के कारण का जूम लिंक मन टाइम पर आए को नहीं तो मैं अगाड़ी जॉइन है तो सर तम टाइम पे आया तो सर करेक्ट टाइम पे आया तो सर वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू सर यू आर ऑन टाइम सर ओके राइट सेशन इज रनिंग लिटिल जो आगे स्पीकर से ज्यादा टाइम ले रहे थे तो यू आर ऑन राइट टाइम सर थैंक यू सो मच okay actually I wanted to even hear to other speakers because this is all very important this is something that we are doing for the first time that we are all meeting up and we are discussing ideas and how to take this community forward and most importantly this is an initiative that does not have a political angle so that is the best part about this initiative so may care kind ka to broadly ek idea par मैं discuss करा के ले रहा हूँ and this idea I want to drive it very hard in everybody kind to what I have noticed is that every caste कौन से तो एक community रहता है caste रहता है आज which is developed for example आंध्रा में रेड्डीज रहता है कम्मास रहता है हनुज बिहार में बिहार काम करो जो सु भूमि हास राजपूत होसे रहते हैं they are political power अचीव करे रहते घंटे मुनांग है वो economic power अचीव की थे okay so economic power अचीव करने कन का तो happen entrepreneurship and जाऊं there is no other way to achieve economic power than getting into entrepreneurship that is doing business that is taking up small startups hapne the problem kind ka to we are limiting our vision to reservation and taking up jobs under reservation happen नाना जॉब देती satisfy वेरे जाए reservation एक pioneer job मिले थे एक TC job मिले थे ये थी अपन satisfy वे जा रहे थे कानी war beyond अपन आलोचिंचन और most importantly एक हापने communities एक business community का historically हापने community एक business community का तो full India ने का तो grain supply करे रहते import essential commodity supply करे रहते हापने community वाला जरूरत थी and I think our community is the most widespread community because of this because we have been roaming across the country and we have settled down in a lot of pockets but somehow we have forgotten our roots and we are now looking for jobs and small jobs and we have हापने एक capacity ना हापने power ना हापने
अब most probably अब आप से organization आप देख लो गौर गुरिंचे बातें कर देना. There are certain things that tell about our gore. Number one, we are very intelligent. Number two, we are very hardworking. Number three, we are very committed. He say positive. కానీ నెగటివ్ కాయంగా तो एक नेक हापन टॉलरेट करानी करके एक ग्वार ऊंचा हो तो अच्छे ग्वार टॉलरेट करनी करके ने नेगेटिव गाय कर एंड वो यूज कर लच ओके सो आपने आलोचना रहता आपने थॉट्स और बियॉन्ड का जाना एक एज अ कम्युनिटी अपन रेज करनु एज एन इकोनॉमिक पावर अब देख मैं కొంత లాస్ట్ కొన్ని డేస్ హిట్ కొన్ని స్మాల్ పొలిటికల్ మూవ్మెంట్స్ దిట్టో वो political movements which is not backed by money cannot sustain for a very long time. वो political movements कूरा का तो employees इतनी contributions ले लेना धरनाल करे रहे तो employees कतरा दारता नहीं contribution दच वो salaries are limited रहते वो salary इतनी contribution देने को तो कष्ट है ना. So what I'm trying to say is if we have to gain political power, but we have to gain political power we must first gain economic power. And to gain economic power, we must get into entrepreneurship and we must get very solidly into entrepreneurship. Kind of startup idea रहता है, आपने whole community promote करनो, parents community promote करनो, friends promote करनो. ये kind से रहा business है, kind से होमा kind करे रहे ये मा kind house के kind से loss लुचा, आपने मतलब वेन राव happy का kind कुछ जो कर लेना, मीना निक 15,000, 20,000, 25,000 तो ढेर रहा. कनकेन कदों को माइंडसेट इतनी बार आऊं एक मैं एक्चुअली अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग करने के लिए डिवीजन इन हेड कर रहा हूँ सीआईडी सो वो मैं काइं का तो मैं दिट्टो जो कौन है हे कम्माज रहते रेड्डीज रहते उन्हें पैसा करना इन्वेस्ट करें नहीं वो पैसा इन्वेस्ट करे करना रहते बैंक से तो ले लें पैसा इन्वेस्ट करे उन्हें एक पैसा ही घाले नहीं ओके आपने में प्रॉब्लम काइं का तो आपने बैंक से अप्रोच कौन करनू स्कीम्स काइं से काइं कर को मानन छे. नंबर 2 ये वासु में कतो ये गुरु आपने गोरे एल्डर्स स्पेशली जीवन लाल सर से जो वासु इमे कां के लिए रोजु सर आईआरएस ऑफिसर सदा चला सीनियर आईआरएस ऑफिसर सदा सर इनिशिएटिव ले तो डेफिनेटली वर्कआउट वच वो काइं का तो आपने गोर एज अ बैंक से कतरा को जना काम कर रहे एट वेरियस लेवल्स उन्हें से एक नेटवर्क फॉर्म बेना कुनी तो ही हमें एक बिजनेस इनिशिएटिव स्टार्ट करने का तो एक सपोर्ट ग्रुप फॉर्म भी केले वो तो चाला हेल्प है तो अपन बिजनेस स्टार्ट करें जो रेवासु मेन रीजन का है तो मेनली 2 रीजंस एक कैपिटल नंबर 2 ट्रेनिंग एक आइडिया रचले परने वो आइडिया इंप्लीमेंट करनो उन कन्वर्ट कूं करनो एक प्रॉपर बिजनेस है करके ना वो ट्रेनिंग छे. नंबर 2 स्टार्ट करने को तो कैपिटल चाहूं वो कैपिटल है रेन अनమాట ये दीर रीजन से कारणंगा अपन चाला फेल होकरंचा एटलीस्ट तो कैपिटल प्रॉब्लम कायन सको वो क्लियर करे वासु एटलीस्ट ये बैंकर्स कुन सको आपने कम्युनिटीया बैंकर्स कुन सको हो से एक नेटवर्क फॉर्म करे वासु ओमा जीवन लाल सर रहता ये ग्रुप एंडर्स लेता एक इनिशिएटिव ले लेना आई विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट करे वासु. सो आई वांट टू ड्राइव दिस पॉइंट कतो bureaucracy ma jaye IAS IPS officers were important, no doubts about it. Getting into politics is also important, but we as a whole community has to rise above, raise as an economic power, and that will only happen. Any community that has has risen in political power is only because of its strong economics, a strong capital backing. In fact, you will notice this that no politician here fights politics for the sake of politics. They fight politics to save their business. उन्हें business ले protect कर ले वासु उन्हें contracts regular लगा मल्लू करके न उन्हें काम से easy का बेउन करके politics करस ले परना कुनी तो politics से वासु समाज सेवा वासे politics को नहीं कर रहे कोनी आपने वो economic power दाखल raise करना का तो happen jobs are beyond happen in कुनको एक भिक्षा दाखल लदु कौन jobs are beyond आलो जान happen entrepreneurship पे गुरिंच आलोचिंचनु business ideas पे गुरिंच आलोचिंचनु ये actually एक कारण सुधाकर और anybody can take that initiative एक असोर एक
entrepreneurship and kunu interested छको वो एक मैं मार चार्ट है एक मार नंबर है मैं छोड़ दूँ जो कुनु interested छको हो join वे केला का तो एक group दाखल join वे केला at least see I don't know much about business but I know the broad ideas. There are people who know about business. मार एक one of my relatives has passed out of IIM Kozhikode. So and he is established a small business management school in Hyderabad. Gorera Chora. So here से happen एक group form when business ideas जो promote करे वास. So this is what I want to say. We need to go beyond, we need to go beyond thinking about jobs and even beyond civil services. You will see this happen. देखते भी हैं. अब civil servants रहते ही एक मोटो businessman से केला. We try to appease him a lot. उन चाला appease कर पुरन सा. Okay. वो उन appease करना. Yes sir. Audio UAG sir. Hello, Sunil sir. Audio. 1 minute. Yeah. Hello, sir. Hello, Sunil sir, તમે unmute જે છો. Yes sir. Yeah, Sudhakar. Yeah, now you can take over. Actually, I finished my part of talk. I'm actually eagerly waiting to listen to Jeevanlal sir. Yeah. Sir, thank you sir. There was a technical glitch. ये काय का तो आपण सेशन पहिला 9:30 लगा प्लान किरेचा. तो वरवडी ती वेळ जावच आधी आपण रिझ्यूम करायचा. एखादा वेळ जाव तो भी तम इमिडिएटली रिझ्यूम वच सेशन येना. So जो भी इमिडिएटली ई वजह तो भी अभी कोना ईवे गिचा ऑलरेडी हम रिज्यूम करना केचा तो अभी कहीं प्रॉब्लम है नहीं. नाउ आई रिक्वेस्ट रवि जस्ट आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम हेलो या बलरामन या सॉरी बलरामना थी कॉल आई थी बलरामना भी अब प्लेटफॉर्म जॉइन हो बलराम सर 10 मिनिट्स वाते करे बाद में अपन लास्ट अपन वैलिडिटी स्पीकर अपन जीवनलाल बियान सामला बलरामना तमार नाम काई एमा एकणो हाथ उताड़ो भैया लाइक रेज योर हैंड्स है ना बलरामना योर phone your name is not like visible here. Just 1 minute, I'm just सर तमार फोन नाम कहीं छे राम के राम okay I'm just unmuting yeah I'm unmuting you unmute yourself sir unmute yourself yeah I will introduce you no problem yeah you can talk yes. unmute करना को तो unmute कर लो पहला yes Balramana you can go ahead yes sir अब आपने ना बलराम नायक सर IRS ऑफिसर 2010 बैच and sir is now director of Sangareddy College Limited Sangareddy College Limited जो तेलंगाना गवर्नमेंट public sector enterprise and one of the most profitable business enterprises in our state. So Balramana please take over. बलराम सर से इन मालूम छे बलराम सर कहीं स्थिति थी आयोजक कोण एक one of the best example in our community like Saidulu. So Balramana please go ahead. Hello sir yeah
Yeah, sir. Sir, तुम audible वेरे कोणती sir? You are not audible, sir. हाँ, देख काही speaker एम problems देखते हैं. सर काही ऑडिबल છે નહીં સર તમારા તમને અનમ્યુટ કરમેલો છું મેં તમે અનમ્યુટ જ છો પણ કેની આટારી કોંતી યા ચેક યોર માઇક સેટિંગ સર ચેક યોર માઇક સેટિંગ अभी भी ऑडिबल છે નહીં સર તમારો ફોટો બી કાંઈ ટકારો કોંતી વિડિયો બી वन मिनट अन्ना अब बातें करो नो नॉट ऑडिबल अन्ना ऑडिबल वेरे कौन अब अजय अजय को अनम्यूट कर लो तुम अनम्यूट करो अब आई हैव गिवन यू ऑप्शन टू अनम्यूट या यू प्लीज गो अहेड नो अभी भी आ रहा कौन भैया वन मिनिट भैया तुम्हारा आरो कोणती आठ मनज आरो कोणती के सेना आरो कोणती देखो 1 मिनिट रवि रविकिरण am I audible रविकिरण please unmute yourself रविकिरण please unmute yourself रविकिरण 2017 batch IRS officer please unmute yourself Yeah, Ravikiran, am I audible? Ravikiran. Hello. Hello. No. Yeah. Audible, am I audible? Hello. Tar voice hatari channa. Hatari channa tar voice. Yeah. Balram sir, please go ahead. Now you are audible or not? We'll check. Balram sir, yes sir. Balram भैया, आ रही कोनी भैया तुम्हारा आवाज आ रही कोनी मार आ रही तो शेर आ रही तुम्हारा आ रही कोनी हाँ ओके रवि बलराम अन्ना ऑडिबल हेलो रवि हेलो रविकिरण राम सर तुम अनम्यूटेड छो Hello. अब ऑडिबल है यस ऑडिबल है ना यस ఉందా ఓకే నమస్తే రామ్ జై సేవలాల్ respected seniors in the services business magnates NRIs say goodbye and namaste so I mean our journey in civil services or a businessman or individual success also in how we can do and how we can achieve and happen gorjat happen sir I mean ras katracha I mean and we are most adaptable to the nature or whatever business अब नानक वेतन देते थे अपन शेर मातो से रिक्शा खूनते थे इतना ओके गोरली गावडी चराते थे तो एज ए कल्चर का आपण रास कष्टपराचा कन अपने नाम से and it is my experience also and okay मार मध्ये को तो okay आपण रास आदमी we are not only myself and most of them have come up in the life with a lot of hardships and mar education okay
गव्हर्नमेंट स्कूलांस कितें 10th तोणी व्हरपाच इंटरमिडिएट व्हरपाच हैदराबाद डिग्री आहे इंटरमिडिएट तो फेल हो गयो तो भी आई हैव नॉट स्टॉप्ड माय एजुकेशन फेल हो तो भी स्टॉप किदो कोनी इंटरमिडिएट डिस्टेंस एजुकेशन किदो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन थी डिग्री I did from the Open University, Dr. B.R. Ambedkar Open University. Degree to be Thamo Kunju, I did my post graduation from the distance education, and actually I got marriage. We have go 18 years in 18 years in. So that time I was intermediate failed with to we have to janate bhi. So education in a kati thamo kone. So hapne I mean the benefit is reservation and नान कहे तो जनाती एटलीस्ट एक गजेटेड ऑफिसर वेणोकन के ताने एक विजन को लेके एक व्यक्ति जेरोसु एजुकेशन कति सही I mean getting into civil service is not a small task like but वो एक व्यक्ति मने वो कहेंगे ज्वाला बोलते हैं ना अपन ज्वाला or the fire in you. If it is continuous, definitely will succeed. Definitely will succeed. I am one of the example. I mean, as like many of our brothers. So I have not stopped with education. Or was a MPhil. I did MPhil from the Usmania University, which is regular one. So, I mean, what I mean to say, कि ये कप्ता आपण गणका prepare वाचा मैं एक साधन चुचु मैं लेवेमा मैं बनू चुकतो कोण background or happen jati ma sojo koण hard work or this work is workship job would definitely help us and sunin bhaiya keroju business and when we come to the business kurikar mean the general public other than the gore bhais they take loan from the banks and they do business where we try ourselves from taking loans from the friends others getting it from the private loan which is more costlier we shall not do it for that over was happen kai karno happen income tax return kartani nan ki moti company kartani own gan ka build up karo definitely there are so many bankers come forward also and I mean as a director of finance and a CFO of the Sangareddy company I get calls and so many GM level, you know, GM heads one of the states for the each bank, SBI, we take Axis Bank, ICICI, Canara Bank, whatever they come and they ask. Even I think we want to list Sangareddy, one of the listed company. They said we will invest 10,000 crores. ऐसे लोग आते हैं, I mean इतना ऐसे लोग आते हैं. So there is a great exposure for loan. Even the government of India or RBI, I mean. Insist upon the banks go for giving the loans. So there are the greater opportunities where our community can stand. And when we take for the business, I think after the United States of the America, USA, India is the best city, best country for the business development or investing into the business or entering into the business as entrepreneurs. And doing the small jobs. Sunil Bhaiya मुझे तो रात आदमी सांभलो कोनी मैं just I was traveling from Hyderabad to Bangalore so when flight could not here to many of our brothers we have to do business we have to enter into business community and we have to go into the abroad say you go to abroad or you do business and enter into nan ki job karno ka dekhni group 1 group 2 or small business is crime I say it is a crime 20, 30, 40,000 at Vasu, happen Gore Bhai, degree, PG, MTech, BTech, or PhD Kartani, Jain Veer Ausram Checha. And we are there. See, now I am holding one of the important positions. So I have the access to the many bankers in Telangana state. All the bankers, you name the bankers, they do come to me. If I can put, if somebody from our community, business kara sakato, I can care position and my journey as 18 years in marriage after
12 years of the marriage life or my continuous hardship in completing the graduation, completing the post-graduation, completing the MPhil, and appearing the lot many examinations, railway exam as a constable, SI, banking, say kide. So happen kati thamno name, happen success, civil service rehte or any examination rehte, any business, kaunsi business rehte, वहाँ गनका happen success रनो तो continuity रहनो. Observing the business, observing the market conditions, or study ma ganaka happened khado rato happen ganaka thamza mato mean continuity ga rato khachitanga u bhagwan rehte happen friend circle rehte happen jaat rehte definitely happen help करे marriage is a hurdle, parents is a hurdle, my and the background from where we have come का तो आपण गरीब्या हुएचा आपण याडी बापू कन पिसा छेचा याडी बापू सदवे कोणती वो से काही अवसरम छे. Those are the not the reasons for elevation in the services or elevation in the business or के माय जाणवणो को तो and continue ga happen achieve करेन great scope रचा and even after entering into the job okay our हैदराबाद में 4 साल काम की दो और पस बॉम्बे में 3 साल भी तो वो तो 3 साल भी 3 years कंटिन्यूस का ये गोरेन को नहीं वो सी जनरल कैंडिडेट की commendation certificate मिली को नहीं मन 3 years I was there 3 years I continually got the appreciation from the chief commissioner even one time got the appreciation from the CBIC और Delhi our board तो हार्ड वर्क कनका करा आपण कामेन लेतानी करा तो खचितंगा even the general community accepts us as a brilliant or excellent or outstanding officers definitely करायचे और पास government of Telangana they have invited me to join the department here also continuously not only our business in our own department director finance even other land acquisition new projects whatever coming up and we are doing. And recently in Sangareddy, we are coming up with the GO number 59 is there, where Woma happen to be reservation there is a SC, ST, 21% reservation in contracts. That would be a great achievement. I have Hama Vate Kyoto, SC ST Commission Chairman. So next to board happened Jatin Ras useful was up to 1 crore contract. 6% go to Gorena SCST. So that have spoken with the chairman SCST commission who are Hanu Pratuvakati even happened civil service Abukuna prepare work and Keresa Kati kind Thamir Ausam Chesa continue to with our studies and books newspaper and guidance from the all our seniors and the initiative taken by Sudhakar Ravi is laudable. Also काम की देशोत्तम. Thanks for the opportunity, Sudhakar. And kind question रहतो, I mean definitely our members our गोर भैया पूछे वासु. Thank you, Balram sir, for your valuable motivational words. Balram sir एक अपन live examples who came from zero background and sir is now in one of the most top influential position now. సో సారే గురించి మనం మాలం సార్ జర్నీ తో మనకో సారే గురించి ఎన్ని డౌట్స్ తో కేరీ హాతర్ తో యు కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ మిస్టర్ రామ్ please brother sir no sir Mr. Ram somebody is there with name Ram no sir hello it's Ram Balram Saraj. There is a question from Bullet Krishna. I have unmuted you. Please ask. Bullet Krishna ji, I have unmuted you. Please ask question. Yeah. Sir, Ram sir, Balram bhaiya, very thanks sir. Krishna. Sir, university scholar sir, Usman University. Okay. So sir, really chala thanks sir. Tam maybe hama sir ek youngsters काय करायचं अंगन को is business magnet का वेनो कुछ ये ना एक startup करनो को जो कोनो process है था तम help कराएंगे करे तो अटलेने सुनील भैया भी मंची guidelines मंची encouragement कर रहे थे कुछ क्या रहता है को क्या कर रहे थे तमार जैसे numbers तम जैसे share करो भैया definitely तमें बढ़ाता तमार सहकार्य ले लेतानीन आंग जामाता
డెఫినెట్లీ తమ కేజు నిజంగానే బిజినెస్ business is the ultimate Krishna. Business ultimate Krishna. Business माने अब government job है और रहता service है और रहता political रहता they go to business. Business is the most important, ras important है. मतों अब को जो Sangareddy में even we are giving reservation in the contracts. And next board में अपना approve विदाव से. And मैं civil service में join वो कहीं रंगा even I drove auto. I mean happily I can say. And how did I do it? No. हानु कुकिदो माटो पीएमआर वेती लोन लिदो स्टेट बैंक ऑफ ट्रावंकोर अब से एसबीआई से कोटी ब्रांच लिदो तो कति थमेज को नहीं कति थमे को इन द सेंस देयर आर द अपॉर्चुनिटी आपने स्टार्टिंग करते से कहीं का कस्टम वेतो भी है और इब्बंदी लागती भी है पर वो से छोड़ता नहीं अपन गण का आंगा हो तो खच्चितंगा इवन हमारे सरिक सुनील सर रहते जीवन सर रहते लक्ष्मण सर रहते एंड जयराम साहब रहते और अपने एनआरए फूल सिंह सकरू एंड यंगस्टर्स रवि किरण and happen Sudhakar. There are so many Priya Naik sahab se, Tarachand sahab se. There been I mean atra आदमी से अपन Ravi से I mean all the members those who are participating in the meeting वो says I mean definitely and तम चाणो को तो वो इन माँ उचुम even if you want me come if my office you know ओके अतरा नेर तो तम बलाओ तो कत बलाओ तो आऊँ चु and सजो कौन काहे से वजी केमा इन्वेस्ट करे वासु अपन even ठीक है मर सर्विस IRS customs and GST से जीरो सु even I can tell about the imports है काहे से export है काहे से कु कर सकनो का जो कौन भी कुछ हैदराबाद में भी अपन even a close not close group open group है Sudhakar would be there, Ravi would be there, even happen Balam other senior officer थी happen community थी एक meeting हला definitely it would be a great step forward even कोई कोविड टाइम में भी happen as meeting आलोचना एक तो happen presentation we have to appreciate which kind question को तो I will be happy का कुछ answer Krishna and Sudhakar please just I'm giving my number I will Sudhakar, any questions? Brother, please. Sarita ji, Sarita Mudawat, I have unmuted you. Yeah, please ask question. Yeah, yes, sir. Sarita. Ram Bhaiya, Kallepalli, Bhaiya, Kallepalli Vasi chu Bhaiya. Oh, Kallepalli Balanagar ka? Great. Happy to रुक्मिणी नायक तमर मासी लागत का जो और छोरी छु मैं okay हाँ एने न्यूट्रिशनिस्ट का कर रही छु भैया तो నేను ఫ్యూచర్ సార్ అది నేను స్టార్ట్అప్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సేమ్ న్యూట్రిషన్ బేస్డ్ మీద దీనికోసం లోన్స్ కానీ తీసుకోవాలి ఎట్లా అన్నది నాకు తెలియట్లేదు సో నేను కూడా ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ ఐ మీన్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లో సజెషన్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయి అని చెప్పి కనెక్ట్ అయ్యాను No, definitely nutrition lanti courses hai nutrition courses na even individuals or government as an importance there is a nutrition courses NN is one of the central organization and prestige organization definitely वोती तम का individual का कौन से course गालो चो तो loan compulsory दे and we also recommend will put a word to banker वाले भी काचा कौन से बैंक वाले तो हमारे वाद में से कनकेतानी definitely हम काचा okay भैया thank you Sarita अब now अपना last valedictory speaker अपन से wait कर रहे थे जनाती जीवन सारे में first personal का सॉरी केस पुछो कसेन का तो अपन speakers हर एक में time limit करूँ क्या डिटो अपन केनी भी कर सको कोनी कसेन का तो उन्हें indicate जो कोन interest है तो जीवन भैया मत पहला तमने I am very sorry personally on personal level and second thing like now the valedictory speaker अपन जीवन भैया बारे में सेन मालूम छे एक अपन histories में एक independent का एक MLA ना अपन आप जीवन भैया बाप ने जितर brain वोरज व्यक्ति तो अपना सुनील भैया को जो economic power precedes the political power so अब अपन जीवन भैया बातें करे जीवन भैया ना अपन रवि IRS रवि किरण 2017 बैच IRS ऑफिसर छे यंग ऑफिसर फ्रॉम कोत्तागुडम तो रवि प्लीज इंट्रोड्यूस जीवन भैया
Ravi, you are there? Yes. Yeah. Please mute mic manchi chesko and introduce you on the. Bye bye Ram. My name Guglot Ravikiran sir. I'm an Indian Revenue Service Income Tax. Hyderabad ma posted show. So I'll be privileged to introduce Jivanlal Laudia Bia. So Jivanlal Laudia Bia, Indian Revenue Service is income tax. जीवन भैया नॉर्मल सिंपल पुलिस फैमिली थी सर और अब पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिटायर हो अब वैरा कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए का सर अब स्कूलिंग और एजुकेशन जीवनलाल भैया देखो तो लाइक एपी रेसिडेंशियल स्कूल में चलो और पचा एपी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज नागार्जुन सागर में कॉलेज फिनिश किया और पचा एनआईटी वरंगल में चलो 92 to 96 कंप्यूटर साइंस और बच्चा ECLA में इंजीनियरिंग का सिलेक्ट हो 4 साल काम किया होता और बच्चा ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज पर इंस्पायर हो 2001 में CISF असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्ट हो और बच्चा इंडियन रेवेन्यू अकाउंट सर्विस और बच्चा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स में 2004 थी इनकम टैक्स रेवेन्यू सर्विस मत से सो one of the good achievement that I would say is like Jivanlal Bia Foundation course Labasnama kido Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. So he was elected as a president of the probationary officers. Like being a tribal and a South Indian, I would say it's quite an achievement. Usually IAS they won't let people from other services becoming president. Usually, that's the trend. But it's quite an achievement. और बच्चा when he has come to the field from 2006 5 वर्ष वाइजैग में काम किया और बच्चा हैदराबाद में आयो जॉइंट कमिश्नर when he got promoted then he has transferred to Mumbai so currently he is additional commissioner of transfer pricing so transfer pricing it's related to international taxation which deal with all the big corporates and companies MNCs basically and these are his mostly professional background so but as we all know he has been always very socially very active and society conscious and he is actively involved in various Banjara community advancement related things he was an active participant and he was one of the members who formed Girijan Reservation Sadhana Samiti so it was actually both instrumental in cabinet approval for 10% reservation of tribals of Telangana either. So it's one of the greatest achievement actually. So and because of the zeal to do something for society with some social service perspective, like he was one of the brain behind like getting his father elected as an independent MLA. I think that it is one of the milestones actually to getting elected as an MLA. Currently he was a MLA in Vaira constituency of Koteswari district. So I would ask please invite Jivanlal Anna to kindly speak and share his thoughts. Yes, Jivanlal Anna. Thank you so much, Ravi Kiran. Thank you so much for that eloquent and a very elaborate and beautiful introduction of me. Thank you so much. My younger brother in the service, junior service है माँ हम भाई दाखल देखा था juniors and seniors we mostly अपन बंजारा community का इनका तो भैया भाई वो type है माँ रांचा वो type है माँ तो my younger brother thank you so much for that lovely introduction and moreover you are from my district Kottagudem because I am from Papkollu Julurpad Mandalam Kottagudem okay thank you so much Dr. Sudhakar साहब मेरा time कितना है Sir you have 20 minutes, sir. No problem. 20 minutes, sir. Okay, thank you so much. ठीक sir. Actually, to start with, it's a wonderful attempt. Great, घणा अच्छो काम कर रहे हैं. अपना डॉक्टर सुधाकर केला, अपन रवि किरण केला, अपन से जूनियर, अत्रे सारे bureaucrats वेती हैं. वो काइन कन केती कन कतो bureaucrat कन केती कन काइन कतो तमें मालूम वेणो. एक वना bureaucrat पे जाओ जेर पचा अत्रा comfort रच life में माँ क्या वो उन्दर enjoy करें ना time मले नहीं उन्दर कतो एंजॉय करते रह सके वासु अत्रा एंजॉयमेंट रहता है अत्रा कंफर्ट रहता है ये से रहता वो वापस कम्युनिटी साम आती है कम्युनिटी में जो पढ़ रहे थे जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे जो पॉलिटिक्स करें जा रहे थे जो बिजनेस करें जा रहे थे इंदु वासु गाइड करनो इंदु वासु काम करनो कन के तिकेन वो काय कन आ रहे सकन को एक वणा तम मोस्ट इंपोर्टेंटली सोचे जरूरत है
जो ई वेबिनार सांभळ रे छो અને जो ई वेबिनार ने लेजाती लेजान केवळ छो ओसे तमसे सोचेर काय वात से ते इंपोर्टेंट काय कन कतो अत्रा इंपोर्टेंट आई मीन कम्युनिटी मा सजको ऐसे मोटे मोटे जो ब्यूरोक्रेट्स अत्रा भले आई मीन आंग डगरगेच आंग बडगेच अत्रा कमारेच वगैरह कन कितकन तम केले रे छो पण ये हाटो अतियान कम्युनिटी साम देखती देखन कम्युनिटी वासु काम कर रे छे इंदुन तम घण सबासी देर वात छे. This is most important that I mean you have to understand that all these people are coming back to pay back to the society. This is the underlying word by which all the Banjaras these days they are conscious about their society. मार पब्लिक मार जनता मार बंजारा कुंकु छे उंदु वासु काय करनो कन के दिकेन हाटो फरती परन उंदु वासु काय करा कन के दिकेन सोच रकाडती रकाडन उंदु वासु आतियान कर रे छे इंदु आंगे सलामी ठोकेर वात छे. काल वाते किदे जो तम सांभळे छो कोनी काल वाते किदे राज घण आई मीन ब्यूरोक्रेट्स वाते किदे घण एंटरप्रेन्योर्स वाते किदे आज वाते किदे जेमा एक्सेलेंटली आई मीन वाते किदे शशिकांत व्हाट ए मैच्योरिटी दैट बॉय हैज गॉट परफेक्ट एडवाइस एती आचो एडवाइस तमने प्राइवेट एमा मळे नी प्राइवेट कॉर्पोरेट्स आई मीन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मने परफेक्टली उकीदो एंड तुकाराम सरीको माउंटेनियर कन के दिकेन का तो वेस्टर्न वर्ल्ड कूदे कच मालूम के घण मोटे मोटे तमें वगैरह देखे सकते जारो तो अतरी भडी तमें डेड बॉडीज पड़ी कन केतकेन कती फिर भी क्रॉस कर लेंड अगर गोचा अवडी हिम्मते वाळ जात छे आपण बंजारा कम्युनिटी और पछ आपण ऑब्वियसली आपण सैदलू केले आपण अन काय को बलराम केले ये दोय तो इन्स्पिरेशन छ कम्युनिटी ने कायो हा त्या 5 पीसा छे नी रेना जाग छे नी खायन बो मुद्दा छे नी ती कू पड़ती पड़न फायर इन द बेली कन के एक छोरा को रस घणा ये करे छ इनुन सेम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक काई छ कन के को तम देखणो ये से पब्लिक मा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक काई छ कन के तम देखो तो वन थिंग इज वेरी क्लियर इन एवरी बंजारा हु हैव सक्सीडेड इन देयर लाइफ दे हैव ए फायर इन द बेली कन को तो पेटे मा सळ करू करनो को जको मनता कतरा आणो कन के तो ना 1 मिनिट सोई देर छेनी 1 मिनिट तो ना बैसे देर छेनी 1 मिनिट तो ना कती रेस्ट करे देर छेनी अस्सो मंटा रेणो पेटे मा ऊंचो उठनो कन के दिकेन ई ऊंचो उठनो कन के दिकेन अपनी मंटा जन्नाज तम को ऊंचो उठो छो तो ये सारी बंजारा मा ये से जो तमाती बात किदे साहब है उंदुर से मा ई पॉइंट क्लियर छे. अब सैदलू आपण सैदलू भी याद आई मीन अब एसपी वेगो छे आई मीन घणी इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट में अब वो तैनात वेमलो छे on फिर आपण लालू लकावत जी नाइस एंटरप्रेन्योर एंड we introduce किदो जो फूल सिंह my friend whom I feel proud of and tomorrow I mean he has gone and established a business in USA से इंडिया में बिझनेस घाले ना डिफिकल्टी वरे तो यूएसए में बिझनेस घालती घाले ना होता छ जको आपण वाल रास के छ इंडिया थी रास मोटे मोटे कम्युनिटीज के छ देख यूएसए ना जाए ना कोई रिजर्वेशन छे नी यूएसए में जान बिझनेस घालनो को तो कोई रिजर्वेशन छे नी वो तो जनरल कॉम्पिटिशन है कन कदिकन कतो ये ग्वारते थी उठती उठन गोछ वो तो नाइकी कर रो छ ई देकर जरूरत छ तमेने वो तो बिझनेस घालती घालन वो तो एक्सेल कर रो छ तो असे ने तम रोल मॉडल दे लेर जरूरी छ घण इंपोर्टेंट आज आई मीन आज कैच ऑफ द डे लेवाळो छु मैं सुनील आईपीएस एरवात माय यंगर ब्रदर सुनील ही हैज गिवन द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड दैट तम आंगा इकोनॉमिकली स्ट्रांग वो ई लाइन अंडरलाइन कर लो तम से इकोनॉमिकली स्ट्रांग वो एंटरप्रेन्योरशिप तमामा लायर जरूरत है ये बात से थी इंपॉर्टेंट है आज डेटर में कतो अब ये पूरे मीटिंग है अब तम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात काई छै कन केतकन ले जा रहा तो बिजनेस करती करन पैसा कमाओ और पछ काई पॉलिटिक्स करनो कन को यार पछ 5 मिनिट में केवाळो छु पछ कूचो पण सेती आंग काई कन केतकन कतो आपण टांग हेट आचो गडती गडन आपण टांगे पर आपण हुबरेन आपण 4 आदमी आपण कांदे पर पाडेरी कैपेसिटी कन कसको आपण रेत जरूरत है आपण कांदे पर आजी चारीन पाडती पाडन आपण उंदुन रकांडो कन केतकन कतो आंग तू कमायरी टेक्निक तो रेणो कते थी आओ मन टेक्निक मन मालूम छे नी म गरीबेती उठो म येती उठो कन केतकन कतो हमसा जो अब म को तो मैंने बलराम भी अकेला है आपण सैदलू भी अकेला है ये से काई कन केतकन कतो खायन छे नी जो होते थी आईपीएस वे मेले छे आईआरएस वे मेले छे होते थी आई मीन आईएएस वगैरह आई मीन कर मेले छे खायन छे नी जेते थी मन तो तसे को खायन से मैं कांस्टेबल बेटा में महीना का काई आई मीन एकदम काई रिच पोजीशन थी कोनी आयो मैं मनी का खान छेनी जो को दाडू मनी मालूम से मार बाप पक्को आई मीन एकदम सुपर क्लास ऑनेस्ट ऑफिसर से अपन सुनील बिहार नहीं वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर आई मीन हमें नहीं आई मीन
बाटी बोटी काय मळी कोनी तमेन काय को दस्तक मळो जन खालती खाना सदवेचा हमी कनकेत कन का तो काय कन केरो छु ऐसे बातें कन का तो तम कुणस पोजीशन है रोती वो पोजीशन ती उंच उटेर स्कोप्स है उंच उटेरी सपनो देखणो उंच उठनो तम कनकेत कन सीरियसली केरो छु ई हरदे रकाडो ओते ती उंच उठनो कनकेत कन कसको अब तमेन फुल सिंह बिया कोच है एंटरप्रेन्योरशिप में काय हो टेक्नोलॉजी यूज कर लो वो में ज्यादा कैपिटल लागे नहीं टेक्नोलॉजी यूज करती करें वो माती आई मीन एक न्यू आइडियाज तम आइडियाज ले जाओ तम आइडिया लाओ मैं बिजनेस खलाऊं चुकन कितकन फुल सिंह बिया सदा कोच टेक हिज आइडियाज एंटरप्रेन्योरशिप असे मा आज राष्ट्र आता डिक्की कन केतिकन एक डिक्की टिक्की कन केतिकन एक दी आई मीन इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कन केतिकन एक ट्राइबल अन एक दलित कन केतिकन दी चालू करस है वो दोय मा आपण घण ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स रास मंदी वो मा जायजान I mean, OTT labels है, OTT. I mean, they have taken their cue from there, and then और पच्चीस काइन कन केतिकन का तो सरकार most of the state governments and even Indian central government they are giving various loans to our communities, the backward people, which we do not know. तो थोड़ा सा तमें होमवर्क करना पड़ा है होमवर्क करती करन कत्ता कुणस कुणस बिजनेस है मा कत्ता काई पॉसिबिलिटीज है वगैरह कन केतिकन का सको वो से कर लेती करलन तम जॉब मळरी कोणी जॉब काय सर तमें ना काय सर बीटेक करती करन एमटेक करती करन आजकाल 10,000 में नौकरी करनो 10,000 केम चावच कत्ता मळच केवडी पूर्वच केनी पूर्वेनी काखनी पूर्वेनी और बदल तार दिमाग जो है बंजारा दिमाग ओरिजिनल काय छे बिजनेस करमेलो छे नाइकी करमेलो छे दोई छे तो ना दोई मा टॉप छी तो बिजनेस में टॉप छी और नाइकी में टॉप छी ये दोई घालती घालन बिजनेस में महाराज तो तोन थामे वाळो कोण रे ई आंग तार दिलो दिमाग में काटो बेसाडनो पड़ा छे तम काटो बेसाडेरी बात काय कन केतिकन कतो you have to tell yourself that I have ruled this country at some point of time. I have ruled this country. I have taught this country the business. The whole golden quadrilateral, India में जो golden quadrilateral जो रास्ता states है, वो ना they are the routes created by the Banjaras in their business routes. मालूम सकता है ना? The Indian highways created in India, the highways of India were created by Banjaras. How many of you know? They are the routes created by Banjaras while doing their business. सेना नामक एवढी ती ओढी लातीला ना पण वेचते ते. ओत्ता कती को एक प्रोडक्ट मैंने रेयर का मळा सकन घेतके वो प्रोडक्ट ले जाते सारी इंडिया में वेचती वेचन अत्रा फेमस वे मेले आपण. मैं एक हफ्ता ये पॉलिटिक्स और मैटर में एक हफ्ता राजस्थान गोजना वाते वाते में उतर लोकल पब्लिक काय केरी कन घेतकेन का तो कती कती खोदू करे जना होते ती पिसा मळू करे करसे. भांडागार I mean the wealth is digged out at some places in the fields. ऐसे कैसे करके मैंने बोला था तो वो क्या है ना सर बंजारा लोग पैसे ज्यादा हो जाता है तो कहीं भी वो गाड़ के चले जाते हैं. बंजारा लोगों को पैसा ज्यादा हो जाता है तो कहीं भी गाड़ के चले जाते हैं और उसके बाद कोई खुदाई कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं तो उसमें से निकल रहे हैं तो वो बंजारा का पैसा था. अत्रा धनवान रहा अपन अत्री बिजनेस करती थी बिजनेस में अत्रा पैसा आता तो कि कत्तक घरे में घाले छे नहीं तो पांतरा घालते थे ओत्ता खोदन घालते थे. That is the level of business intellect and that is the level of hard working we have in our blood. अपन ब्लड में छे इसे कैपेसिटी ई कैपेसिटी से अपन ब्लड में छे जेती ई अपने तमन को जो कोई सुनील भैया को जो बात केला मिगता अमेन से जो काल का रस एंटरप्रेन्योर्स के फुल सिंह जी को मेलो जो को अब अभाले बलराम जी सदा वो न इंसिस्ट कर मेलो छे. सो these things you have to tell yourself back again that the country I mean तमें अजय एक दी आदमी बात कुछ I mean अपन वेल्दी कन केतिकन केना नाम सांभळे भी होतम लाकीशा बंजारा कन केतिकन लाकीशा बंजारा पूरो एशिया में रिचेस्ट रहू पूर्ण एशिया में आज जो पार्लिमेंट तो ना हुबीच कोनी पार्लिमेंटरी एरिया राइजिना हिल कन कचा होना that राइजिना हिल was his home that belongs to him. वो राइजिना हिले में आज एक गुरुद्वारा सदा बांध मेले होता है पार्लिमेंटर पाकती में वो गुरुद्वारा नामत से लाकीशा बंजारा गुरुद्वारा और नामे पर लक मेले का लक मेले उंदूर एक आई मीन सिक्केर एक गुरु ने मुगल्स काट नाखे तो और बॉडी नन वो सेना कोई लारे कौन तो यार पूरो यार हजारों आई मीन गावड़ी गोदा से रतो उन धसाटी धसान और वच्चेती और बॉडी लातिला उन दिनों कन आउट ऑफ दैट रेस्पेक्ट the Sikhs have given that Gurdwara
his name, Lakisha Banjara, the richest man those days. How is he richest? He has done such a business. He has done business through ships those days. कतो shipping करतो तो वो दिन में वो कतो अत्रा धनवान रहते थे अपन ओते थी हेटकू पड़े थोड़ा सोचेरी बात से ओते थी हेट पड़े अपन ओते थी हेट पड़े अन काई को ये रंग नाइकी सदा रहती थी पूर्ण इंडिया में नाइकी रहती थी अपन हेमू कनकेती के एक one king who has ruled the country. There is a clear-cut study that he is a Banjara. Such a king and everybody. Kato, there may be debates or anything of that sort. Undebatedly, we are a great businessman. Undebatedly, we have been leaders. And subsequently, I'll come to my own point. I mean, today I have been given the point that I have to speak on the politics. देख भैया एक बात है नाम काय छे आपणो एक दूसरे ने काय केला छे आपण काय नायक कसे को छी काय नायक वारु छी के नायक राम राम वाते रांग एक नायक वाते पचे एक नायक नायक मीन्स लीडर सो बंजारा और ब्लडे मा नायक लेन हुयो छे और ब्लडे मा नायकी छे so they are here that they can direct the world. That is the reason why अब आपण बंजारा मा प्रॉब्लम काय केतिकन कतो मना आज मन सेव आते मा मन सेती डिफिकल्टी काय लागू करे कतो एक बंजारा दूसरो बंजारा काय कह सके नहीं कोई केरी माने नहीं कहा चावळीर चार बेटा चारी नायकज कोई केरी माने नहीं एक एक वो खुद ने नायक कन केतिकन केले ना दूसरे माने नहीं we are egoistic and we are we have got lot of self confidence and lot of self respect Yerma Kankan Ketikan Kato, be a Roman when you are in Rome. You may be a Naik. You may have leadership qualities within you. But when it is required, you have to promote one person as your leader. That is also in the interest of your own self and in the interest of your own community. This is what we keep missing always. As Mar Bab TRS party ma rahe the. And there is one, Belay Naik that could be in Congress. And there could be one more Balramji in Congress. There could be one, other leader in TRS and one other leader in BJP and all that. My point to all of you is that you should have a mutual respect for each other. Why should you have a personal hatred? You should never have. एक दूसरे ने देखती देखन तमेने कनाईती जेलसी आई को वदाड़ेती तार हेट पड़ेरो शुरू वेगी जूस My father, when he was winning as an independent candidate over respected Madanlal ji, even today, if I see Madanlal ji, I will properly greet him. Namaste Madanlal bhaiya और ठीक है क्या जा रहा है तेरा क्या पर्सनल दुश्मनी है तेरी किसी से तेरे से तेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं होनी चाहिए you should have a mutual respect to each other Banjara and you should be able to see the appreciation and the greatness and the goodness in your fellow Banjara then only you are called a proper Banjara कोनी कनकतो तार बाप याडी रो छेसली तो ये हर देरा काढो आंग कोई तार बंजारा मा कोई ती आचो काम कीधो छे कोई ती ऊंचा उठो छे कनकेती कनकतो एक दूसरे ने तम रिस्पेक्ट देर क्वालिटी अगर तमामा छे नी तो तू प्रॉपर गौर छेस नहीं ये हर देरा काढो आंगे सेवालाल महाराज फर्स्ट नायक कतो नायकी मा शुरू विजर पछे मोटो सो सेवालाल महाराज अपने दिखायो तो सेवालाल महाराज के गो क्लियरली लीडरशिप कन कसको अपने मा कून लावणो काई करनो कन के जकन घण अपने ने वी डोंट नीड नॉस्ट्राडामस वी डोंट नीड विवेकानंदा we have all those qualities embedded in one person called Sevalal Maharaj ये सेवालाल महाराज है ना पण ये सेवालाल महाराज है ना पण वो के गोर जो को वाते चार वाते आपण हरदे रकाडे वर वाते पर चाला तो आपण कवडी थी मोट नायकी करेवास अब नायकी करेवासु कन के तिकन म केरो छु नायकी करनो काय कने का करनो नायकी देख आज आपण पॉप्युलेशन कतरा छे महाराष्ट्र में मैं हर एक स्टेट एर पॉप्युलेशन वाइज करो छु मने पॉलिटिक्स काई करे जरूरत छे कन केतकन कतो आई एम हेलबेंट ऑन पॉलिटिक्स फॉर द सिंपल रीजन दैट द ऑल द पावर लाइज इन पॉलिटिक्स हम कतरा भी ब्यूरोक्रेट्स छा
Today, there are few IPS officers here. I mean, there are few IRS officers, few IAS officers. Everybody will watch for me. Everybody will agree to my point that end of the day, it is the political boss who is the boss and not a bureaucratic boss. We implement their policies and they frame the policies. And for your community to develop, you have to be in the state of making the policies. Write on the walls of your home that I'll be the leader of this country one day, said Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb Ambedkar, the father of the modern India, has said, write on the walls of your home that you will be the leader of this country. You will have to rule this country. Kaake go policy tar community na benefit wazu tu agar na banawas, so you will always be ending up with chippa, begging bowl. You will end up with a begging bowl if you are not in a position to make the policies. And where are the policies made? In the legislature. If you don't enter the legislature, how can you have, I mean, some policy for you? Today, I mean, there are many various Sangha leaders. LHPS Bele gar ganivandi or Sanjeev gar ganivandi evditi Maharashtra Sandesh bhiya kela. I mean, there are many leaders. I mean, Indoreti ghan sare leaders Shankarji kan वगैरह सेच है. ये से अत्रा दाड कतो तांडा पंचायते वासु गण कोशिश की दे. 30-40 years they fought for it. Ultimately, it was given. It was given. When it is given, when your political clout and when your potency and everything is seen, and your advantage and everything, I mean, that is all in the process. Once they become Gram Panchayats, all Tandas have become Gram Panchayats, so many Sarpanchas will come up. And we have a right on those Sarpanchas. Wo se Sarpanchas, hundreds and thousands of Sarpanchas are there. We can ask them, for our children, you have to do these things for their development. Aba apan development thame walo chhe nahi. Apan development unsa jute walo chhe. Ye ranga, these are gone are the days wherein we did not have any facilities. Gradually, the panchayats have come. The schools, I mean, residential schools are coming up very well. They are giving good education, good food, good facilities and everything. English medium they are teaching in the government schools and everything. We did not have all these things and still we have excelled to this stage. And today you have all those facilities, and what is stopping you? The community has to rise now. And the rise will always, I mean, when I have spoken about entrepreneurship earlier and now speaking about the politics and entrepreneurship always goes hand in hand. Every politician will have his pillar, a businessman. Every politician will have and should have that. अब मैं बंजारा छू तो मना त्यान कोई रेड्डी का कम्मा का ठाकुर का ब्राह्मण का मने सपोर्ट करे नहीं. मना जग बंजारास करनो पड़ा से. तो मैं अगर पॉलिटिक्स से मैं छू तो तू बिजनेस से ती मन सपोर्ट कर. सवार तो न मार जरूरत पड़ा से. मन तार जरूरत पड़ा से. This is hand in hand. And together business and the entrepreneur and the politician have to go hand in hand. That is the reason why once upon a stage अपने में entrepreneurship छे नहीं जेती. अपने में कम से कम DT नायक सरी को महाशय, DT नायक सरी को एक महान आत्मा I mean politics से माती आन मैं तमार वासु सर्विस करूँ चुको कित के ना हो तो अपन वो ना जिताए सके कोनी. That was our failure. But in my own capacity, I have organized that Kottagudem meeting, first meeting of DT Naik's political entry. In my own capacity, this I cannot say, I mean, publicly, but then because this is a Banjara group, today I'm telling you, this is way back in 2008, 2009. That meeting, whole 5,000 people I have provided to that. Pani, Bholaya, I mean, Majiga, Vagera, Adanta. Kato yese keleri baate ko nahi lapna, ma kain kan kero chukan kit ken kato. Whoever are in a position to support a politician to come up, whom you trust that he will stand for your community, he will stand for your cause, you have to come up and stand for them. I am giving this call to the entrepreneurs. And politics is not for any selfish fellows. Selfish fellows, please get out of politics. It is not for you. Politics for me is the most sacred service. This is my quote unquote first and last statement regarding politics. Politics is a sacred service. Niku ఇచ్చే గుణం ఉంటేనే రావాలి, తీసుకునే గుణం ఉంటే పాలిటిక్స్ కి రావద్దు. అగర్
तारमा देर हैबिट रे केनी घालनो केरी वासु काई करनो केरी वासु काई घालनो कन कसको दल्ले मार रे जन्नास पॉलिटिक्स है ना काई लेर वासु के काई हमें न वो पॉलिटिक्स देख लेन काई पैसा कमाइस के वगैरह कन के वो थॉट्स रहतो तो सलाम प्लीज डू नॉट कम इनटू पॉलिटिक्स दिस इज नॉट फॉर यू पॉलिटिक्स इज फॉर दोस पीपल who have a die hard service character, service attitude. That is the reason why I forced my father. He was not at all inclined towards politics. He wanted a safe life, I mean a secure and I mean sweet life. But I told him, people like you who will think for 10 people, your kind of people should come from Banjara community so that the communities outside will learn from you. They will learn from you that here comes a Banjara who is serving the people. My father prachar ko nahi kar raha, you are not my voters, but I am telling you how politics should be and what politics should be. And politics apne na apan kai kare saka cha apne capacity sakan ken ka to koi latilan platter पर देना के नहीं. हानुज my father एक previous party में रहता वो ना I mean immediately वो कोई ticket को नहीं देना के. It was a tough game for us. There is never in the history that an independent Banjara has ever independently won an election in the legislature. Never in the history of Banjaras. Parties dere koni to, then we have thought, let me, I mean, see it. All the efforts, I mean, all the, I mean, things have gone into it. And then he was successful and history was made. In the 70 years of Khammam district history, where 14 constituencies were there, never an independent have won, generally also. And never in the history of Banjaras, any Banjara has won, I mean, independently. This is what is data given, I mean, maybe subject to 1% correction. But then 99% I would say. There is no history that, I mean, any Banjara has ever won to a legislature independently, so he has won. What I am trying to tell you here is that once you have that die-hard conviction, kuni ko bhiya apne na ke go to kai ko cha he has said misweg over ek very important word ke go cha you should have that conviction and hard working which is there in our blood. You can achieve anything kan ke tiken man ghana acha lagi wo baat. It is correct whether it is politics or anything of that. In this sort, I will bring your attention to Maharashtra. Maharashtra is leading by example. Maharashtra has got roughly about over 1 crore of Banjara population, and they have almost had 15 or 17 years of chief ministership of a most advanced state in India, Maharashtra. The biggest, most advanced state of India is Maharashtra. Population wise, maybe second or third, but then economy wise, all other states are even, I mean, half of Maharashtra. Not even half of Maharashtra. Such a rich state, almost near about 2 decades, there are Banjara chief ministers. How? Kaise? क्योंकि नाइकी अपने ब्लड डे माच है अपन नाइकी करे अपने ब्लड डे माच है नाइकी अपन करे सकाचा जेती ये सब पॉसिबल विच है मार टाइम वेजार इज है आई मीन आई एम स्ट्रेचिंग इट टू फास्ट लेकिन ये सेम तम एक बात हरदे रखाड़ो बंजारार हिज्जत काढ़ो मत डोंट लेट बंजारास डाउन ऑलवेज बंजारा शुड बी मन एक रेड्डी पॉलिटिशियन पूछो तार बंजारा थी मन एक थी मन नष्टम जरगी से मैं तो कौन ट्रस्ट करनो कन के दिकेन अरे ट्रस्ट ही तो हमारा जिगर है हम बड़े सा ट्रस्ट है थी बंजारा कन के दिकेन कतो वो मेन पॉइंट है ट्रस्ट we would never break a trust. We give a word, we stand on the word. This is the characteristics and this is the character, and never miss that character of having a trust on yourself. Let them trust you. Sevalal last बात थी मैं conclude करूँ छु आज talk एगो चाह अपने ना केनी भजो मत केती धुजो मत भजो मत धुजो मत कन केगो च मार सेवालाल महाराज केनी भजो मत अपने कल्चर छे नी अपन कल्चर छे नी केरी मैंने टांगे हेठ जान रहे रहो रा तो अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस है सेल्फ रेस्पेक्ट थी रा केनी भजानी अन केती धुजानी वो तो एक बंजारा काफी है तो भैया तम से कहीं के तो ये बातें जान जो ये ना पूर्ण कूण साध्वी कसे कन के तो पूर्ण छाण जो और पचज हमें मान जो मानती मानन नाइकी कन के को
नायक कन को नाम हमेशा रखाड़ जो ईमार बात से जय सेवालाल थैंक यू फॉर द टॉक जीवनलाल भैया जीवनलाल भैया हाँ राम डॉक्टर राम चव्हाण वाते करो छु सेन रामराम भैया मुंबई थी वाते करो छु सेन रामराम जय सेवालाल म तमने ना सेना जीवनलाल भैया बद्दल दी वाते कुछु एक्चुअली जीवनलाल भैया बोल जू कर हम दो बहन गेली लास्ट 8 इयर्स मुंबई में दो भाई बहन काम कर रहे था एज अ बंजारा बरोबर आणि जीवनलाल भैया एक्चुअली म ओरो घणो मोटो फॅन छु आणि मारो भाई छु मोटो भाई नहीच दुसरो सेवालाल महाराजच जीवनलाल सेवालाल अपडेर चायनी अपडेरी काय वाते कमतानो लेट द पीपल अंडरस्टैंड अपिकेन जो भैया राम चौहान भैया प्लीज इंटरप्ट कर रो तो ना क्वेश्चन एम जो भैया क्वेश्चन एम जो हां मार क्वेश्चन हाणु छे एक्चुअली मार जस्ट हाणु केणो छ कि भैया जे पॉलिटिकली काय टिप्स दिनो सेना ओमय म एक छु मन गया कि म मार 2019 में जत संत सेवालाल महाराजेर समाधी छ वो तांडेती छु म आणि वोच कॉन्स्टिट्युएन्सी माहिती जीवनलाल बिहार इन्स्पिरेशन देखताय म होते ती वंचित बहुजन आघाडी वडीती होत म फाईट किदो आणि एरो पूर्ण जे श्रेय जावचं ते આપણે જીવનલાલ ભિયાન જાવ છે પણ thank you Ram that's enough Ram thank you let us give time to others thank you कोरावत के ने एक छोरा છે और नाम प्लीज म्यूट कर ले कोरावत अनम्यूट कर ले कोरावत CH तार नाम पूरा दकारो कोणती या कोरावत CH तार नाम पूरा दकारो कोणती प्लीज आस्क क्वेश्चन या हां ब्रदर Yeah, please. Korawat to unmute Karmelecha already. So hello. There is, yeah. Please ask question. Yeah. Go hello. Ahead, brother. Yeah. Go ahead, brother. We are listening to you. Go ahead. Hello. Good evening, sir. Good evening, brother. Yeah. Please. Sir, मैं जीवनलाल sir थी बात कर. हाँ, बात करो कोरावत. Please tell me. Sir, good evening, sir. नमस्कार. ये काय बात करतो सर हमाल कोजोन से बंजारा समाजन आचच बट पॉलिटिशियन परंगा हा पण एक एदुगुदला गदोन छेचा काय का तो गोरेमा एक कम्युनिटी हा पण कम्युनिटी मा చాలా स्ट्रांग लीडर्स छेचा म्हणजे काय का जो एदगरे जे आदमी ने खुंदेने देखस परन ऊपर आए ने कोणी देख रे कोणी टोटली एग्री परफेक्टली एग्री ब्रदर म्हणजे काय करतो येदवरो जे आदमी हा पण गोर हा पणच खून ले साफरन दुसरे कोणी करले कोणी म्हणजे काय करतो हा पण समाज में हा पण काम कर रेच काबटी दुसरे रेट काय रे जान वंगेरो करेक्ट हा पण टीवी जान रेडवाडी रेटा ये धोरले छे जुना इंदु वगैरे छ अब IAS IPS ऑफिसर लो छ हा पण IPS ऑफिसर लो मतलब घर से भी काम करो किंदु रेट हा पण जान सुकेर काय अवसरम छे क्योंकि पेनाती हा पण गोरवाडिया नायक कन केतानी काय कन पैदा होय मतलब को तो नायक करन दिखानो एक स्मॉल रिक्वेस्ट सर परफेक्ट थैंक यू सर वेरी गुड पॉइंट ब्रदर थैंक यू सो मच कोरावत sir I am working as a social security officer in ESI department very good काय को तो वदिया चिन्ना तार YouTube या देख करो सर आपण सेमा तर इंप्रेशन फर्दर स्टेप्स लेनो को तो పొలిటిషియన్ పరంగా బి అవసరాలు బిజినెస్ పరంగా బి ఆయర్ సవజి చాలా అవును కానీ కొత్త బిజినెస్ పరంగా ఎదగను ఏక ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కొని బిజినెస్ పరంగా బి ఫైనాన్షియల్ ఇచ్చిన స్ట్రాంగ్ వకెల थैंक यू ब्रदर थैंक यू फॉर योर सजेशन परफेक्टली सेड आणि काय को उज बात केते आपण की आपण केनी भजर छे नी केती धुजर छे नी सेवालाल महाराज के गोच उज बात तू कोची भजो मत धुजो मत परफेक्ट यस सर ओके राइट थैंक यू लास्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन बलराम भैया भी हाथ उठाड़ में लोचे डगलाई लोग हाथ उठाड़ ओह माय गॉड बलराम के नहीं क्वेश्चन कोनी भैया राम बलराम भैया नमस्ते भैया नमस्ते राम बलराम बलराम इज I mean you are the true inspiration Balram to the present day youth भैया कायकन केतकेन कतो जो स्टेज येती तू आती आणि दिकाळोची वो स्टेज येती हनु उठे वासू कन केतकेन that is the greatest inspiration भैया
perfect brother. Dashrath Galaxy Dashrath's Galaxy कौन सा हाथ उठाड़ो અને ફોન તમને અનમ્યુટ કરો છું. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન તમારી और बाद में अपन प्रकाश राठौड़ भैया अपने ना ये प्रोग्राम मेरे फीडबैक दचे और बाद में जैसे एक वोट ऑफ थैंक्स करन हम क्लोज कर good thing right person for the feedback. Dashrath Galaxy स्वामी नायक डॉक्टर आर स्वामी नायक तो अनम्यूट ताराचंद सर सजू છે ताराचंद सर के डॉक्टर आर स्वामी नायक सर कौन सा स्वामी नायक प्लीज गो अहेड. गुड इवनिंग सर. नमस्ते ब्रदर. सर सेन गुड इवनिंग सर. सर సార్ మా అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ देखतानी అసలు ఈ సెషన్ देखतानी రాస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏరొచ్చు సార్. మంతకు ముందు కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్లు కరుకేదాని आपण వాళ్ళైనా రాస్ సార్ మాలం చేయి అది మాడతానా ఇంకతో రాసేన గురుకుల సీట్ల గురించి మాలం చేయి అత్ర ఆపర్చునిటీస్ కూడా కాయ మాలం చేయి కదా చాలా మంది నా రాజనాన్ కో సార్ అది లాస్ట్ సివిల్ ఆస్పిరెంట్స్ రచ తర్వాత బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ తర్వాత ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ గురించి కూంజావణు కాయజావణు అను మాక్సిమం చాలా మంది మాలం చేయి సార్. तम अस प्लेटफॉर्म अब हनु सेशन lu दसे को अजी वारू करनो के ताणी मारे का कोरिक सर फ्यूचर हम కూడా तम अजी सेशन lu करता नी अब दे रिकॉर्ड कर मिले जो ऑडियो lu वीडियो lu अपन वाले फॉरवर्ड करता नी दसे मोटिवेशन देवणु तम एक पोजीशन होगा बट्टी तमार वाते का तो तम ఖచ్చితంగా सांभळत सर अरे तमार कष्ट सैदू सर भाई जीवनलाल सर भाई बलराम सर भाई असल उंदेर मैं यूट्यूब आ देखतो सर अब डायरेक्ट वाते कर रोज ना मन गूसबम्स आर सर असल आपण వాళ్ళ అసలు ఈ స్థాయి మారేతో అరే అంటే మన్ని అవును సార్ మిగతా వాళ్ళని కూడా హను మోటివేషన్ కరన సెషన్ ను కండక్ట్ करतानी దేవునికి తాని మార్ కోరిక సార్. Definitely brother. I mean that is the purpose actually. I mean tarnai say feel very good sir. आपण सुधाकर जी take up किदो छ ईवणा. I mean I think he will not stop because I mean he has got a great social motive and likewise I mean वो हमें सेन जोड़ मेलो छ I mean Hanuj अजी लोग भी जोड़ते जोड़न ये कंटिन्यूअस है ब्रदर. वी आर विथ यू. हम मन म सिविल सर्विसेस लको जना कुणस ऑप्शन देणो कनका जो सदा मालूम छे नी मन. ओके सर. ऑप्शंस कु देणो फर्स्ट सेकंड ऑप्शंस कु देणो एग्जाम कु देणो कन सदा मालूम छे नी हमें. जीवनलाल भाई. हां जीवनलाल भाई. मेरा नाम प्रोफेसर मोहन चौहान नागपुर महाराष्ट्र. अरे प्रोफेसर चौहान साहब राम राम. हेलो. राम 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 राम. राम राम दे ओपने में जत रिजर्व कन्स्टिट्यूशन छेनी होते ती गोरुन कु काढारो ई ब्लूप्रिंट करेंचा. एक्सलेंट पॉइंट जसं महाराष्ट्र में 28 यस सर I will tell you कन्स्टिट्यूशन होतं गोरुर अबाउट 60,000 वोटिंग पण गोर होतं निवडून नाही. और पार्लियामेंट कन्स्टिट्यूशन जत 5 lakhs and above वोटर्स तरी गोर निवडून आणि जे तमकेनी आम्हाला एकमेका टांकीचर धंदो बंद करू अगदी राईट वाद केतम तो हे प्राई काही सोल्यूशन करेंचा तो पर दीवार पे क्यों एक्सपेक्ट. एक्सीलेंट. आज की डेट का सबसे रिक्वेस्ट सर. हाँ सर सुधाकर सर एक रिक्वेस्ट सर. ये क्वेश्चन आंसर करेगा थम बेटा. हाँ ओके सर ये क्वेश्चन आंसर करेगा. ये अपन प्रोफेसर साहब जो I mean चौहान साहब जो I mean बात की देते हैं he is an expert and he is a very intelligent and I mean very respected man in Maharashtra. इंदूर क्वेश्चन जो है very important question and I missed this point actually. Thank you I mean भैया I mean राम राम. I mean you have asked the right question actually. राम राम. मजो कर्नाटका राजस्थान मध्य प्रदेश आणि काय को एवढी आपण महाराष्ट्र घण फरमेलो छू. इससे फरेर वच्च मार स्वार्थ एकच रहे. मार स्वार्थ काय कन केतकेन कतो जत्त जो constituencies majority if Banjaras vote for the Banjara candidate they will win that seat. If only the Banjaras vote for Banjara leader they will win that seat. मैं पौरागढ़े में जान मैं ये महाराज लोगों सदा केतिकेन किदो जो को ऊस काम से महाराज लोगों में काय को कतो एकच बंजारा कैंडिडेट है ना तम हुब्र काढो. एकच बंजारा कैंडिडेट है हुब्र काढती हुब्र काढन बंजारा कैंडिडेट है तम आते थी सेलेक्ट करन भेजो कोरिकन केतिकेन कतो. इट इज सच ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन. पौरागढ़ अपन काय को तो I mean सेवालाल महाराज गढ़ छौ ओते ती बंजारा are more than 1 lakh voters and still you don't have Banjara I mean MLA there. Shame on us.
It is a shame. Like that, at least 25 to 30 seats are there in Maharashtra. I have counted each seat. मैं सेती बैठक कर बेलो छू सेने एक बात को उस बात के रोच काई तो एक की ना दूसरो कैंचर छे नी से बैसती बैसन एक कैंडिडेट सेलेक्ट कर लो वो कैंडिडेट हेड पूरा आई मीन बंजारा वोट अगर एक कैंडिडेट हेड घालच है तो देयर आर एटलीस्ट 5 सीट इन राजस्थान, देयर आर अबाउट 8 to 10 सीट्स इन मध्य प्रदेश, there are about over 30 seats in Karnataka, there are about near about 40 and minimum 25 seats in Maharashtra. And I have done this calculation back in Telangana also. Telangana 40 seats, Banjaras will decide who is the winner. 40 seats, Banjaras will decide who is the winner. So what I'm trying to tell you is, if there is a trustworthy Banjara, trust him, go behind him, promote your leader. That leader will come back and promote you. Let us not cheat each other in the community. Let us have, the cake is bigger. बाटी मोट से शेर वासु बाटी में एक टोकड़ा मळत से सेब हळती भळन खावा एक दूसरे वाट काटानी ई हद्दे रकाडनो जेती कांकन केतिकन कतो जता जता बंजारा आई मीन मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन से ओते ओते ती बंजारा लेजिस्लेचर आयर क्लियर कट चांसेस सबिया ई मार मेसेज भी इट्स मार लाइफ एम सदा इट्स टू ड्राइव होम दिस पॉइंट. थैंक यू सुधाकर सर. एक रिक्वेस्ट सर सुधाकर सर. या सर सुधाकर सर एक रिक्वेस्ट सर. हां प्लीज फास्ट सर कतरा ऑब्स्टॅकल्स आवतोय तम जसे की प्रोग्राम या प्लॅटफॉर्म ने सेशन लो अजी कंडक्ट करनो के ताने मार कोरिक सर अब 300 मेंबर्स सर सर फ्यूचर आपण 1 लाख 3000 4000 5000 నుంచి 1 लाख ताने करनो माने वालंटियर గా మై ఏ అస్ ప్రోగ్రామ్ లో అస్ ప్లాట్ఫామ్ అస్ సెషన్ లో మై ఫార్వర్డ్ కరుచు मैक्सिमम सेना अप्रोच सेना इन्फॉर्मेशन जातानी सेन तमार मोटिवेशनल स्पीच सेना यूज येवण के ताने मार कोरिक सर. थैंक यू स्वामीनाथ भैया. आपण ई प्रोग्राम इन कंटिन्यू कराचा पण येना मार एकच कंडिशन मा एक प्रोग्राम पर काम करणो कोतो. इट शुड बी कंप्लीटली अपोलिटिकल. इट शुड बी फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप. मा आपण गवर्नमेंट डगलाई लोक मन मीटिंग एन बोलावस मग कोणसी मीटिंग एन जावनी कसेन को तो आपण लोक आपण आपण जोन दिया कजू एक टांग पकड़ आज एक खींच करत तो ई क्रक्ट कोनी आपण पहिला इकॉनॉमिकल गा बनलो आपण एंटरप्रेन्योरशिप में जाणो तो ई प्लॅटफॉर्म वर वास्तेच एज लॉन्ग एज आवर पीपल डर आपण लोग आपण छत्रदाग आपण सपोर्ट करत आपण पहिला एंटरप्रेन्योरशिप में जाणो कसेन को तो फ्यूचर इज एंटरप्रेन्योरशिप. गवर्नमेंट जॉब आपण जन्म हक्क कोनी आपण रिजर्वेशन पर धबल सारकन चपरासी जॉब करते आपण सुनील भैया को 15-20 हजार वास्ते का आपण अत्रा एमटेक बीटेक पे अवसर छे नी तो अत्रा पडन आपण काही करेच आपण फ्यूचर. दैट इज माय पॉइंट. आपण ना लोग आपण व्यापारी कहते थे आपण जीवन भैया करेक्ट कोच वी वर ए बिजनेस कम्युनिटी एंड आपण व्यापारी कहते थे लोग व्यापारी कतो बिजनेसमैन पण आज आपण छजा पर बेकार का फर छे. टांडे में देखो तुम कतराई लोगों देखो बीटेक कर रहे ये कर रहे वो कर रहे पण लास्ट में काही कर रहे छे. तो ये पॉइंट इन आपण ड्राइव करबो काही कतो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रीसीड्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. राइट, दिस इज द पॉइंट वी विच वांट टू ड्राइव. हम जीवन ध्यान तमने एक मैसेज काही कतो क्लियर गा कोस तम पॉलिटिक्स से मानो को तो सर्विस से थी आवो बट एमा करियर बनानो के ना आवो एमा एक करियर हम फर्स्ट दी करियर बनावे हम के ताणी छजा पर ढगलाई फर रहे रोडे पर ई करेक्ट कोनी. फर्स्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट देन यू एंटर दिस. Otherwise, nobody will allow you to stand on your own feet. You will not be in a position to feed your family. I have seen cases in my department. There have been ministers who have been ministers earlier. They are now on roads because they thought it as a career. They didn't stand on their own feet before they become enter politics. So our message is that it should be for education, employment, entrepreneurship, and politics is also one of the entrepreneurship, but it should be preceded by economic entrepreneurship. That is our message. We will definitely continue this program, and this is a technology platform. This is a virtual platform. There will not be any organization of sort of that. We will take help of our mother institution, which we have all over India. That is All India Banjara Seva Sangh, and we have solid support of officers from our department like Jeevan Bhaiya, and every Banjara community officer is with us. And we are not untouchable to our politicians. We will bring them on this platform, but they have to talk about community benefit. They have to talk about जो कॉमन बेनिफिट आपने कहीं कर सका था कोण वो बातें पर आपने बातें करनो. अपन लोग आपने ढगलाई ऑफर भी की दे चबे लगा
हम तमने ना ई प्रोवाइड करा मन मेसेज भी आ रही मैं ये छु सर मैं अपने लोगों ने गाइड कर सकू छु बलराम भैया क्लियर कोच मैं कौन सी बैंक के सकू छु के बलराम भैया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन Sangareddy colleges. After CMD, it is a Balram Anna who takes, and he is a chief financial officer. So you can take all the entrepreneurs who are trying to help get in on your feet. They how to come on this platform. And first capital is the main same capital can carry to, but capital consists of human capital. Human capital includes your idea, your brain. Facebook आज तम से Facebook के पर अतरा busy छो. ये Facebook के कौन start की दो से? वो कहीं पहला और बाप कहीं उन कमान दे दो देखो तो कहीं वो कहीं और बाप कहीं बिजनेस मैग्नेट हो तो कहीं 10 साल रोना वो कोडिंग स्टार्ट की दो फेसबुक जो स्टार्ट की दो जो कौन मार्क जुकरबर्ग अपने सेन आज पूरा लोग सेन अपने और माया में जरा फसान फेंक में लो देखे वो 10 साल रोना कोडिंग करे सीखो तो 10 साल रोना कोडिंग करन 14 ईयर से मैं वो फेसबुक के लॉन्च की रोज and आज one of the biggest he is one of the wealthiest person in the world. His net worth is more than $100 billion. So this is all idea. It is all human capital. It is all human capital, brain. Ideas are more important than the money. Money comes on its own. Money कहीं को तो अपने में idea रहा तो अपने में money automatic goes. अपने में कहीं को तो एक collective का काम करे capacity चाहिए. ये collective काम करे अपन सीखनो. कसें को तो ये किन 5 लाख पेट्टुबड़ी हाल को तो custom. पर 10 वेतानी 5 लाख पेट्टुबड़ी हाले easy. अंतम 5 लाख ये भी business start करे वास्ते. Where there are many business opportunities in service sector. अपने ना तमने ना सार अपनो फुल सिंह भी कोच सैदुल भी कोच ड्रॉप शिपिंग को तो कहीं डब्बा वाला बिजनेस मुंबई में तम दीटे जो कबड़ा बड़ा बिजनेस तो केयर को प्रोडक्ट है केयर को एक अपन ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हो कत्ता अपन घरे में बेसन अपन कंप्यूटर कर रहे हैं अपन ज्यादा डिलीवर को नहीं कर रहे अपन सो दैट इज वन मोर एरिया अपने सर्विस सेक्टर में देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अपने ड्रॉप शिपिंग कंटेंट डेवलपमेंट तम फेसबुक के पर व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे देख रहे हो ये से कौन तैयार कर रोज फ्री को नहीं तैयार कर रहे वो से पिसा लेने तैयार कर रहे तम देख रहे जना उन पिसा रहे तमने नहीं मालूम मेरे को नहीं तम डाटा जो कंज्यूम कर रहे हो उमाई पिसा उन जा रही तो वो से ऐसे आइडिया पर अपन ई करनो कसिंग को तो फ्यूचर ये रोज अब ये टेक्नोलॉजी ना अपन ये मीटिंग ने ऑर्गेनाइज दीदाड़ ऑर्गेनाइज करने को तो खచ్చితంగా अपने 500 लाख रुपया खर्चा लागते and अतरा लोगों अपन ये प्लेटफॉर्म पर ला सकते कोनी उंदर टाइम भर सकते कोनी अपने उंदर ई वेती कोनी वो कत को कौन सी को जगह में बलराम मना अपने एक हैदराबाद यदि बेंगलुरु एंड ट्रैवल करन 7 to 8:30 लगा फ्लाइट में तो एंड 8:30 to 9 लगा वो आतानी ऑफिस में आतानी होटल में उतरतानी इमीडिएटली रेडी वेतानी आपने मुना गया तो अत्रा सौलभ्य में आपने टेक्नोलॉजी दे सकस दूसरा कोई दे सके नहीं अपन खచ్చితంగా टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करू छजा पर जो भी आपण छजा पर तमने ढगलाई आइडियाज हम फ्यूचर में जी ऐसे आइडियाज थी घणे आमाचा तमने ढगलाई आपने ऑनलाइन पर तम घरे में बेसन यूट्यूब पर ढगलाई कोचिंग है डिजिटल मार्केटिंग के मारो तम यूट्यूब पे तमने कतरा वीडियोस आव जाओ छो मा कतरा तम सीख सको छो वो देखो तम अपन डाटा यूज कर रहे अपन कसे यूज कर रहे टॉक्सिक मटेरियल सप्लाई करे वास्ते एयर हेटेन अपन ओवर हेटेन अपन एन जेर वास्ते में अपन गोरमाटी ग्रुप में भी रोनी ज्यादा नहीं भी अपन कहीं तो फॉरवर्ड करे एक अलवाट रहेगी जी ये बट इज इट यूजफुल आर यू रियली रीडिंग इट आई एम नॉट रीडिंग इट वी आर नॉट रीडिंग बट वी आर जस्ट फॉरवर्डिंग इट and who is developing it content developers they are making money not we are just using data so ऐसे टेक्नोलॉजी पर अपन जानो अपन सैदुल को ड्रॉप शिपिंग इज अ वेरी गुड आइडिया फॉर अस एग्रो प्रोसेसिंग इज अ वेरी गुड आइडिया फॉर अस ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बजी वर्ड्स आज पर वो अपन नो को नहीं अपन गोबर घालता नहीं खाद घालता नहीं अपन पंटा पचाते थे मन अभी भी याद से मार बाप खाली खाद घालता नहीं लोग हमारे टांडे में जो ज्यादा गावड़ी ढोर से वो लाता नहीं वो चरायन लगाता नहीं वो हमारे जो सारे गड्डी से वन खा लेता नहीं हमारे खेते में तुम्हारे गाड़ी बसारो भाग के तन रखा दो कसे इनका तो वो गावड़ी गोबर से जो को खेते में रेणु को तो वो घालन हम लारी पंटल पचाया आप पचा रहे को नहीं किसी को तो से ये रूल घाल रहे चाहते तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट न्यू फॉर अस इट इज इनहेरेंट इन आवर कल्चर इट इज इनहेरेंट इन बंजारा ट्रेडिशन बट वी आर नॉट नोइंग इट पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के तानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के तानी 10 रुपया टमाटर 50 रुपया बेचे so this is what we have to know economic independence economic empowerment precedes all your other thoughts unless you are economically sound Sunil Bhaiya has really given a correct message that whichever is communities today ruling this country they are economically powerful and they are powerful because to protect that economy not to serve a community so this message should be clear we will use this platform for education employment and entrepreneurship and we will bring our leaders also to discuss about these issues
and drive home the message that we are going to explore business options, not just remain as like chaprasis or peons and these things that thing. डिपार्टमेंट है हमारे का ना एक बीटेक एक एमटेक ग्रेजुएट कंटिजेंट का काम करो, कंटिजेंट का तो चपरासी हमारी भाषा में अपनी भाषा में, तो एमटेक पढ़न चपरासी खाली 15,000 रुपया वास्ते काम करे काही परिस्थिती छ. आपण भी तो एक एंटरप्रेन्योर्स व्यक्ती व्यापारी व्यक्ती आपण इंटरप्रेन्योर आज काही वेगळे चालतो. तो ई मेसेज तब मारवाड़ी ने देखो 5 तरगति पढ़े 10 तरगति पढ़े 20 तरगति पढ़े वो करना भी बिजनेस करे. तो मैं प्रकाश भैया ना हैंड ओवर करू छु. प्रकाश भैया तो हैंड जस्ट टेक ओवर and give your feedback and we will conclude this session. Thank you all. Thank you Jivan bhaiya, thank you Balram bhaiya, and thank you Sunil Anna and all other speakers of the day. We will continue this platform for 3 years. Thank you so much. सेन जय सेवालाल. आज ఈ కార్యక్రమం जो भी आज लीधे प्रोग्राम एक्चुअली सुधाकर सर जना डिजाइन करो तो शायद वचकन न वचकन लागी, पण मैं एक बात कह सकू छु का सुधाकर सर जागे दुसरो जर प्रोग्राम लो तो शायद अतरा सक्सेस कोने हो काय एक मन डेफिनेटली मैं कह सकू छु का सुधाकर साहब जो न्यूट्रल एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी समाज ने काहीतरी वेवणो का जो तडफेर माय विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग जातेन काहीतरी करू कन कतो विषय में तो એટલે सुधाकर सर ने जे श्रेय जावस आणि ही चीज ये तो रुकिया काही छे नहीं ये रास आंग जायर छ आणि प्रोग्राम एक्चुअली बहुत सारे जुमेम जारे छ पण ही प्रोग्राम काय होतं स्टार्टिंग माझं ना इनॉग्रेशन होतं 2 डेज आपण सेशन लिहिलेचा पण जना फर्स्ट डे जन पूर्ण हंगामारच कोई प्रोग्राम भी पण ही प्रोग्राम हानु सके नेक्स्ट डे जना आपण आज क्लोजिंग करायचं आणि जना हंगामारीच जना जो सारीच वजी थोडा वेळ बेसा काय गो वजी एक 1 डे कंटिन्यू होऊन कन अत्रा टाइप एम सारीच करतो. आपण आज जत्रा आदमी बातें की देता आज एआई बेसिस थे आज जो रिप्रेजेंट की देते खेतात ताराचंद साहब कहीं हरिलाल ट्रेजर साहब और पूरा एक्सपीरियंस दिनो वो देतानी न उंदूर भी अनुभव देतानी जो थी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ जो अपन मातृ संस्था से 1952 थी वो संसार में चाहे कतरी भी कहीं अपनी छोटी छोटी यूनियन बनाती हुई कहीं बनाती हुई अच्छे सारूस बनाती हुई पर मातृ संस्था ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का जो एक चीज वो कोई पॉलिटिकल लेती को नहीं जाति लिए काम करे जो में कैसा कुछ संदेश है. और बात आज जो भी आज स्पीकर्स हुए थे अपने कन एमिनेंट पर्सनालिटीज जेना आपण भाळ सकानी बोल सकानी रास आदमी ये चांस भी मिले नहीं वो चांस मिले तो ये प्लेटफॉर्म में आज बनाए कर मिले. और मैं आज अपन एम सुनील कुमार सर कतरा को सुनील नायक कतरा को बिजी रच जाटावत मोतीलाल जो आज जो कल्चर जो आज यादाद्री का जो खूब मोटो एक तिरुपति देवस्थानम जो तेलंगाना आंध्र में जो तेलंगाना में भी बने जा रहा है वैसे टेम्पलेर में अपना एक भागीदार सकन को तो और बदले में स्टोरी काल केतो आ रहा तो रास काही वेला करता आणि वो फील्डर में असं जावा जाके आपण करता करता नका जो कोण मी कॉन्फिडन्स लेवलर में गो वो आपण गोर समाज आपण खूब गर्वेर बात छ. और बाद सेकंड आपनो आज आज जो सेशनर में शशिकांत साहब आयो, उसके बाद सईदुल सर आयो, बलराम नायक सर आयो, तुकाराम सर आयो, जीवनलाल सर आयो. काणी मन एक काय आचो लावकन कतो शशिकांत हैज गिवन एक्सट्रीम हिज प्रेजेंटेशन टुडे. आज जीवनलाल सर का जो एक कारपोरेट लेयर में हाउ टू प्रिपेयर अलॉन्ग विथ पीपीटी अगर वो ना ऑब्जर्वेशन करता है वो रिकॉर्डिंग जो भी सुधाकर सर अगर ये अपने कति मेलेर में तुम्हारे मेल घालता है दिने तो रात सत्यार यूज वचकन केलर छो. और मैं दिते एक वर्ड को द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम. सो ये तो वर्डिंग यू नो एंड नो युअर एनिमी बेटर तार एनिमी कौन सा तो कौन से सब्जेक्ट ने कैच करनो कुकाय तो फाइट करनो को कौन एक एक टिप्स देनो को तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प सो मेनी आवर कमिंग जनरेशन. आपण जो आवा जो हिराच सनराइजर्स उनो रास बेनिफिट होता नहीं बेनिफिट ये प्लेटफॉर्म यात्रा वचकन में केलो कोनी रियली इट्स ए हैट्स ऑफ टू ईच एंड हू हैव पार्टिसिपेटेड दिस एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर दैट. एंड फाइनली आपनो सईदुल सर जो भी आईपीएस सर छ अब और तो आपण जस्ट सईदुल सर बातें सांभळे तो बस गो ही इज ए वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी. और मैं एक बात कहूं काय को तो मार बाप को लागू तो तेल भी खूब सारे बेटा ये तेल भी ना या तो नेगेटिव का यूज करो तो खेळ नाश करना के पॉजिटिव करतो के आचो करतो तो पॉजिटिव जाता आज जाते रे हीरा बनता जा करतो आज ते हीरा ना आपण ये प्लेटफॉर्म लाता है समाज करतो रियली हैट्स ऑफ टू दोस पीपल उधर याडी बापे उन जीवनलाल सर रेद क्या शशिकांत सर रेद सईदुल सर रेद बलराम सर रेद जतरा भी रास आदमी आयच उंदूर याडी बापे कोटी कोटी प्रणाम जो असे
લોકોને આપણે જાતે પેદા કરતા આપણે મેલે છે જેટલે હું યાડી બાપે શતકોટી પ્રણામ કરું છું. એન્ડ આજ જીવનલાલ સર લાસ્ટ સ્ટેપ જો વાત કીધો एक्चुअली काय तो सेशन आप सुरू કરી इनाग्रेशन लागरी છે ई वैलिडेशन लागरी कोणी इनाग्रेशन लागरी છે. तो मैं एक मार फीडबैक में दिए देने के बाद एक ज कुछ राम चौहान साहब भी अब IRTS આપણો તાર વાત કીધો તારાચંદ સાર કીધો हमारे डिपार्टमेंट थी पीरिया सर अब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही इज ए वेरी बिग पर्सनालिटी एंड આપણે રાસ કાઈ હોતા એન્કરેજ કરું કરે डिपार्टमेंट में केरी छोटा मोटा काम रहतो इनडायरेक्ट का केव करता रामचंद्र सर से हमारे तेलंगाना थी राज काई अमर सिंह साहब से बहुत सारे नाम कहीं ले सका पूरे VIPs वी आर ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी वी आर नॉट द सिंगल पीपल आप रिप्रेजेंटेटिव था समाज में काम करवा अतरा आदमी आज ढगला आदमी दिसे 300 आदमी आ रहे सकन तो एक जात तान पड़ी जाते कहीं उद्धार कर सको कोणी चीज लागरी जेटली में सुधाकर सार है ना मंचे में एक कुछ फीडबैक नेक्स्ट जो भी सेशन दिस विल गो ऑन डूइंग एक बारी ओनली नॉट 3 hours 4 hours पण एक बारी एग्रीकल्चर पे एक बार पॉलिटिकल पे एक बार समाज कल्याण एक टॉपिक है एक सेशन मंथली को 15 days को those who are interested they should participate they should give their feedback this program should be hardly 45 minutes to 1 hour 1.5 hour to 2 hours मैं रखता नहीं सिविल सर्विस आज शुरुआत होगी ये शुरुआत कंटिन्यू करे सारू सिविल सर्विस सारू स्पेशल रखता नहीं एक लेक्चरर सेकंड 30 minutes फॉर द देयर क्लैरिफिकेशन एंड क्वेश्चंस रहतो वारू रच ये जो झूम से कंटिन्यू करते रहो हमारा सहयोग भी हमारा रच और जतरा भी आज आतरा मोटे मोटे आदमी जीवनलाल साहब तो अब और बदले में कोई केयर कहीं छे नहीं इज ए ब्यूरोक्रेट इज ए लीडर इज एवरीथिंग सो लीडर का तो एमएलए बना तो इज ए गुड लीडर हु कैन गाइड द पीपल एंड हु इज हाल इंडिया में कत्व जाता नहीं जाते ने बदले में कहीं करूँ कू करने को मरमरी करो जो आज खूब कम एज है ये लेवले में आज मन क्या तो जेटले डेफिनेटली इरेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी वो एक बात कहीं तो आपण कोणसी भी पार्टी में रहता जो रेड्डी राउस कम्मा जो कच ये कोणसी पार्टी में रहता वी शुड एनकरेज ईच अदर वी शुड गो फॉरवर्ड आपण एक भारताने आपण काम करलो कोण को and political power is the ultimate power that we have to everyone have to accept because every law has to be made by in legislature only legislature जाऊं every हर आदमी जा सका नहीं and तम का जो पूरे गवर्नमेंट एक कन रहे नहीं गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल का जो अलग अलग रहो डेवलपमेंट वो भी एक डेवलपमेंट है वो अलग अलग रोड में डेवलपमेंट तो ठीक है इतना में कोनी को पॉलिटिकल इज डिफरेंट बट ये तो अपन रास आदमी इंटेलेक्चुअल होना सेती मुख्यम काय गन तो कनेक्टिविटी मिळ्यास कनेक्टिविटी वी गॉट कनेक्टेड ऑल इंडिया रमाई आज कथे कथे तिको भाई राजपूत राजस्थान दिखा रास आदमी हम कनेक्ट हुए इज ए वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड विल नॉट स्टॉप हियर विल गो ऑन डूइंग दिस प्रोग्राम्स ऑन स्पेशल एक टॉपिक करनो को हम कहतो मनी मोको दिने अतराचे प्लेटफॉर्म किता निम से सामळे जन से नम धन्यवादम जय सेवालाल कुचु and I thank Sudhakar sir to giving me this opportunity to conclude. Thank you so much, sir. Thank you प्रकाश भैया, thank you so much. एक वीरन्ना वांकडोत के एक भाई छापणो वो घणा प्रस्तुति करो छ काई फीडबैक छ एक ना द भाई बस नाती लास्ट प्लीज या good evening sir Sevalal sir and respected civil services and other PSU sectors से जो employees हो मैं एक unemployed मैं presently IIT लोकिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो हमारा एक क्वेश्चन सर आप लोग से कह रहे हो एक एंटरप्रेन्योर एक बनानो से ना जरा कैपिटल का इंक्रीज करनो कल में एक हम फर्स्ट आपण जाते मां एक नेगेटिव है सर काय कहता स्किल्स वाइज का लैग सर एक थॉट ये स्किल्स वाइज का आपण को इंप्लीमेंट करनो आपनो वाले ने इंप्लीमेंट करनो तो एंटरप्रेन्योर गुड एंटरप्रेन्योर बेनो कనుక तो फर्स्ट स्किल्स అనేది एम्प्लॉयमेंट नो आपण एक सो एक చిన్న अब एक स्विगी रखले वन गुड स्किल पर्सन रहतो आपण ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అనేది క్యాపిటలైజ్ గాని అన్ని విధాలుగా అది మనకు యూస్ఫుల్ ఉంటది సో మా కేరళలో एक वोट जो PSU सेक्टर्स नवरत्ना गानी मिनी रत्ना गानी एंड कोल माइंस सिंगरेनीज गानी ऐसे अब इन फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन करागन करे
प्राइवेटाइजेशन काय करतो आपण एक रिजर्वेशन रच अब आपण छिचापुर काय करतो से रिजर्वेशन रच कदा वो रिजर्वेशन से एक धीमा जो रिजर्वेशन रेनो आपने रेनो अपन एक दिस इज चिन्ह लैब कैडर रहती आरेस अब ऊपर आरेस का कावटी तो रिजर्वेशन అన్న రేంజ్ आपण एक स्किल बना लेता नहीं మంచిగా एक మూమెంట్ ఏనో కనుకతో आपण ये पीएसयू सेक्टर या చదవడం చాలా మెంబర్స్ ఎక్కువ కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ అది కూడా ఒక ప్రైవేటైజేషన్ బట్ ఉమ కూడా కాంట్రాక్టర్స్ రజ आपनो वाले కాంట్రాక్టర్స్ వేణో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అనేది కాంట్రాక్టర్ ఒక కాంట్రాక్టర్ అనేది చాలా మెంబర్స్ కి ఎంప్లాయ్‌మెంట్స్ ఇస్తున్నారు సో वो కాంట్రాక్టర్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఏనో కనుకతో पक्का अपन एक ट्रेनिंग अनమాట एक ट्रेनिंग हम कनकतो जो स्किल्स पर्सन आपने अचलनो एक सम कॉन्ट्रैक्टर्स मंచి कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर्स ये से एक यूनिटी करता है अपन जो छिचापुर चलनो एक आईआईटी गानी यूनिवर्सिटी ऐसा गानी नॉर्मल कॉलेजेस गानी जो पूर्ण रगनो छिचापुर होस गानी हिंदू ने आपने गैदर करना एक जो हुनर क्या को अपन कैपिटल का तो मनी ये करता नहीं यानी वो विधंगा जो एक एजुकेशन विधंगा अपन हुनर एक हेल्पिंग कर एक फाउंडेशन देना तो स्किल्स हुनर आई के लिए ऑटोमेटिक वो इंप्रूव आवाज है year काना तम जरा अभी कॉलेज में जरा मंचिया लागी मनी अते एक प्लेटफॉर्म एक చాలా మంచిగా कहन का तो आपने वाले ने जरा यूजफुल हो जाए तो मारे एक आलोचना काय करता तो all PUC sectors नवरत्न and mini रत्न all softwares companies इन्होंने वो मत सजनो एक स्किल्स डेवलप अब जो मैनेजर वो मैनेजर वर्क्स काय रहे and एक ग्राउंड लेवल एक प्यून रहे वो प्यूनर वर्क्स काय रहे वो रूम पर आपने स्लाइड्स बना वीरन्ना आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू Tati ek tu IIT graduate chi already you are budding entrepreneur for future and your point is that we should have skills. तो ये रूम पे जरा Veeranna I appreciate your thoughts brother. We will have specific sessions every 15th day and every second every month lo oka roju 1.5 hour sessions we will have and there you can share and you can again get back to us like this thing. It's already 11 okay, and sir. People are there from 6. Thank you Veeranna. Your point is I have taken well valid point and that is our focus. Okay, skills okay, and skills and entrepreneurship. आपने कहा कि तो लर्निंग जो भी कर रहे थे स्किल से कर रहे हो तुम अब आईआईटी में पढ़ रहे हो तुमने मालूम चढ़ी कंटेंट डेवलपमेंट का है डिजिटल मार्केटिंग का है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का है से ये फेसबुक के को चला रहे थे वो मार्केटिंग को करे तुमने मालूम चाहिए you can come and you can share with us. Definitely we have a very good platform. Yes sir. And it's not that every time I have to create this platform. Zoom is there so everybody can create a platform. If you are having I can share the audience number to you. Your particular audience will be there with you and you can share with them, right? So this is a technology platform. It is not owned by one person. It can be done by anybody. So I wish yes, all the budding point sir. Yeah, please fast. It's already okay, 11. sir. एक पॉइंट सर कंक्लूड कर दीजिए तो सेन है ये पीएसयू सेक्टर्स हैं जो वैकेंसीज आ रही जो एम्प्लॉइज है पोस्टिंग है वो ट्रेन ऑफ कर कजनो अपन बार जान सीखा जेती कंटे एक सेक्शन घालता नहीं वो एम्प्लॉइज अदनो सेक्शन घालता नहीं हुनन गाइड करना कनो एक आलोचना. Thank you. You can take up that. You can take up. Yeah. So एक कॉम्प्लिकेट किया था फुल सिंग सर है ना फुल सिंग सर उठन चलो actually आपण स्टेट मा 3 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वो मा रवि सर पेशेंट गा वितो घणो पेशेंट गा लीजन की दोस्त 3 होना. I'm just searching Ravi sir but Ravi sir I think he has left now. We will definitely get one of our collector in each edition and in future because we should be proud because district collector is ultimately the boss of the district. There is no institution in bureaucracy which is as powerful as district collector. There is no institution. Even cabinet secretary nobody knows him, but district collector is known to entire district. He's a ma bap of the district. So we are very proud to have our community people as district collector for 3 districts. We will be getting them, and I'm very much I must like you drive the point. Jagityala collector apno Ravi sir and Sharad sir, they have come to our platform, they have listened to it. I'm getting a message from our colleagues that they were there on the platform. We are very much thankful to those our humble people
we will be getting them on our platform for future because they have practical idea how to go about the entrepreneurship, because there are many government schemes which are useful for us. अपने ढगलाई government schemes वो कु अपने इकरण को जोकन अपने real गा sir, sorry to interpret sir, sorry to interpret sir. Full thing sir, special thanks to you, you have joined from all the way. Full thing sir, special I didn't tell you, but आप फ्यूचर में जब इंटरव्यू लगाएंगे तो आपका एक मंगल सिंह चौहान फ्रॉम मुंबई, ये जिसका एक सुधाकर सर जी स्पेशल जब इंटरव्यू लगाएंगे तो 2-3 लोगों का एक सेशन लगाएंगे, तो आई एम स्पेशल थैंक्स टू यू फुल सिंह सर. थैंक यू. अब एक रामू को जो कौन छोरा छ क्विक के द काइन छ जो कौन जस्ट 2 मिनट्स है, अदरवाइज वी विल गो फॉर नेक्स्ट रेंज लेवल. ओके, अनम्यूट की दो जस्ट बिकॉज़ आई एम लाइक many people are there but I cannot. Okay sir, Ramramo sir, actually मैं ये लॉकडाउन में एक फाइंड आउट किया तो कहेंगे तो सर एक्चुअली अपन मैं गवर्नमेंट का जॉब किया सर BLA में. सो अब मैं कहेंगे तो ये लॉकडाउन टाइम है मैं मेडिटेशन योगा में चला डीप గా పోసాను యాక్చువల్ గా. సో आपण तांडू में अब से अपन से पॉइंट्स करे तो पॉलिटिकल का कू रेज वेणो, हेल्थ परंगा कू रेज वेणो, अपन कहेंगे एजुकेटेड का आपण देख ले रहे ಈ ನಾಲೆಜ್ जनालेन जाऊन के लिए स्ट्रांग है तो वो तो हेल्थी का अपना से हेल्थी का रहना. तो मेडिटेशन के लिए योगा के लिए तो पक्का गांव में जाऊं सर. अपन ये सेवालाल अथरा लीडर क्वालिटीज को आई वन तो अब तम जीवनलाल सर को जो on through meditation and yoga he is a great spiritual leader. वो कहीं की तो बॉडी ना छोड़ देना कर को तो अपने मालूम सोला को तो मैं ये नॉलेज कतो आप मुनांग न जाजू कतो मैं जॉब पे दाने को हनु कहीं को हनु न जाजू ಈ ನಾಲೆಜಸ್ ತಾಂಡೇನ್ जावणो के दाने सेम सेवालाल नॉलेज तांडेन जावणो के दाने तो सेम जरा एक एजुकेटेड वजह से मालूम सर. अपन कोणता आदमी एजुकेटेड का सदव रहे आप अतरी बातें कर रहे तब अब अपन ये नॉलेज जनालेन जा सके नहीं. अब सर जीवनलाल सर को जो अपन सेन एक यूनिटी करने तो वे सकेंगे कशन को तो उनका माइंड डिफरेंट रहता है. ये माइंड अपन माँ उन्हें सदव भी छे सा एक नॉलेज जावणो को तो थ्रू मेडिटेशन योगा का जो मन ने तो ताप सर और वाला ब्रेन చాలా షార్ప్ గా ఓరంతటగా ఓన్ డిసిజన్ లేర్ కెపాసిటీ ఆవచ్చు ना. సో ये विषय में मैं कहता मे बी उचना जाजू ऑटो ताने जाऊं करन और ये सर एक्चुअली ये एक लॉकडाउन टाइम में मनाया जो so it will change everybody's way of thinking and it will improve health and actually कहीं को तो अपन चिन्ह का देखता नहीं अपन माइंड अदरास कर लेता नहीं अपने एक ही एक लड़ाई मार लेते हैं मुनांग ज्यादा से करे को नहीं अपन ब्रेन का ना कूल एंड काम वेजास को लेकिन सपोर्ट करे देखा कर सेल्फिशनेस डगर सारी. सो ये ताटेन में तांडून जाता नहीं नॉलेज करने के ताने मार रही ये मध्य उस फिक्स है मन एक पैसा कमाने को ये पॉलिटिकल लीडर का कुछ चाहिए सर एक्चुअली मैं सेवा करनो अतरीज मार जस्ट उन्हें नॉलेज करने को देखा सर ये मां ये जावणो के ताने मन. Good. Thank you, Ramu. Ramu, to specially able the Karachi. I'm very happy that you have come to this session and your thought is good. We are with you, brother. And if you want, we will connect with you some organization which are helping in spreading this. That I will not help you directly, but I will help you indirectly by connecting you to the organizations which are doing this, right? So very good thought. अपन लोगों में भी एक civility का जो कौन concept अपने लोग कसे एक एक पकड़ खींच ले रहता तो वो सिविलिटी का जो कम से था पूर्वास्तिक तो वो सिविलिटी का जो आणु को तो अपन ये अपन माइंड भी मेता रहनो पड़े. राइट, गुड ऑप्शन, गुड कॉन्सेप्ट. प्लीज बी इन टच विथ मी. आई विल कनेक्ट विथ यू वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस हु विल हेल्प यू टू टेक योर थॉट्स, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी मच नीडेड फॉर आवर पीपल. दिस सिविलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट and that is how we are pulling each other. That should not be there, right? Thank you Ramu, thank you so much. I'm very happy that you have listened to this session. I'm seeing from beginning for almost 4 hours, 5 hours you are there, and I'm really happy. Thank you so much, Ramu. Any other, we will conclude session. Jayanthi, can we get together? Thank, perfect, my dear. It's like, I mean, mutual appreciation actually wonderfully organized kidochi. I mean, Sudhakar, that goes, I mean, like, okay, avasram cheni kan kato. You have really taken it, I mean, beyond everybody's imagination and beyond everybody's, I mean, comprehension also. So, fantastically done. I mean, hats off, kudos to you. And then, अत्रा ब्यूरोक्रेट्स है ना, हम भी ट्राई की देते थे. I mean, GRSS में एवढी रास सेना यूनाइट करेना अपन हम अत्रा ब्यूरोक्रेट्स ने करे सके कोनी. In a short time you have done it. I'm seeing a promising future in our young generation like you. I mean, तमार सर एक चिचा पर रहता हो. I mean,
little seniors like us can take a step back and I mean give the baton to you people, and then I mean you can take it forward, and I mean we can relax a little now. I mean seeing you people, I mean I get the I mean assurance now that I mean we can step back a little and I mean give the baton over to you guys. I mean that you have proved it to me, which never before nobody else have done it so far to me. So I'm too happy about it. And then special appreciation to each of the speakers. They have really put their heart into it. हर एक जो स्पीकर आए वो अपना दले थी, वो कम्युनिटी वासु काई करनो कन केतिकन वो फुल जोश थी, फुल मेन उंदर नॉलेज जेना शेयर करें रेडी वेगे कन केतिकन कतो कम्युनिटी मा रास आचे लोगों ना अपना जी टच करे छे आचो पण कन कजो को चाल रो छे, आचो पण आरो छे, चाल रो छे अन वन टैप की दे जे वासु तमेने कोटि कोटि धन्यवाद. थैंक यू जीवन भैया. हमने ना काई कतो वी आर रेडी टू डू this activity virtually without any organization. We need your all of your support, and we have rightly approached ABSS because अपन ऑल इंडिया वाइड अप्रोच and एक political organization है, तो वो वास्ते हम वो अप्रोच की देचा. We are really thankful to all the like ABSS all India वाइड जो स्टेट बॉडीज अपने गोवा थी कनेक्ट की देचा, राजस्थान थी कनेक्ट की दे, तमिलनाडु थी कनेक्ट की देचे, अपने मध्य प्रदेश थी कनेक्ट की देचा. अतरा लोग मना मेसेज आ रही है उत्तराखंड में भी अपन गोरमाटी छे, वो गोर बोली आए नहीं हुंदो, हमने इंग्लिश में बातें कराओ सर, हमने ये में बातें कराओ के लिए, तो उत्तराखंड में भी अपन लोग छे. सो रियली वी आर रियली थैंकफुल टू ABSS. अपने काई को तो कनेक्ट की देचो अपने अतरा वो प्लेटफॉर्म पर अपने एक ऑल इंडिया रीच बिकॉज अपन कोई अतरा मालूम छे नहीं, कोई अपन खेती टच में भी छे नहीं, एक हार्ट व्यक्ति वो कराकेन. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू थैंक यू सर, थैंक यू. अपन लोगों में ढगलाई अजी अचीवर्स है, उन्होंने ढगलाई लोगों ने बातें कराया है. ये शॉर्ट टाइम में अपने शॉर्ट टाइम में जो भी अवेलेबल अपन जो टैलेंटेड लोग उन्होंने लाया था पिछले में कोशिश खचिతంగా रच अपन 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 मन ढगलाई लोग एंटरप्रेन्योर्स कर रहे जो कौन लोग प्रोफाइल आई सर. एंड आई हैव गॉट फ्रॉम फिल्म पर्सनालिटीज आल्सो, आई हैव गॉट पीपल फ्रॉम फिल्म ये काय अपन पेटेंट्स इंडस्ट्री जो पेटेंट्स में अपन लोग कहीं पेटेंट्स कर सकता था जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो में भी एक स्पीकर रेडी का सर. सो वी हैव लॉट ऑफ स्पीकर्स हु विल बी डिलीवरिंग दिस काइंड ऑफ intellectual inputs to our people. It will be 1.5 hour session every 15th day, and we have a repository of numbers. We will other than that जो ग्रुप एक क्रिएट की देचा वो में वो तप्पा दूसरों काई मत शेयर करो. हमने काई वो में किसी को तो अपन वो ग्रुप में अपन से अपन मोटे मोटे ऑफिसर भी से तो तम फॉरवर्ड कर जो कौन दे के टाइम रहे नहीं वो थी न्यूसेंस वच. सो कीप द ग्रुप डिसिप्लिन एंड लेट अस कीप वर्किंग ऑन दिस. थैंक यू सो मच ऑल. केनी भी हम प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सके तो हमने क्षमिंचो कसेन को तो सेन एक जना प्लेटफॉर्म पर लाणो को तो घणो कस्टम वच. अन जो स्पीकर आए जो वो भी they are nothing like everybody is an achiever in their own field. So we have identified, we are going to make a panel for identifying these people. And जो भी अब ये कहेंगे तो bureaucratic initiative है काकपोते it will be for entrepreneurial options and education and employment. So thank you so much. जो भी केनी हम इंक्लूड कोनी किए तो हमने शमींचो कजिन को तो सेन एक जना बातें करानो को तो भी कस्टम है. हमने ना यूएसए में भी 3-4 अपन बिजनेसमैन बड़े बिजनेस कर रहे थे वो भी अपने ना अप्रोच है मैच. So every time we will get one person like that. It will be 1.5 hour session with 2 speakers on specific 2 topics. So thank you all. Thank you so much. सेन धन्यवाद all. कहीं को तो मन कोई मालूम छे नहीं डायरेक्ट गा अपन अतरा लोगन अपन कनेक्ट कर सके टेक्नोलॉजी थी. So big thanks to technology. Thank you so much. कंक्लूड करना करो भैया, कंक्लूड करना. Yeah, perfect dear. Thank you. जय सेवालाल.